Let's do an interesting segment with Ronak Sadhwani and Nihal Sareen. Who do you think sleeps late? Oh. Who plays B3 more? Okay. Who likes 10 plus 1 more? Okay, that's right. Who is good at bug house? Who is good at playing, or let's say, who is good at surprising opponents when you're playing against each other? Who is more surprised? Alright. Who do you think has the least chance of playing A4 on the first move? Okay, so you are less likely to play A4. Who knows? You never know, huh? Alright. Who is good at
Puzzle Rush Survival. Survival mode. This is the lighthouse in Chennai. It is eco-friendly as it is solar powered. The view from the 9th floor is something you don't want to miss. This is a special place. This is the school I studied in. And they had a big sporting culture. We produced, for instance, the Amritraj brothers studied here. Lots of table tennis champions. We had quite a strong sporting culture, and that might have helped me as well. Welcome to Marina Beach in Chennai. The beach has a 6-kilometer long promenade. It is the longest natural urban beach in India. The best part is there are a lot of tourist attractions here. This is the iconic Napier Bridge built over the Coombe River. It is illuminated at night, so a perfect spot to take selfies. If you love visiting museums, the Government Museum in Chennai is a must-see. Rare items from anthropology, archaeology, folk art, musical instruments, you can find everything here.
हेलो हेलो हेलो, वेलकम एवरीवन। हेलो हेलो हेलो, क्या हाल है भाई? व्हाट्सअप चैट। वेलकम एवरीवन टू द FIDE चेस ओलंपियाड 2022 brought to you by chess.com India, B stats and Sahil Tickoo. Sahil Tickoo भाई, आज फिनाले, लास्ट डे। बिल्कुल भाई, कल से कुछ नहीं होगा ये सब। बिल्कुल भाई, कल से हम कभी नहीं मिलेंगे। भाई आज आज बहुत इंपॉर्टेंट मैच है चैट। आज आई थिंक सब पता जाए किसको कौन सा मेडल मिलना है, कौन क्या घर लेके जाएगा। एंड आज इज द डिसाइडर of all of this journey we've had of the Olympiad, मतलब the biggest chess event ever to happen in India, and उसका आज final result है। And the best part is आज सारी games on top 4 boards for the open section are important. हर एक मैच, हर एक गेम is important. And women's section में although it's simpler, I think women's team को जीतना है and they get gold, but open section में it is way complicated, man. यस, तो क्या कॉम्प्लिकेशंस है एक बार वो समझने के लिए स्टैंडिंग्स देख सकते हैं क्या हम निरंजन में? कैन वी मूव ऑन टू द स्टैंडिंग्स? So chat, as you can see, Uzbekistan and Armenia favorites now in this tournament, and you know tie breaks में भी अच्छे हैं, points में भी आगे हैं, but लेकिन India 2 और India are right behind, and USA भी सेम पॉइंट्स पे है। सो ये जो टॉप 5 टीमें हैं, दे हैव ग्रेट चांसेस फॉर मेडल्स। इनमें से 3 टीमों को ही मिलेंगे। अब यहाँ पे उज्बेकिस्तान का मैच है नीदरलैंड्स के साथ, आर्मेनिया का स्पेन के साथ, इंडिया का यूएसए के साथ, एंड इंडिया 2 का जर्मनी के साथ। सो सारी टॉप 5 टीम्स का आपस में किसी का भी मैच नहीं है, आई थिंक टेक्निकली, अपार्ट फ्रॉम इंडिया एंड इंडिया यूएसए ऑलमोस्ट। सो आई वुड से कि यहाँ पे अगर आर्मेनिया और उज्बेकिस्तान जीत नहीं पाते आज का मैच, if they draw or lose, then they will go to either 18 points or stay on 17, and then India and USA can catch up. So इसका मतलब है कि आज USA और इंडिया 2 जो ये 3 टीमें हैं, ये आज खाली अपनी गेम पे फोकस नहीं है, ये प्रे भी कर रही हैं कि नेदरलैंड्स और स्पेन आज उनकी तरफ से खेलें। So clearly Anish Giri and Alexis Shirov are on Team India and Team USA. ट्रू साहिल भाई। और आज बहुत ही हम लोग को ये ध्यान देना पड़ेगा भाई गेम्स, क्योंकि स्पेन का उज्बेकिस्तान के साथ है एंड आर्मेनिया का नेदरलैंड्स के साथ है। तो क्विकली हम लोग वो सारे गेम्स भी चेकआउट करते रहेंगे, क्योंकि उसके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होंगे कि आज क्या होने वाला है भाई। एंड कैन वी क्विकली गो टू द पेयरिंग्स वंस? वुमेन्स का स्टैंडिंग है, वुमेन्स स्टैंडिंग में इंडिया एट द एब्सोल्यूट टॉप, लेकिन as you can see पोलैंड का टाई ब्रेक slightly higher, so the safest way for उनका पोलैंड का लेकिन यूक्रेन से है, so will not be easy for them to win, लेकिन the safest choice is to just win. If they win, they get gold, no ifs, no buts, only wins. I think that's why there's a simple path, and now that we can go to the pairings, we can see किसका किससे मैच है। and पेयरिंग आज स्टार्टिंग से ही स्टेबल। वाओ, मतलब आज तो क्रेजी हो गया रे, आज तो चेंज ही नहीं हुआ कुछ लास्ट डे में। ऐसा कमाल। एंड सबसे पहला गेम है भाई इंडिया 1 वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भाई। तो बहुत टफ मुकाबला होने वाला है, क्योंकि भाई टॉप बोर्ड पे आप देख सकते हैं हरि कृष्णा वर्सेस करुआना, विदित वर्सेस वेस्ली, अर्जुन वर्सेस डोमिंगस एंड एसएल नारायण वर्सेस सैम शैंकलैंड। So it is going to be a crazy game. And the crazy part is Aronian isn't playing. Like, I'm very surprised that he isn't playing. I think the fact that Sam Shankland is playing, that's really good for India, because clearly Aronian is Sam Shankland. I mean, that's simple mathematics and psychology. So I think India के chances थोड़े से बढ़ते हुए, the fact that Aronian isn't playing, regardless of he's not in great form, लेकिन वो हमेशा एक you cannot discount Aronian, Caruana, Wesley and so on. Yes. So Arjun is playing Dominguez with the white pieces, and उनके पास एक सुनहरा मौका है, not only to defeat Dominguez, ensure the team a medal, but also reach 2700 at the end of the Olympiad. So he'll be the 5th Indian right now who have 2700 rating live. And guys, India 1 का जीतना बहुत important है. If they don't win, तो मेडल तो भूल ही जाए भाई हम लोग, ठीक है? हाँ. ड्रॉ से भी शायद काम नहीं चलेगा. We have to win, ठीक है?
हाँ, तो और कोई ऑप्शन नहीं है. there is no other option. तो let's go to the next game. Next game is India 2 versus Germany भाई. तो जर्मनी के साथ भाई क्या लग रहा है, अपने चांसेस कैसे हैं? सो जर्मनी टीम जो है ना, वो भी उसमें केमर यंगस्टर हैं. आई थिंक पीटर लेको उनके कोच रह चुके हैं, शायद अभी भी हो. सो ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर. लेकिन यू नो गुकेश, आई थिंक yesterday must have suffered a psychological blow. So today he has to calm himself down कि ठीक है, जो हुआ पास में है. I have my future within my hands. If I win, I am guaranteed of a medal. As simple as that. Not only the team medal, but also the individual medal. So I think सारा कुछ उनके हाथ में. That's the best part. Kemer is a very solid, like he's a very he's a player who will not like take exorbitant risks. Lekin even a draw might not be so bad, because India, I think, is kind of slightly favored on almost all the boards. Can you look at the pairings again? Yes, well, let's go. So Nihal has the white piece against Blue by Matthias. Now Nihal might be slightly low on the rankings, but clearly white pieces ke saath and the sharp player he is, Nihal should be favorite. And then Prag against Sven Rasmus, that will be a very, very close match. Prag having the black pieces, but हमने देखा Prag Wesley So के साथ भी completely winning with the black pieces at one point, and he also won yesterday. So Prag has been in great shape. And then you Ronak back with the white pieces. Last time जब वो white pieces खेलते, knight d4 उनकी move हर tactical book में जाने वाली है, attacking manual में जाने वाली है. So maybe we'll see some attacking games today also. Yes, correct. And let's go to the next pairing भाई. India 3 का मैच किसके साथ है? India 3 versus Kazakhstan. यहाँ पे कोई हम लोग गोल्ड मेडल नहीं जीतने वाले हैं, या फिर कोई मेडल नहीं जीतने वाले, मुश्किल होगा, राइट? कोई यहाँ तो कोई चांस नहीं है. But we have, I think, a board prize of Abhimanyu Puranik. Like we exactly. can, if he has to play really well, to make sure. And और कोई है क्या इसके अलावा जिसके बाद बोर्ड प्राइजेस का I think Sethuraman was very, very close, जहां तक I remember. लेकिन the thing is कि बोर्ड 2 पे ना, I think it's very difficult. I think he's lagging behind a little bit. So I think only Abhimanyu Puranik has some chances. If he can win today, he might win the bronze medal on board 5. So let's see how it progresses. Ronak also, by the way, has some chances there along with the Puranik. And नहीं, now we have तो बहुत ही नीचे है भाई उसमें. अच्छा हाँ, yeah, 9th और 11th. So let's move on to the next. That is the women's section. भाई women's section में India versus United States of America. And India already 1 point lead में है भाई. 1 point lead है. They are the sole leaders. And उसके पीछे जो है वो 1 point पीछे है. इसलिए इसका मतलब होता है 1 point आगे है. मतलब हाँ, समझ गए तुम. Match is so obviously difficult. All they have to do, guys, today is to just defeat United States, and we are the clear winners. Clear winners. And the best part is कि draw पे भी अच्छे chances है. So you know, if let's say things are not looking so great, they can take the draw, guarantee themselves a silver medal, and most likely gold. That will also not be a bad strategy. So I think depends on how the games start, how they're feeling today. And opponent, and होता क्या, जो top पे होता है ना, उसको pressure होता है. Same for Uzbekistan, yeah. They will also have pressure in the open section. मतलब क्योंकि they are at the top, they have everything to lose now. Same for Team India, they'll be under pressure. So they have to play just normal chess, nothing spectacular. Keep playing chess. If they win a couple of games, awesome. If they feel कि हल्का सा कुछ, it's not looking, it's going south, not to over push. That's very important. We saw how drastically disappointing that can be yesterday. Just to take the draw also, that might also not be so bad. It might ensure the gold. So with this chat, I think the games have already begun. We can go to the games now very quickly. It's 10 a.m. The final round of the Chess Olympiad. Who will win gold? India 2 versus Slovakia भी है भाई. अच्छा हाँ, my bad. हम India 2-3 भूल गए भाई. India 2 की स्लोवाकिया के साथ मैच होने वाला है भाई. यहाँ पे काफी चांसेस है कि वंतिका जी को बोर्ड प्राइज मिल सकता है. इवन दिव्या जी इज इन द कंटेंशन. तो इंडिया 3 में जाते हैं. इंडिया 3 का है कजाकिस्तान के साथ. यहाँ पे नंदिता जी के बहुत हाई चांसेस है टू विन मेडल इन द बोर्ड प्राइजेस. Right now I think she's at the silver stance. If even she draw, she might maintain it. But if she wins, maybe there are chances for gold as well. That's totally possible because she's playing a strong opponent today. And now we can quickly go on to the games. क्योंकि गेम शुरू होने वाले. We can go to the screens. देखते हैं कि किसने क्या खेला है. गुकेश का ओपोनेंट ने D4 से ओपन किया है भाई. विंसेंट केमर नाम है इनका. इन्होंने एक टूर्नामेंट खेला था भाई जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर थे, जहाँ पे ये काफी मैचेस हारे थे एक्चुअली. बट ही वाज वेरी गुड एक्चुअली. मैंने वो गेम्स देखे थे इनके, पर ये हमेशा बहुत अच्छा खेलते हैं. एंड ही वुड बी ऑलवेज विनिंग. मतलब बेटर पोजीशन में रहते. इवन अगेंस्ट मैग्नस ही वाज बेटर पोजीशन. बट टाइम ट्रबल में डाल के इनको काफी हराया भाई लोगों ने एक्सपीरियंस के थ्रू अपने. Yeah, and the thing is, he also played with it a couple of games in the Grand Prix.
and दोनों बार उनके white pieces आए थे, and दोनों बार he went for opening which are not so like double edged, and he kind of won one I think and drew one or something like this, but he did not lose a single game with it also. So he is not going to lose easily. Hopefully Gukesh can outplay him in a long game, and let's see how it progresses, chat. Because I remember he was playing against Magnus, and even Magnus say he had a slight edge for the entire game, but Magnus being Magnus, he put him in time trouble, like really bad. Yeah, like Nisha, Magnus had like some 30 minutes and he had just like few minutes left. Yeah, Peter Lecco के coach है. Yo chat, क्या हाल है chat? कौन सुबह हमें देख रहा है यार? एक बार सब लोग हाई लिख दो भाई, दिखा दो कौन सुबह देश को सपोर्ट करने आया भाई. Let's go chat. देशभक्ति आपने ला दी इसमें भाई सीधे. अरे बिल्कुल भाई, देशभक्ति तो है यार, जिसके पास टाइम है. By the way, Nihal has played the London. Oh my, let's go through all the games on chat. Let's go. देखते भाई कौन कर रहे हैं. मार्क्सी, श्रीवास, वत्सन, ज्योति गुलानी, दिव्यम, वसन, श्रीवास, अंशिका जी, चेस्ट, सृजन, मानिक, रॉबिन, सूरज, यूनिवर्स. हेलो यूनिवर्स भी आया है. Oh my god. Yes, bhai, universe is here, bhai, and we need the universe's energy to do something crazy today. Yeah, we can see so many people. Thanks for joining chat, and so we have the opening position of a typical Queen's Gambit. Yes, and now will he play Bishop B4? Will he play Bishop E7? And let's see which one Gukesh goes for. We can flip the board as well. Yeah, and Gukesh, this will be also a test of his, his mental strength, because usually when you lose like this, like Ronak lost, let's say usme blunder karke, ya Gukesh lost in a winning position, I think at some point. So it's a really test of your character, I feel. And if he can strike today, if he can help the team win, it will have such a huge psychological boost for him. Ki matlab, I am the one. यार मतलब वो feeling आती है ना, वो feeling आई उनके अंदर से कि यार हाँ भाई मैंने मतलब even if I screw up I will always come back, and that's a good feeling. So I think let's see if he can strike today, and maybe we can go to Nihal's game and see what's happening there. Yep. London system is played by Nihal Sarin. Chat, I am not sure this is the best choice when you want to win. Usually London ke against, you have to play it when you're okay with the draw usually. So usually difficult to win with the London if in a classical game usually. But I have full faith in Nihal. He is an expert on the London system. Like he has played countless games in this opening. So I think it's very difficult to, let's say, outplay him in this opening. So he's not risking much at least. You got it, bhai, got it. And can we quickly go on to the next game? Let's see Pragnananda ji क्या कर रहे हैं हमारे, क्या opening के लिए उन्होंने. He's playing the King's Indian Attack Sicilian variation. Okay, this is a very weird setup by White. I think White ne pura center de diya. Now he plays C4, I guess. I assume. No, he's playing D4 instead. Yeah, this is usually you don't play like this because you give Black the entire center. But yeah, it's kind of okay for White because he can challenge Black now. So I think this is an attempt to basically avoid any opening prep because, Black really doesn't know what White is planning. But considering how well these youngsters are prepared, it's really just very difficult to get them out of prep. Yeah. So, Prag is in great form, chat. And, today he also has, every player has a chance to be the MS Dhoni. By the chat, MS Dhoni is apparently, visiting the tournament for the closing ceremony. So, aaj jo bhi jitega, he will literally be the MS Dhoni of this Olympiad. So, let's see what happens. Awesome. And let's quickly watch Ronak kya opening khel rahe hain. And Ronak is playing the Karo Khan defense. Sorry, his opponent is playing the Karo Khan defense against him. And interesting. Yeah, Karo Khan is a very slow opening and I would say it's become less popular than it was. At least that's my perception of it than it was many years back. But
Very solid, yeah. It's an improved version of the French because you put the bishop outside the pawn chain, but this bishop can be harassed with moves like, you can take the bishop pair, or it also takes more time for black to basically set up the pawn chain. So, for example, even in some cases, white can later on go g4 and so on and gain a lot of space on the king side using the bishop as, basically bait. So let's see how this game progresses. c5 played makes sense. You want to challenge white in the center and then put the knight on c6, maybe queen to b6, and put a lot of pressure on this d4 pawn. That's usually the strategy. But I think Ronak, he's playing Nisipiano, who's literally been there for such a long time. But I would usually bank on youngsters against people who have been playing for a long while. Usually, youngsters have more time on their hands, so they are better prepared in the openings. They are tactically stronger. So even with equal ratings, they are usually the favorites to win. So, of course, experience is on the player's side, but pressure handling can be better. So we'll see how it progresses, chat. एक बार team A में चलें, बीस भाई. Yes, but let's quickly move on to the team A and देखते हैं किसने क्या ओपनिंग खेली है गाइस. चैट में क्या चला जा रहा है भाई? आप भी चले जाते हैं MSD के साथ. अरे भाई इतनी अपनी वो नहीं है भाई भी साथ. Let's go, भाई. There is actually MSD is not flying in from Bokaro, chat. That's the issue. He's flying from someplace else. वरना तो पक्का वो like you would have taken B stars, of course. ये क्या भाई? चलो let's go भाई. हरे कृष्णा जी का गेम खुल गया अगेंस्ट कारुआना भाई. That's an interesting match, no? Hare Krishna Caruana. Yes. Let's start from the beginning एक बार. I want to see कि ये कैसे आया. As usual भाई अपना favorite D4, knight F6, C4, E6, knight to C3, bishop to B4, queen to C2, castles A3, bishop, sorry, B, ये क्या है? B capture on C3, queen capture on C3, D5, bishop to G5, S6, bishop capture on F6, queen capture on F6, knight to F3, and D capture on C4 by. That's very interesting. Usually you don't take on F6, I think, as far as I know. Like, white is not really. I mean, he has taken the black's bishop, so it's not like a big deal if he takes. It also gives him time to develop. So the game looks like a very pleasant but solid position, I think. So white is clearly, having decent position because he will now simply push the e-pawn, castle, no issues. However, black still has to decide where to put the light square bishop. So white is pleasantly better, but it's just very solid for black. So I think the bishop can later go to b6, bishop b7, and he will put in the long diagonal and later on play c5 and be absolutely fine. So very, very solid choice by Hare Krishna. And it does seem to be okay for both sides. So let's go to the game of Vidit against Wesley So, because mere khayal se, I think Vidit must have been preparing for a game against Aronian. So playing Wesley So might be a surprise for him, I think, because pairing बिल्कुल रात को आई थी, because when I did my stream, उस time पे board pairings नहीं थी. They came around at, I don't know, 11 or 12 in the night. So he might not have enough time to pair against Wesley So. So let's go to the game, bye. Yep, Nihal is the London GH Saiba, exactly. So I don't know if that's a good choice or not, but Nihal knows what he's doing, man. Usually he knows, yeah. He plays the London, he knows what he's doing. Okay, तो यहाँ पे E4 से open किया है भाई Wesley So ने against Vidit Gujarati, playing with E5 and now some regular moves, knight F3, knight to C6, bishop to C4, knight to F6, and we have Italian on the board. D3, bishop to C5, Gioco Piano. Castles D6, C3, A5, rook to E1, bishop to A7, knight to A3, knight to A3. I don't like it much, but take it. Actually, it makes a lot of sense because black is played A5, and that gives it the B5 square, and the bishop is on A7. So knight A3 actually makes sense because you have options of knight B5. And because you've also played C3, so knight can also go to C2 if you want, and then E3 and so on. So makes a lot of sense. But yeah, it is very, very solid for both sides, I think. S3 not allowing bishop to G4. S6 played by black as well. Knight to B5, bishop to B6, bishop to E3, bishop capture on E3, rook capture on E3, and this is the position right now on the board by. भाई I love London system के नीचे I don't love London system क्यों है? I hate होना चाहिए ना. London system ये क्या है भाई?
बेसिकली व्हाइट ने ना ब्लैक के बिशप को बहुत नचाया है. पहले c5, a7, b6, e3. So he gained a lot of tempi with this. But having said that, apart from the b5 square, which can also be controlled by moving the knight in c6, I don't see any serious problems for black. So I think that is fine. And that's reflected in his clock as well. He's very comfortable in this position because he's not used any time at all. So I think the position looks equal, and we'll see how the game progresses. Yeah. So let's go to the game of Arjun against Dominguez. This is the board where India has to strike, I feel. Yahan pe India has the best chance of winning. Dominguez has been in good form. However, he's drawn a couple of games, lost like I think against Ronak. So there is possibility for him going wrong. Let's go to the game. Bye. तो ओपनिंग में अर्जुन ने शुरू किया d4 से knight f6, c4, e6, knight to c3, bishop b4, usual opening, f3 क्या मूव है? Okay. It's a male line against Nimzo. a3, e4, d capture e4, f captures, c5, d5, e captures, e captures, castle, bishop to e2, a6, knight to f3, bishop to d6, castles, and h6 is played by. पता नहीं भाई. Yeah, so यहाँ पे this position is very very interesting, like even optically, right? Because एक तो white के सारे pieces खुले हुए हैं. Chat खुद देखो, देख सारे pieces खुले हुए हैं. Bishop on c1 is directly looking at the h6 pawn. Rook on f1 looking at the f6 knight. Knight on f3 ready to jump wherever you want to. Yeah, h4, h5, g5, e5. Knight on c3 ready to come to e4. Bishop can go to d3 very soon. Queen can come in. So this is a very active position for the white pieces. लेकिन अगर white king को देखा है g1 पे, he is not like so comfortable because f pawn suddenly गायब हो गया. So I think white basically will try to attack here. But if it doesn't succeed, I think black will be the one having a better position because he can also challenge the center with b5, and he can also simply develop his pieces, keep a solid position, and then in the end, and you can use this open e file for his pieces, knight e4, rook e8, bishop f5, whatever, and then slowly use the e file to put pressure on the white king. So knight g4, knight e3, for example, is a possible maneuver. So I think yahan pe very very double-edged position, and Arjun having more time than he started with gives me confidence that he's prepared, and I'm very happy with that. Got it, भाई, got it. And let's see, भाई, let's hope for the best. और यहाँ पे already एक pass pawn नहीं आ गया अपने पास d5 पे. हाँ, but इसका भी ये pass pawn हमेशा के लिए रहेगा नहीं ना. You can challenge with d5 at some point. And usually Benoni structure में pawn होता ही है, but it's not a big deal usually. I think bishop on d6 is a great blockader, and it also like ये basically f2 pawn वहाँ गया है. So it's not like कि ये कोई free का pawn है d5 पे. You've opened up a king for this. God. Let's go to the SL Narayan versus Sam Shankland का game भाई. And यहाँ पे अपना again Nimzo Indian ही था, I think. d4, knight to f6, c4, e6, knight to c3, bishop to b4, queen to c2, d5, a3, bishop captures, queen captures, b6, knight to f3, d captures, queen captures, bishop to a6, queen to a4 check, queen to d7, queen to c2, and interesting. Yeah. So a queen f4, queen c2 maneuver, basically, if you play queen c2 directly, black can play the move knight to d7 at some point and simply develop harmoniously. That's why white gives a check on a4, tempting queen d7, because knight d7 loses the bishop on a6, and then he goes to c2, and now knight d7 is not possible. So that's the idea behind this, and usually white is pleasantly better in this position. He's not risking much because उन्होंने अपना structure spoil नहीं करवाया. He spoiled played queen c2 and avoided that damage to his pawn structure. लेकिन I mean black also has his own chances. Like it's not like a one-way street. So SL I think at least needs to draw. Like he is one who can surely try to push also, because Sam Shankland not in great form, and especially after what happened in his game where he pre-moved, I would say, in OTB chess for the first time in chess history, he would really not be feeling that great, I think, about his chances. So I think, I think this is a very important game. Board 3 and board 4 are the ones where India has to basically strike, because India needs to win. Draw will not be enough. The only chance for India A is to win this round. India B might have some slight chances on a draw, some
hypothetical scenario, but India A has none of them. So they really need to win today, and defeating the US team filled of Caruana, Wesley So, Dominguez, Shankland, all 27, 20 plus players. Not easy at all. करेक्ट भाई, नॉट इजी एट ऑल, बट इजी काम हम करते भी नहीं भाई इंडिया वाले। तो सुबह सुबह जब जाग सकते हैं हम लोग 10 बजे, तो कुछ भी कर सकते हैं भाई। ये लो भाई, नॉर्मल लोगों की लाइफ है भाई। सीधा straight. Anyways, can we quickly look at the game of Anish Giri versus Abdul Sattarov once, because that game is also very very important now. Yes भाई, स्टार्टिंग से नहीं देखेंगे, पोजीशन से देखेंगे। हाँ, पोजीशन देखेंगे। And Anish has the black pieces. Okay, I am kind of happy and also sad at this position because it's very double-edged. It's very double-edged. Both sides have, castle. Okay, black is not castle yet, but the king will most likely be, attacked from both sides. But I'm sad because Abdul Sattarov has gained 3 minutes on his clock. So that means he's the better prepared player as of now. So that's why I'm a bit worried. But Anish Giri, I think he knows the only chance for Netherlands also is to basically win the match for today. They will not have anything if they get a draw. So he will clearly push. He will not be the one to shy away from a challenge. And board pairings में, board prizes में अगर देखें तो Anish Giri is on 3rd. Exactly. And Abdul Sattarov is on number 2. So exactly. अगर अनीश जीतते हैं तो he can also get a silver medal or a gold medal depending what Gukesh does. And Carlson is also right there. So Carlson बिल्कुल आसपास है, so उनको पूरा ध्यान रखना है, उनको medal चाहिए। तो I think he's more worried about the team medal though. I think that will be more important. So I would say कि मतलब I think even if these two teams draw, India still has a chance, India too, for a gold. But Netherlands के point of view से that's not an option because draw पे they get nothing. Yeah. So I think they will rather lose than draw. I think ऐसा मुझे feeling आ रही है. So they will definitely go for it. Can you briefly look at all the 4 boards, like evaluations, like what's happening? यो लक्ष्य भाई, यो चेजी भाई, chat कैसा लग रहा है यार chances के बारे में? Okay, so we have the King's Indian in this position and Nodirbek, we play the classical. Usually यहाँ ऐसी positions में black को attack करने का chance तो मिलता ही है, लेकिन Indians always prefer white, always. So very theoretical battle. I like the fact that white के पास time ज़्यादा है. I'm very happy about that. So looks like an opening position right now. Let's go to board 3. Yeah, by board 3. Board 3. Wow. So this is looking a very interesting position. Benjamin Boak lost his last round game. I'm really hoping he's, really vouching to come back today. बहुत important match है इनके लिए. And so for now, the game looks equal. Time is balanced. I do feel these double pawns are a bit weak, but white again, similar to that Ronak game we saw, has an open F file. So very interesting. Let's go to the next game. I think balanced ही अभी. And this is the last one. And this is the last one. Max Overtime won yesterday. He's in great form. He's also ahead on the clock. I have huge faith in this guy. And जो opponent है उनका अधिबान से कल उन्होंने एक बहुत बड़ी tactic miss करी थी knight d4 की. So clearly his confidence must not be as high as it was before this round. So I'm hoping Netherlands can really push against Uzbekistan. So far, chat, all looking good for Netherlands, I would say. So Beesbhai, I think it's time to go to the women's section, I guess. Yes, भाई, quickly let's see because अपने winners वहीं पे हैं भाई. That's all leaders. Let's see भाई हम्पी जी ने क्या खेला है भाई. She has started with d4, knight f6, c4, g6, knight to c3, d5, c capture on d5, knight capture on d5, e4, knight capture on c3, b capture on c3, bishop to g7, queen to a4 check, knight to d7, blocking the check, knight f3, castles, queen to a3. E5, bishop to g5, and this is the current position on the board by. Now, I don't think black wants to play f6 here. I think that is the idea of bishop g5 to kind of tempt black into going f6. F6, because that would basically, the bishop on g7 is a monster in this structure. He's putting pressure on d4. So it kind of challenges the white center. अगर यहाँ f6 खेल देंगे, not only does it open your king, I think it also blocks your bishop. The bishop after f6 will quickly drop back to e3, I think.
and then white is literally better. So I think probably black has to play something else. Maybe bishop f6 is a better move instead, but we'll have to see. Black is still thinking. Bishop f6 पे मैं सीधा exchange ही कर लूंगा भाई. Yeah, but at least the queen will come to f6 now. So at least I'm still putting pressure on d4. Got it. And you know, opponent is used up 12 minutes of our time, and Humpy has not used a single minute. So I think Humpy is very well prepared in this position. And in for example, Chess.com games, only one game had occurred in this position. There, black played queen e8. That's also a very interesting possibility. I think queen e8 is also kind of blocking the file for the rook. And if I play just bishop d3, I think white should be better, presently better. So the choice for black is not comfortable at all. I really like the setup. I've not seen the setup of queen a3. I really like the setup, and I might try it in my own games. I really like it. आप बोले queen e8 खेलने का. Queen e8 पे मैं यहाँ bishop नहीं आ सकता मेरा. अगर bishop e7 खेलोगे, I think it might have some drawbacks after maybe ed4. I think जो center हमारा है, it's kind of falling apart मुझे लग रहा है. And after let's play queen e8. एक बार देखते हैं line. Let's say queen e8 instead of bishop f6. Queen e8. Yeah, she plays bishop queen e8, bishop e7. Now ed4. ed4, okay. Yeah, and ed4 के बाद, let's say you capture with the c pawn, I guess. I think that's important. Now the e4 pawn is hanging. So I can play a move like c5, disconnect your bishop from the queen, and let's say c5 खेला मैंने black से. c5. And let's say you take on f8, bishop takes f8. I can simply even take back with the bishop or even take on e4. Next, I'm threatening c takes d4, threatening your queen. I'm threatening queen takes e4. And, you know, this is not so comfortable. I don't feel so comfortable about this, honestly. Even though I might have the rook, but I think thoda center fall apart kar raha hai. So it's very dangerous to play like this. And I think black went bishop f6. And yeah, that makes a lot of sense. Yeah, so we'll see how this game progresses. I think Humpy is now calculating. Let's go to the game of Vaishali, who's on board 2. ये काफी moves हो चुके हैं. वैशाली game में 16 moves already into the game. Yep. d4, knight f6, c4, g6, knight to c3, d5, c capture on d5, knight capture on d5, e4, knight capture on c3, b captures, bishop to g7, queen to e3, sorry, bishop to e3, c5, rook to c1, queen to a5, attacking on the pawn on c3 somehow, and queen to d2, castles, knight f3, knight d7, bishop to d3, e5, d5, f5, queen to e2, f capture on e4, bishop capture on e4, knight f6, d6, king to h8 and knight to g5. भाई और इसमें किसी ने कोई टाइम ही नहीं लिया. दोनों का प्रिपरेशन है क्या ये? हाँ, दोनों का हो सकता है, but I have to say white definitely seems a bit better. I think जो d6 pawn है, it's very uncomfortable. The bishops make a good impression on me. And if you take on e4, I can take with the knight, and the knight on e4 is there to stay. So I think ये pawn on e5, pawn on c5, I really miss my f5 pawn here because they're kind of isolated and block my bishop. So Vaishali must be under slight pressure here. I think I do like white's position here. White's king is safe. The bishops make a good impression. Knight on g5, take on, I'll take with the knight. c5 pawn is a bit weak. e5 is a bit weak. The pawn on d6 is strong. And it's not like really bad or anything, but I think white is pleasant here. Like he's very pleasant, very, very solid. And Vaishali will really have to fight, I think, in this game. It will not be an easy battle for her. So I think we'll see how this progresses. Let's check out Tanya's game, where apparently somebody was saying that she's better in her game. Let's have a look. Already. हाँ, ये chat क्या हाल है भाई? Zero chance for gold नहीं है रे, बिल्कुल भी नहीं है. फिक्र मत करो, आज हमने reinforcement बुलाई भाई. अनीश गिरी भी हमारी तरफ से खेल रहे हैं. एलेक्सिस शिरो भी हमारी तरफ से खेल रहे हैं भाई. Crazy matches. Yes. Let's go भाई. तानिया ने ओपन किया d4 से knight f6, g6, sorry c4, g6, knight to c3, bishop to g7, e4, d6, bishop to e2, castles, knight f3, e5, d5, a5, bishop to g5, knight to a6, knight to d2, knight to c5 and h4. भाई मेरे को नहीं समझ में आया क्यों इतना पसंद कर रहा है भाई. हाँ, so ये उतना कुछ ऐसे advantages I don't think होगा. It's all about how the Indians prefer the King's Indian mostly, yeah. So I think till the move knight a6, it's pretty normal position.
And that's when Tanya played the move knight to d2, which is the second best choice. And after the move knight c5, she played h4, which has not been played too often, and that's an interesting move here. So that's why black is taking her time, and h4 is a very good move actually. The plan is to open the h file, of course, and Kings Indian mein na white ka, if you just look at the engines, it will tell you white is winning every single game. It simply bolega, because it sees the space advantage and it's like haan bhaiya khatam. But the thing is, ek mistake, one single mistake from white, and it can be completely lost sometimes, because hota kya hai, white is playing in the center and the queen side. So even if you kind of get your pawns all the way to b6 c6, you at best can maybe get a pass pawn and get a very winning position. Yeah? But if black starts pushing f5 f4 g5 g4 h5, if he gets through, he gets your king directly. So it's over. So that's why the Kings Indian is favorite of attacking players. Many top players play this. And so I think this will be a very interesting player. I think Carissa Yip is the strongest player in the US team, one of the strongest. So it will be a very, very interesting fight. Tanya is pretty balanced with her ratings, and she has the white pieces. I expect Tanya to push today. So let's go to the fourth board where we have Bhakti playing against Abramyan, if I'm not pronouncing incorrectly. And she has the black pieces. And can you have a look from the top? Tanya and Bhakti. अच्छा हाँ, मेरे को लगा खत्म हो गया हमारे सारे बोर्ड्स. E4, E5, knight to F3. एक सेकेंड निरंजन भाई. Knight to F3, knight to C6, bishop to C4, knight to F6, knight to G5, putting pressure. Oh, pride lever. But I think it would have entered that. Let's see. D5, he captures on D5, knight to A5, bishop D5, check, C6, captures, knight to D5, H4, knight D5, H4, S6, queen to H5, queen to F6, knight to E4, queen to E6, and knight BC3. And the thing is, the choice of white is very interesting, because it's very clear the other team has to win, right? So a draw might not be enough for them. So sometimes even taking a pawn and just going for it makes a lot of sense in the last round, because it will at least guarantee you a result, because it's very difficult. Yeah, if you take a pawn and opponent's composition, either you hold on to the pawn or your opponent destroys you sometimes. So in most cases under pressure, that can be a very interesting strategy to at least have an imbalanced game. That's what you basically want, right? Is it real chess? हाँ भाई मैं ही हूँ भाई. Knight to F4 खेल देंगे मैं, attacking the queen and the G2 pawn. कैसे बचाओगे आप? क्या चीज? Knight F4, attacking the queen and the G2 pawn. कैसे बचाओगे आप? Queen F3. अच्छा, Queen F3, ठीक है भाई. हाँ नहीं मैं साहिल टिक्कू से मॉड हूँ भाई, चेस को मॉड कर दो भाई. हाँ so हाँ ये लिखा था मैंने. हाँ. So I think we can I think this is if you play queen to F3, I will play F5. F5 का actually I'm not so sure, because जो ये H4 उन्होंने खेला है ना, it's complement knight G3 now. Knight G3 now. And the issue is कि F5 weakness है. अच्छा okay. मैं कहा ये, तो इन्होंने कहा ये knight F4 queen F3, F5 knight G3. तो इसने कहा knight to G3. And the thing is, ये जो H4 pawn है ना, it will come to H5 at some moment, and ये F5 pawn हमेशा, the center of F5 E5 will be very weak, I feel somehow. अच्छा ये push कहाँ से करूँगा मैं, ये तो knight तो मर ही रहा है. And remember we are a pawn down, so वो एक चक्कर है, we always are a pawn down, so we need to always maintain as many pieces as possible usually. Got it. Yeah, so I think looking interesting right now. Bhakti is calculating. She won a very convincing game yesterday. Found those tactics with knight f bishop c3, knight f rook g8. So she's tactically very aware and high in confidence. So which game shall we look at, Bees, by now? भाई let's quickly move on to India 2 के games भाई, क्योंकि वो बहुत important चल रहे हैं इधर. Where is Bhakti? यहाँ तक हमने देखा था, I think, right? Yes.
C captures, E captures, queen to A4 check, knight to C6, bishop to G5, S6, bishop captures, queen captures, E3, castles, bishop E2, queen to D6, castles by white, bishop captures on C3, B captures on C3, and bishop to D7 by. So these guys position को देख के क्या लग रहा है यार? Do you think Gukesh has any chances to win this as black? पता नहीं भाई मेरे को तो, to be honest, but I'm hoping कुछ तो निकाल ही ले गुकेश। बट ऐसा कोई इम्बैलेंस नहीं लग रहा ना? लग रहा है क्या? नहीं लग रहा actually नहीं लग रहा है. It just feels a bit. The thing is, the bishop on d7 is not a comfortable piece. Like we know d5, it's kind of a worse piece than the bishop on e2, and also the knight on c6 is blocking the c pawn, and now rook b1 is going to come up soon. So if anybody is better, it's white. But I think Gukesh ka hame pata hai, he can slowly start outplaying his opponents. So I wouldn't discount him. I think on slowly trying to, but it's very difficult in such positions. You know, jahan pe pieces kam hai. And white clearly has a very solid structure. It's very difficult. Yep. And let's go to the next game. Yep. I think ये वाले का chart, it's very difficult. I think draw is the most likely result. Yeah, Gukesh as well. So Niranjan, can you show the game to Sahil? I have to like just 2 minutes. मेरे को थोड़ा सा काम है. Thank you. Yeah, by the way, I love Nihal's position. I absolutely love Nihal's position. ये जो position है ना, this is a very very dangerous setup for white because यहाँ पे if he can go to move number 5 and start from there. So basically what Nihal has managed to do that after e6, so bishop is not coming to f5, so there is none of those queen b6 lines now possible or at least threatening. So he plays c3 instead of knight d2 now, bishop d6, and instead of putting it back on g3 immediately, he plays knight to d2. And black now takes on f4, and white takes back, no harm, no foul. Queen c7, g3, castles. And you know, the first time I faced this black was against an FM from I think UAE, and I also kind of underestimated this for white. So I also I think took on d4, and this is what Nisipiano has Blue Matches has done. Usually I would recommend kind of supporting this somehow with a move like let's say b6 and maintaining this center, ताकि ये अगर वो pawn से मारे तो हम pawn से capture कर पाए और white को d4 square ना मिले. That I feel is much more comfortable for black. जब आप d4 मार देते हो ना, white takes with the knight c6 and now knight 2 to f3. So what is happening is कि हमारा अगर आप d4 मारोगे, I will take with the knight, and this knight on d4 is there to stay till the end of the game. It's such a hopeless position for black because you have absolutely no play. You cannot play e5 because that will give you an isolated pawn, and then the white bishop will come to e3 and f3 and put a lot of pressure on d5. That will be clearly worse. And if you can't play e5, what's your plan? What's your pawn break? There's nothing. So I think this is a very depressing position for black to play. So I would say Nihal, even if he tried to, cannot lose this. But the thing is, touchwood of course, but I think यहाँ पे I'm very happy with this position. I really love this as white, honestly. Like I thought Anish is not the best choice, but I don't like CD4. Like even though the engine might recommend it, practically it's very, very depressing to play as black. Like I just don't know a plan for black here, honestly. तो चैट में अगर हम देखेंगे तो आई लव लंदन सिस्टम का जो वोट है थोड़ा ज्यादा है. अरे नाइस. Yokshat bhai, what's up? How much अरे ये क्या भाई? I like how I learn opening ideas and what not to do just to see GMs doing the complex position. ये क्या है यार? Sahil, okay, 30 guys, minutes. by the way, 200 like हो चुके हैं. Can we go for the giveaway question? भाई आप are you back already? Yes, हाँ, बीस भाई, आप क्वेश्चन पूछो मैं ना. I'll get some water भाई. Okay भाई, आराम से. तो चैट, let's go. निरंजन भाई इतना ज्यादा सिंपल नहीं हो गया क्या? तो थोड़ा ट्रिकी कर दें क्या? हाँ भाई. ओके, तो ट्रिकी कर देते हैं. हाँ. ओके, लेट मी फाइंड. ओके, तो ये सिंपल क्वेश्चन तो नहीं है मेरे हिसाब से, पर फिर भी हम पूछेंगे. ठीक है भाई.
The question is, what is the name of the academy through which Vishay Anand helps the youngsters? विशे form देना आनंद चाहिए। सर की एकेडमी का फुल फॉर्म बताओ, पूरा नाम बताओ कि क्या है, Correct. and you can get a membership. Let's go, guys. And by the way, in the meantime, can we move on to the next game? Nihal sir in very pleasant position currently for him. And knight से capture किया, नहीं दूसरा knight यहाँ पे आके बैठने वाला है भाई forever. Yes, आ चुका है, and Nihal sir has played that. Let's move on to the next game, guys. The next game is of Pragnananda. चैट में क्या चल रहा है भाई? चैट में कुछ कुछ चल रहा है भाई। एक ने लिख दिया चेस एकेडमी है उसका नाम। देखिए आए। ओके नितिन पाल। Okay, got it, bhai. Let's let him come and he will select it. Yes. And let's quickly go to the game of Pragnananda, bhai. Pragnananda game में क्या चल रहा है? Yep, let's go. आ गए हैं साहिल भाई, क्या आप एक विनर सेलेक्ट कर सकते हो? Okay. कौन है भाई? चिराग डोडेजा जी। Congratulations भाई। चिराग डुडेजा भाई, congratulations, you have won. ठीक है, वेस्ट ब्रिज आनंद एकेडमी। चेस एकेडमी है, पर ठीक है चलो दे देंगे आपको भाई। नाम नोट कर लेना आप भाई, निरंजन भाई। यस, चिराग डोडेजा जी, आप मुझे ट्विटर पे लिख सकते हो। मेरा ट्विटर हैंडल मैंने पोस्ट कर दिया है। यस ओके, लेट्स गो टू द गेम भाई ऑफ प्रज्ञानंदा भाई। प्रज्ञानंदा को चैलेंज किया गया था सेंटर पे बाय प्लेइंग d4। तो इधर कैप्चर कर लिया है, नाइट कैप्चर्स, जी e5, नाइट टू b3, बिशप टू e6, नाइट c3, बिशप टू e7, f4, e कैप्चर f4, g कैप्चर f4, g6, नाइट d4, नाइट टू c6। और यहाँ पे अपना बिशप पेयर क्यों दे दिया पर? एक second, let me check. Yeah, so this is not a normal position, right? Because white ka pawn f4 pair. So not only does it open up his king, it gives us the e4 and g4 squares. So kalko, right now it's controlled, e4 is controlled at least, but it might happen someday. Also, the bishop on c1, how do you think he's feeling right now? Not so happy, I assume. So I think it's not looking, it's pretty balanced, I would say. I think Prag is not risking much. Lekin, what if I told you, chat and B-stats, Ronak is almost winning? What? Ronak is already winning? Yep, almost winning. Can we go to his position? This is equal for Prag. Ronak is almost winning right now. And as I mentioned, the youngsters always, can we go back to move number, I think, 7 or 8? I think you start from there. Because काफी complicated position है, जहाँ पे Ronak has somehow really confused his opponent. Okay. So he played knight e7, his opponent. C4 played, so trying to challenge in the center. DC4, bishop c4, a6, knight c3. Ronak is simply going for development. He's not trying to stop the b5 and so on. Knight c6, d5, and he gives up the e5 pawn for basically development advantage, because white is castled. Every minor piece is developed. Look at the bishop on c4, bishop e3, knight c3, knight f3, but black ka bishop f8 pe hai aur castle nahi hua hai. So black takes the pawn, bishop e2 comes back, which is very difficult move to make, takes, and now knight e5 is a mistake from black. And Ronak, why is it a mistake, bhai? Because you're not developing your pieces, I think. I think you're owning the same piece twice. I think it was intent to get the bishop there. Yeah, I think यहाँ पे 95 के बाद he plays the best move, bishop to f4. And if now you take the bishop on f3, जिसके लिए आप आए थे, after queen takes f3, white has such a dominant position. Like threat is of course take on e6, take on b7 in some cases. Let's say you play the best move or the normal move, bishop e7, to kind of prepare castling. I think that makes sense. Now I play rook a d1. My threat is d6 winning on the spot. And if you move the queen, kaha queen move karoge? It's not there's no decent square. Let's say you move the queen to b6. Now d6. Queen b6, let's say. Now d6. And the bishop is attacked. So bishop has to move. Let's say it comes to f7, f6. D7 check. Oh, wow.
So this is literally lost. He can, I think if this is not Olympiad, he might consider resigning. So I think after bishop e7, rook a d1, black has to literally just castle and just give up the e6 pawn if you go back a few moves. So one information here, that Ronak Sadhwani is in his preparation, because if you look at the database, there is a clear sign that this move d5, 11th move d5 was a prepared move. It was first played by Bologan, Victor Bologan of Moldova from 1995, and in this position after knight ce5, Victor Bologan had not played bishop e2. So bishop e2 is a very nice move which was played in a correspondence game, and after knight takes f3, bishop takes f3, the second dubious move, let's say, is knight e5, which is giving a chance to Ronak, and he has seen this and he has blitzed out the move instantly. Got it, man. Yeah, so chat, Ronak, could be the hero today for Team B. Look at the clock. Yeah, indeed. I think definitely looks like completely, preparation for Ronak for so far. And as I mentioned, it's very obvious, chat. Youngsters have a great edge usually when they're playing adult players, because responsibilities of life, bees by. They have a family, they have other things in life to do, and kids have just one thing to do, and that is chess. So I think Ronak utilizing his opening prep to the fullest, and this might be a critical game. So, so far, chat, Team B looking pretty decent. और किसी गेम देखना बाकी रह गया क्या हमारा? Can we quickly have a look at Alexei Shirov's game once? I'm just curious what's happening on board 1 there with Sargsyan, because that is an important game as well. And as of now, I think Shirov is slightly worse. I think Sargsyan does have the the center, this huge center in e4 coming up at some point. So Shirov, we are really banking on Shirov today, chat. We really want him to play some good chess today, taki it can also help India and his own team. Even a draw with Armenia would be really awesome for Team India, chat. That would be awesome. और कौन से हैं गेम्स देख ही लेते हैं फिर हम लोग. We can have a look at all the 4 evaluations right now. Okay, so board 2 seems to be still in the opening phase, I would say, but I would say Valeo Pons has a very pleasant position because he's already played e5, and the knights on d7, e7 are not doing anything serious to defend the king side. So I really like his position. That's a good sign for Team India that although the d4 pawn is right now under attack, so white has to be careful, of course. But I think that is not really possible, because I think after cd4, there will be knight d5 ideas, with the knight coming to d6. So I think so far looking good for Spain there. Let's go to board 3. Board 3 पे Anton Gujar खेल रहे हैं. And board 3 पे we have the London system, and this is a worse version. The version Nihal has, there's a knight on d4, and look at this, black played b6, c5. Exactly what I said. So whenever you the London system, you allow your opponent to capture on f4, you should always play b6, c5 and not take on d4 and allow a knight to come to d4. That is very important, and I don't think Anton Guerrero can lose this game, chahe kuch bhi ho jaye. After black plays b6, c5, black is usually even tiny bit better. So I think this will most likely end a draw. Looking good for Spain. Let's go to board 4. Okay, let's go to board 4. Board 4 kiska hai? I think this one. And here as well, I think Spain is looking absolutely fine. Rook on e3, looking decent enough, can come to g3 if required to. White has 2 pawns in the center. Black is yet to equalize, I feel. So yeah, pretty equal, I would say, in this position. So I think Spain so far doing pretty well against Armenia, and that is great news for India. So Bisbai, I think we can look at India A team, because they also are fighting for a medal, and they are playing the toughest team on paper in the Olympiad, and US also fighting for the medal. So both teams have to win today, and a draw would not suffice. That's why it's all going to be fireworks on that board. तो चैट एक बार पढ़ लेते हैं, नहीं तो चैट हम लोग को मार देगी भाई. क्या चल रहा है चैट में? मेरे लिए तो विशाल, अरे विशाल भाई लव यू मेरे बजाय भाई. Chat here, do we still have medal chances? Yes, we have, Avni ji, we have some chances, but उसके लिए कुछ चीजें हैं जो होना पड़ेगा.
जैसे मतलब इंडिया वुमेन सेक्शन में तो ऑलरेडी वी आर लाइक लीडिंग, सो वहां पे सिर्फ जीतना है एंड नहीं, वी इन विल द बी केस इंडिया टूर गेटिंग। जीती है तो मेडल तो मिल जाएगा कंफर्म, बट हाँ, गोल्ड के लिए कुछ चीजें हमें अपनी तरफ चाहिए। यस यस, तो इंडिया टू हैज टू विन टुडे, यस तो यस। एक एक कोई ना कोई मेडल मोस्ट प्रोबेबली हम लोग को मिल जाएगा, ब्रॉन्ज सिल्वर या जो भी होगा। सो let's start with Harikrishna's game. यस भाई। Okay, let me open it up. Yeah. हम्म। So Harikrishna has played a very interesting setup. I don't know if can we go back to when DC4 happened, move number 9, and Queen C4, move number 10. Yes, queen capture C4. So he played knight C6, which basically is not going for C5, now it's going for E5 on a good day. I think that's the plan, because you played knight C6, you can now play E5. So white plays E3, normal move, and black plays the move E5. So he gets through with it. And if you take on E5, black is already tiny bit better because he's fully developed and you are not. So white instead plays D5, but Caruana, to his credit, does not move the knight, he plays E4. And now the B2 pawn is attacked when white is not castled. So after queen takes E4, queen takes B2, rook D1, queen C3 check, we have a repetition already, rook D2, queen C1, rook D1, queen C3. Now, I must say, I think I'm not sure if Harikrishna was kind of unprepared in this line, or whether he just was happy with the draw and hoping that other boards win. What do you think, Beesbai? Like, is let's say from White's perspective, from India's perspective, a draw for Harikrishna against Caruana a good result for India or a good result for USA? Because technically good result for India यार Caruana, but Caruana form में भी तो नहीं है, तो chances थे कि उसको हरा सकते थे, but and also Harikrishna has the white pieces, and when you're playing the US team, you have to strike with the white pieces, I feel. Because clearly, even when we saw, Mukesh won with the black pieces, but he was on insane form. Ronak also won, right, with the white pieces. So white pieces are kind of important, and I'm not sure in whose favor will this game go, will this result go. True, man. But most probably ये तो draw हो जाएगा, क्योंकि they will repeat it. Yeah, they will draw this game. I think they will draw this game. Yeah, rook D2 does seem to be like the best. Moving the knight back to D2, I don't like it. So Hari के पास तो पर कोई option ही नहीं. If Fabi wants, he will get the draw, right? Yeah. I think why the thing is he rook... thinking to playing now rook to D2? No, he's just thinking whether he can play knight D2 or not. But I think moving the knight back is clearly not the best move. He has to take the draw now. So, chat, a draw incoming in this game. Harikrishna should not overpush. We saw how harmful it can be. Take the draw. It's not a big deal. We can hope for the 3 boards. Let's go to Vidit's board now. Yes, well, let's go to Vidit's board. Vidit में देखते हैं क्या चल रहा है. Let's start from the 10th move most probably. Yeah. यहाँ पे थोड़े से कैप्चर्स हो गए थे. हाँ, ये हो गए. बाबू की आंखों में नींद है. खेला क्या? बाबू की आंखों में नींद है. नींद से ज्यादा भूख है यार, मेरे को भूख लगी है एक्चुअली, so I'm just waiting कि कुछ खाने को ऑर्डर कर पाऊँ. Knight to E7 is played, queen to B3, rook to F8 and D4 by. Yeah, nothing much has changed, I would say. Normal moves. White played D4 in the center, and black played knight E7. Yeah, so now I can kick the knight over C6 if I want to. So the knight cannot stay there. So there's pressure on E5, and black has to decide. Yeah, does he play knight G6 to defend the E5 pawn? I don't think taking on D4 is good, because that will give white a huge center. Also, maybe moves like D5 come to mind now. That is also up to. So, for example, D5 now. If E takes D5. Now I can even play the move E4. Attack your knight. Let's say the knight goes to D2. And now I can also play A4, attack your queen. The queen has to go back on C2, let's say. And now I take on D5. So this is a possibility for Vidit, which looks impressive. Yeah, knight E5, because knight F6 is better developed, right? And also defends the E4 pawn. So knight E5, and now I attack your rook. So this is in Vidit's favor. This was a bit of a cooperative variation, of course. I don't think Wesley is so cooperative. After E4, he can actually go knight to E5 as well, which also looks interesting. Knight to E5. After After if you go back, a few moves. Yeah, after D5, E4, knight D2 ke badle knight E5 instead. Yeah, E5, E4, knight E5 here.
also a possible move. So I think VD must be calculating if d5 is possible, or instead of playing d5, you can also go knight g6. That's also kind of logical. I think that's the immediate move you play in blitz games, yeah, because that's logical. But then after rook d1, Wesley should be tiny bit better because of this pressure on the c7 pawn. The queen always has to stay in touch with this pawn, and it will be slight pressure. This reminds me of a class, like, the classic grind, yeah, matlab slowly putting pressure on black. So if d5 is possible, with it should play it, because it kind of liberates his pieces a little bit and releases the pressure on his center. So VD is calculating. I think he has enough time on the clock. I think he's doing fine as of now. Let's go to Arjun's game on the last two boards. आगे भाई हम अर्जुन की गेम पे a6, narrow f3, bishop to d6, castles s6, s3, and rook e8, bishop to d3, knight bd7, and a4. Not allowing b5 maybe. Not much has changed since then. A4 prevents b5, of course. That's the ultimate goal of it. A very useful move in these structures. The happy black has played a6 and is trying to undermine a d5 pawn. But I feel Dominguez isn't so comfortable in this structure, because if you look at the clock, he's used significant more time than Arjun. So that is, that's kind of a positive sign that he doesn't know like exactly what's the best plan for black. And I probably assume that's first of all b6 to kind of prevent a5 ideas. And I've seen this maneuver, I think, in the game between I think it was Krishchuk, or I'm not exactly sure, where black plays b6, rook a7, and then slowly transfers the rook to e7. When the knight on d7 has moved, he will play knight e5 or whatever, and then play b6, rook a7, rook e7. That's a very common maneuver here, and it might just work because the bishop on c8 does not have a good square to go to, so you just keep it there and you directly deal the rook. So I think that might be a good plan for black here. So Dominguez is taking his time to figure out the best plan, and I hope Arjun can put a lot of pressure on the clock, because that's clearly an edge for him here. So far, chat, all 4 games looking equal. No one has a clear edge on any of the boards. Only SL Narayan ka game baki hai. SL ka baki, my bad. SL is still playing. Let's go to SL's game. यहाँ पे भाई, okay. Queen to yes, c2, so queen to c6, queen captures, knight captures, bishop f4, knight to d5 is played by bus. Yeah, so I would say white is tiny better, because this knight on c6 is a bit loose, and the c7 pawn can be weak after rook c1 ideas. But if SL is prepared, and if he's not prepared, he takes his time to come up with the best moves. Like, if he can play good moves for the next 5 moves, I think he'll be absolutely fine, because the queens have been traded off. The structure is not symmetrical, but it's also very solid for black. And whenever white plays e3, I can trade the light square bishops, which is also a good trade for black, I would say. So if SL can play good moves for the next 5 moves or so, I think he will equalize, and then it should be absolutely fine. But SL भाई तो preparation में नहीं है भाई, because नहीं, and white has a bishop pair. ऐसा नहीं है. But the thing is, whenever you play e3, I'll trade bishops. So yeah, he doesn't look in prep though. That is true. He doesn't look like he's in prep. But the position is also an endgame, a simplified one. So I do think SL can come up with some good moves here to equalize. Basically, that should be the plan. कोई नहीं मरी है भाई. अभी end game but the thing is, it's like, जब queen जाती है ना, then suddenly all games look like an end game somehow. Like यहाँ पे exchange होना कितना आसान है. Like मतलब e3 के लिए bishop exchange हो गया, then knight e5 के लिए knight exchange हो गया. It's very simple to exchange pieces. Got it. Okay. So so I think to the women's section एक बार. Sure, बिल्कुल. I was checking, hoping कि एक बार अब्दुल सत्तारफ की गेम देखते, but okay, let's look at the women's section first. ये लो भाई, अब्दुल सत्तारफ की गेम दिखाई देते हैं आपको, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है. ये लो भाई. Okay, so in first glance, this looks like a position which is comfortable for black, because I think जो pawn structure white का है ना, it's kind of broken now. So moves like g4 are no longer possible. f4 I'll just take and open my bishop. The d5 square is weak, but it's well controlled, and there's no piece coming to d5 in the near future. a5, a4 is coming. So I would say I'm happy with Anish's position.
I think he's not really struggling at all, and his king is a bit awkward, but I think I would be happy if I saw this, if I wanted Anish to win. Like, I think Anish has genuine chances to win this game. Let's check out the other 4 boards as well, 3 boards. Yo, कैसे हो? ओहो राकेश भाई, क्या हाल है? ओ यो राकेश भाई, हेलो कैसे चल रहा है? अरे बस यार, उम्मीद मिल गई कल की आज की पेयरिंग देख के भाई। सही में, मतलब इतना खराब था कल का, बट खैर आज वापस चांस है इंडिया का। बट साहिल में आपने एक चीज बोला ना कि अपने हाथ में नहीं है, लाइक वी आर डिपेंडेंट कि कोई और कुछ हेल्प कर दे ऐसे, एटलीस्ट ओपन सेक्शन में। हाँ, but the thing is, you know, if you go with like होता है ना वो, like मतलब वो if the most logical things happen, I think India 2 wins, because Spain is on paper stronger, then Netherlands is on paper slightly stronger, and then India 2 is better on form. So if the most logical things happen, like it will go perfect for India. But I think, of course, in the tournament, of course, these 2 teams are playing very well. But I kind of trust the stronger teams to strike under pressure, because Uzbekistan has everything to lose. Now, Armenia is a very established team. They have established players, like stable players. But for youngsters, what happened to Ukesh yesterday could totally happen to any of the Uzbekistan players today, because they might falter under pressure because they have everything to lose. मतलब इतना close है gold के यार, मतलब एक गेम। सही में यार, सही में बहुत क्लोज, ज्यादा क्लोज है। प्लस उज्बेकिस्तान ने कल दो जहाँ पे जीता, एक तो मतलब बोर्ड पे गुकेश के बोर्ड पे जीता और 2-2 ड्रॉ हो गई। और दोस्तों सब चैट को बताना चाहूंगा कि 2026 का ओलंपियाड उज्बेकिस्तान ने जीत लिया। हाँ। So they will be hosting it. करेक्ट। तो आप सोच लो वहां पे भी होगा उज्बेकिस्तान 1, 2, 3। That will be crazy. That will be crazy. Yeah. But yes, on paper तो मैं एग्री करता हूँ आपने जो कहा साहिल भाई, बट होता ना कि इंस्पिरेशन या मोटिवेशन इतना ज्यादा होगा ये बच्चों का। हाँ। तो मतलब बहुत तनाव वाला माहौल है, बहुत टेंशन वाला माहौल है। तो इतने दिन अरे एक्साइटमेंट थी, खुशी थी, आज काफी ज्यादा मतलब सीरियस वाइब है यार। I think जो top teams है उनमें टेंशन होगा, बाकी तो I think people who don't have a chance to win might be a bit relaxed now, because after all it's the last round, they want to enjoy it. But I think top जो 10 teams हैं who are fighting for medals या board prizes, I think they will surely be very tense. Oh my god, this is the ultimate moment, yeah. करेक्ट। एंड कुछ प्लेयर्स तो स्मार्ट भी हैं जो खेल ही नहीं रहे, मतलब बोर्ड प्राइज के लिए, मतलब वो सब भी हो रहा है सब। हाँ। वाले सब। बट मैं तो ये जो इंडियंस है ना यहाँ पे, मतलब सारे हम इंडियन, उनका ऐसे चल रही है। अरे मतलब जो आई थिंक अभी सबको रियलाइज हो रहा है भाई, अगले 4 घंटों में डिसाइड हो जाएगा। हाँ। क्या तो वो वाला भाई बहुत ऐसे अच्छा भी लग रहा है, मतलब थोड़ा डर भी लग रहा है ऐसे। बट ये 6 बजे गाइस होगा क्लोजिंग सेरेमनी आज, एंड ऑफ कोर्स चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु आ रहे हैं, बट महेंद्र सिंह धोनी भी आने वाले हैं। हाँ, ट्रू। तो बहुत सही होगा ये, एंड होपफुली इंडिया काफी सारे मेडल्स जीते, मतलब इंडिया का नाम बार-बार आए स्टेज। तो लेट्स really hoping for that. I think because India में जीतना, home country में you get the maximum exposure, maximum, and I think इतनी opportunities मिलेंगी I think players को, chess को in general, because of it. So I'm really hoping कि like मतलब India can win gold in both. That would be awesome if that happens. Yep. Very true. And यहाँ पे देख सकते हैं भाई इंडिया ए भाई 2 प्लेयर इनके बैठे हैं, 2 प्लेयर उनके बैठे हैं भाई, दो गायब है, ये भी सही है। हाँ, एक्साइटमेंट भी है भाई और थोड़ा सा नर्वसनेस भी है भाई आज, और थोड़ा सा ऐसे सैडनेस भी है कि भाई अब खत्म हो गया भाई, ऐसे 4 घंटे बाद नहीं है कुछ भी। कल सुबह नहीं जाना है भाई 2 बजे। मैं तो बहुत खुश हूँ कि 20 स्टैट्स भाई आ गए, मतलब उठ गए। अरे भाई मैं जाग ही जाता हूँ भाई जब कुछ इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा, शायद आप सोए नहीं हो, मतलब आपने जाग ही लिया अभी। नहीं भाई मैं सो के आया भाई एकदम अच्छे से।
चलो कल वाला तो ऐसा हार्ट ब्रेक था यार, मतलब हाँ यार, yesterday was a heart break भाई, बहुत sad हो गया था. I think in general गुकेश का जो वही attitude got him so far to kind of be unrelenting, like मतलब totally focusing on the game, like winning attitude. But then you know, in that moment it kind of also harmed him. Like he could have taken the draw, but he went for it. He felt he was winning, and even if he felt it was equal, he was like, "Nahi, मैं जीतूंगा," and he went for it. And yeah, I mean, just I think bad luck and maybe something to learn from. Yeah. बिल्कुल. But अभी भाई इतना सब करे वो बेचारा 16 ही साल का, मतलब exactly. हम क्या करते थे 16 साल की उम्र में. Exactly. So I think he learned from it surely, yeah, and long term it will be beneficial, I feel. मतलब ये attitude जो है, this is what got Carlsen where he is, and every world champion, every top player. So I think it really helped him long term. And you never know, we can still get gold. Like it's not over yet. Well, it might not be a big deal at all. Yeah. अगर गोल्ड मिल गया तो फिर विल बी लाइक क्या ही था, कुछ नहीं. हाँ, हम क्या स्ट्रेस ले रहे थे यार, हम कितने नूब्स हैं. अगर हम दोनों जगह पे गोल्ड जीते तो क्या प्लान है, कैसे सेलिब्रेट करेंगे? मैं तो बिरयानी मंगा रहा हूँ भाई. अरे आप दोनों तो आने वाले थे यार चेन्नई, क्या हो गया? अरे पता नहीं, आई थिंक वो उसके लिए आई थिंक प्लान पहले बनाना था, और ऑफ कोर्स कल के बाद थोड़ा सा वो भी हो गया. आई थिंक अब पूरा लास्ट मोमेंट तक है, एंड लेट्स सी क्या होता है. आई थिंक सेलिब्रेट करने के लिए मौके ढूंढने नहीं पड़ते. आई फील करना है तो हो ही जाएगा. सो फर्स्ट लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट एंड सी क्या होता है. Hari has drawn, by the way, chat update. It was very obvious. Hari had a repetition and they have drawn their game. I think it's a fair result for both teams. I would not say any team particularly benefits from this, because Hari had the white pieces. Karwan is slightly better on the ratings. So draw is a decent result for both teams, right? True. And लोग कुछ कह रहे हैं कि रौनक की गेम में कुछ हो रहा है भाई. हमने देखा था रौनक was much better earlier. Has it's like some this is wowza. रुको भाई ये क्या हो गया? This is crazy. So instead of bishop f4, bishop e7, he played knight to d3, and Ronak came up with a spectacular move, d takes e6, and black played fe6. But if he takes the bishop on f4, Beachbhai, what is the move here? White to play. Sorry, but if I takes the instead of fe6, let's say d6 के बाद knight f4 मार दिया. What do you play as white? Chad, what do you play? That's true. He could have pushed. Yeah, I think maybe he's not comfortable with this position. Insha, like sometimes you don't feel comfortable, right? I don't understand this position. Let me go for the draw. Beachbhai, what do you think? I don't know, bhai. So basically, piece down है, तो कुछ तो करना पड़ेगा खतरनाक. Otherwise हार जाएंगे भाई. हाँ, पर क्या करेंगे? The move is queen a4 check. ठीक है, queen a4 check. So you can't bring the queen in between. ये push कर दूंगा ना मैं. हाँ, so if you play b5, now I have bishop c6 check. Okay. And the king has to move to e7, and now I simply chop off the knight on f4 with the queen. Oh wow! And it's completely over. So I think that's why black realized he cannot do it. So d6, spectacular move by Ronak. I think he's still prepared, and black takes on e6 with the pawn. But now that means I can simply chop on b7, and it is clearly better for Ronak. But वो भी तो ये मार सकता है ना अपना b7. I don't think so. He will take on b2 here. I really don't think so. Oh, ये तो बहुत ही बुरा है. I don't think when your king is on e8, you can go so fancy, yeah. Rook hanging है. आप बोल रहे थे कि ड्रॉ हो गई हरि कृष्णा की. मैं तो दिखा देता हूँ कि उसके जो अपोनेंट है हमारे सामने ही खड़े हैं बस. वाह. Caruana right there. Caruana को बिरयानी खिलाओ भाई थोड़ा. सारे फोटो खींच रहे हैं. फाइनल डे ना, तो people also know कि यार यही मौका है. And people नहीं, volunteer है ये. Volunteer ही है. अच्छा. शर्म भाई, बेशरम volunteer. Volunteer ही है भाई. Nice. भाई मस्त है यार. बट वैसे आप देख सकते हैं ये है सीक्रेट एंट्रेंस. यहाँ से सारे ऐसे आते जाते रहते हैं, मतलब बड़े प्लेयर्स.
बट यस ऐसे मतलब अच्छा लग रहा ना कि भाई फाबी का भी ड्रॉ और दिख गया यहाँ पे। हाँ, ट्रू। आई थिंक साहिल प्रेस निकलने वाले होंगे, कल तक निकल भी जाएंगे, सो आई थिंक आज ही का मौका है। आई थिंक एनीबॉडी वांट्स टू टेक अ फोटो, आई अज्यूम। या हाँ, आज लास्ट डे मतलब सभी का जो लोग ने प्लानिंग की थी मेरे को इसका फोटो चाहिए। हाँ आज ही हो सकता है। बट यस आई थिंक उस फाबी ने तो उसका काम कर दिया टीम के लिए, बट अभी प्रेशर इज ऑन, मतलब विद का तो कल का विन की वजह से ना अच्छा कॉन्फिडेंस बूस्ट, या हमने बोला था, लाइक हमने प्रेडिक्ट किया था कि विदित जीतेंगे। हाँ एंड द थिंग इज इट्स लाइक you start believing you can win somehow, like वरना ना बिलीफ ही नहीं होता अंदर से। if you have like 7 draws in a row, you're like मैं यार I don't think so you start believing that your opponent can blunder, and you kind of focus more, you expect more mistakes, and that means you kind of find more, I think, somehow. बट अभी तो लाइक दोनों इंडिया टीम्स तो मतलब 3rd and 4th है फिलहाल, तो चैट फोकस तो होगा कि दोनों टीम जीत जाए। हाँ, बट एक तो इंडिया वर्सेस इंडिया पेयरिंग होने वाली थी हाँ, in a real ideal world scenario, हाँ, but वो रूल की वजह से I think they didn't get paired. हाँ, exactly. Even I thought that rule was not correct because it made no sense, because अगर आप इंडिया ये बी करते हो, of course they are top players, they might not do anything, but it gives the possibility of many not only unethical things but also kind of limits the choice. Yeah, मतलब both teams cannot win anymore. So I think last round में it's kind of a bit uncomfortable. एक्चुअली मैं तो खुश हूँ कि भाई अभी दोनों टीम को चांस है मेरे जीतने। हाँ, exactly. उसमें ड्रॉ होता तो किसी को भी नहीं मिलता भाई। That in the worst case scenario, like उसमें chances थे किसी को भी ना मिले। So I think this is the best case scenario. दोनों के मौका है, they have it in their own hands. मतलब टीम बी का तो मेडल गारंटीड if they win. So उनके तो पूरा हाथ में है clearly. चाहे कौन सा मेडल हो, it depends on other teams, but मेडल तो हाथ में ही है। Yep. तो अभी कौन सा गेम देख रहे हैं? हम देख रहे हैं, I think अभी हमने we're looking at Tanya's game, because women's section में तो simple है, जीतना है बस। If you win, we take gold, yeah. So सही है ना, स्ट्रेस ही नहीं है कि भाई अब जीत जाओ सब हो गया ऐसा। हाँ, exactly. उनको कोई स्ट्रेस नहीं है। And Tanya, I think clearly is the star of the Indian team, मतलब best performer ऐसे बोल सकते हैं इंडिया ए वुमेन में से। बहुत सही। And she's on the top on the board prize list. Yes. Correct. पर उनके साथ जो है वो सेकंड पे उनका भी सेम ही वो है रेटिंग, वैसे वो परफॉर्मेंस। हाँ, तो वो तो चेंज होगा आज के गेम आज के पे डिपेंड करेगा। मैं चैट को और एक चीज बताना चाहूंगा कि दोस्तों, इंडिया ए इज आल्सो ऑन टॉप ऑफ द गप्रिंडिशविली कप। ये ट्रॉफी मिलेगी आज, जो फेडरेशन के सबसे ज्यादा पॉइंट होंगे दोनों इवेंट्स मिला के, ओपन और वुमेन ऐसे। तो उनको भी अलग से मेडल मिलेंगे, उनको भी मतलब वो एक ट्रॉफी मिलेगी इंडिया को। होपफुली इंडिया 1 इज लीडिंग, इंडिया 2 इज सेकंड। तो उसका रैंकिंग सिस्टम बड़ा सही है कि वो लिखता है कि आपका ओपन में क्या रैंक है और आपका ओपन वुमेन्स में क्या रैंक है, वो दोनों को ऐड करके आपकी रैंकिंग आ जाती है। फॉर एग्जांपल, इंडिया ए इज 4th इन ओपन एंड 1st इन वुमेन, तो 4 + 1 5 हो गया, तो इंडिया ए 5 है वैसे। वैसे डिसाइड होता है वो मेडल। बट इंडिया बी तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट सैडली इंडिया वुमेन्स भी इतने अच्छे नहीं कर रहे, तो इसके लिए इंडिया बी इज सेकंड, बट एंड आई थिंक आर्मेनिया या यूएसए इज 3rd। बट वो भी एक चीज है जिसके लिए मतलब आज वो भी एक मेडल मिल सकता है इंडिया को। एंड इंडिया हैज नेवर वन ये वाला कंबाइंड मेडल जो है कि बेस्ट टीम एट द ओलंपियाड का प्राइज है बेसिकली। I think it's very difficult with teams like Russia there, I think, usually, because they are a very strong women's team. But this time they're not playing. Even China, very strong women teams. I think they're the two teams which have very strong open and women's team. But I think next Olympiad tak, I think India will be right up there. We'll have like 4 2,700 players in the open section, and we might even have 4 2,500 players in the women's section, because do to already hai Vaishali very close, Savita very close, and also many players rising. Yeah, you have Divya, you have others. So I think we might even have like 4 2,500 players in the women's section. I think next time
maybe even with all teams we might be one of the strongest. Yeah, बिल्कुल, very much possible. Looks good for future of Indian chess. By the way, Bishop B7 played by Ronak and Rook A7 has been played. And Ronak now Black के king को थोड़ी सी walk पे जाना पड़ेगा after the move Bishop C6 check. He will have to come to F7, and that basically means कि it will take a lot of time for the king to come to safety because there is no pawn on F5. देखने में ना ऐसे दूसरे लगता है कि F5 पे कोई safety है, but वो Bishop है भाई. So it's not the same, yeah. So I think Black king is clearly under fire. Not fire yet, but it can come soon. And let's see how it progresses. भाई So किसी तरह से इस नाइट पे एक और अटैक कर सकते हैं क्या? कर पाएंगे at some point. I think because the thing is, I just want to just first save my bishop on F4. Of course, we're hanging here. So probably like bishop E3. नहीं, he can't take ना उसका तो कोई hanging है फिर. नहीं मतलब it will be hanging at some point. No, मतलब ऐसा वो हमेशा तो रहेगा नहीं. So just move the bishop somewhere. I don't know if E3 is better or G3. We'll see which one Ronak goes for. And then slowly try to develop into the game, Rook A D1, whatever it is. We'll see how it goes. But clearly Ronak the favorite, clearly. और I think bishop C6 check, king F7, फिर आप bishop बचा लो. तो ऐसा होगा ना कि भाई black ने castling भी तोड़ दी, मतलब कुछ है नहीं उसके पास. तो I think Ronak is clearly better. और वो होता ना कि भाई अभी जस्ट 1 घंटे से थोड़ा ऊपर हुआ है गेम स्टार्ट होते, तो विद इन फर्स्ट टाइम में अगर आपका एक प्लेयर ऐसा हेड स्टार्ट दे दे तो बहुत सही है. और क्या बाकी टीम्स पे स्टार्ट से प्रेशर रहता है. करेक्ट, बिल्कुल. सो दे आर इन प्रेशर. लास्ट में क्या होता है, यू डोंट केयर अबाउट अदर बोर्ड्स, आप खुद टाइम प्रेशर में होते हो, बट स्टार्ट से प्रेशर में है. लोग उठ के देखेंगे, अरे यार ये तो पहले से ही हार रहा है भाई, अब मुझे जीतना पड़ेगा. एंड देन सडनली यू कैन लूज ऑन ऑल बोर्ड्स. या ऑफ कोर्स समटाइम्स दैट्स कैन हैपन. Yes, that's the plan, bro. That's yeah. True. But yes, I think so. Ronak is doing really well, and I think I feel Ronak will win this. Yeah, and you know, like सारे जो chess.com events हो रहे हैं ना आजकल, Title Tuesday हो या Rapid Chess Championship हो, he's been playing spectacularly well. Like मतलब he even came first in RCC once, if I remember correctly. And मतलब जो knockouts में नहीं, I think जो पहला वाला होता है उसमें qualification he came first. So I think like he's been playing really well, and it's been a surprise, and I think he is going to catch up with the others very soon in terms of official ratings, FIDE ratings. Like very soon he'll be 2650 plus, very soon. Correct. And like Bhupesh, of course 2700 or मतलब अच्छा वाला 2700 पे पहुंच चुका है. But guys, Prag is also 2670. मतलब सारे जूनियर्स ना निहाल अर्जुन आज ही हो सकता है. अर्जुन आज ही पहुंच सकता है. आज हो सकता है, बिल्कुल. और बहुत सही है कि मतलब प्रग निहाल इनके भी वो अपने पीक रेटिंग में पहुंच गए ये टूर्नामेंट में. बट वो मुकेश के परफॉर्मेंस से तो पूरा ओवर शैडो कर दिया. हां, इट्स ट्रू. लाइक इट्स लाइक मतलब यू नो इतना इन्होंने अच्छा खेला है बाकी लोगों ने भी, बट somehow somebody played so well कि मतलब वो थोड़ा आउटशाइन हो गए उससे. वो चीज तो है. बिल्कुल. But I think every point matters. I think once, if we do win, whatever medal you win, I think at the end, when people start analyzing, they'll realize I think it's a team event and every single half a point matters. Like it can change the entire tournament. Yeah. So Sam Shankar ka wo miss karna, wo win against Armenia when he touched the king, that would have literally changed the fortune for the US team, right? They also lost to India after that, and Armenia kind of went on and won a few games. So every single point matters. Yes. यूएस टीम के बारे में बात करें तो आई थिंक ना यूएस टीम ना थोड़े और नीचे होते ना तो उनका अच्छा मोटिवेशन नहीं होता. हाँ. वो भी सोच रहे कि भाई हम जीत जाते हैं एंड दे विल प्रे कि अरे 1-2 रिजल्ट यहाँ वहाँ हो जाए तो उनको भी मेडल का चांस है. तो उनको भी, लेकिन बाकी बोर्ड से वही चाहिए जो हमें चाहिए. सो उनकी प्रार्थनाएं भी हमारे साथ है. सिर्फ इंडिया बी को नहीं चाहेंगे वो जीतना, बट बाकी दोनों को. इसमें दिक्कत है कि बेचारे इंडिया ए वाले ना पिट जाए. मतलब ये चीज तो है. दे हैड आई थिंक स्टिल बेटर देन फेसिंग इंडिया 2 आई फील, बिकॉज़ उसमें क्या है कि आई जस्ट फील कि मतलब आर्मेनिया और जो वो टीम्स है ना उनका काफी आसान पेयरिंग लगता है, दे वुड इजीली विन. नाउ दैट इंडिया इज टेकिंग, आई फील समहाउ वो पेयरिंग बहुत ऑकवर्ड रहती बाकी लोगों की. So let's see क्या होता है. I think we have to know. I think I like this pairing. मतलब basic कुछ भी change होगा इसमें ना तो it will only go better for Uzbekistan and Armenia somehow. ऐसा मुझे feeling आ रहा है. So I think I like क्योंकि they've already played US, they've already played India 1 and 2. So I think उनसे मैच होता नहीं
और किसी भी और टीम से लगेगा, it will be an easier pairing than Netherlands and Spain. Yep. And वो भी है ना कि मतलब आज इतना बड़ा क्लोजिंग सेरेमनी और ये ना, ये आप एक बार जीत जाओ ना, ये जिंदगी भर याद रहेगा ऐसा। हाँ, या चैट को बताना चाहूंगा कि दोस्तों, इंडिया ओपन टीम एक ही बार मेडल जीती है ओवर द बोर्ड ओलंपियाड में 2014 में। वुमेन्स टीम हैज नेवर वन मेडल एंड लिटरली गोइंग इनटू द फाइनल राउंड उनका मेडल तो पक्का है, अभी वो सिर्फ रंग डिसाइड कर रहा है आज के गेम। हाँ, रंग डिसाइड करना है। वो बहुत सही है। एंड जस्ट इमेजिन है कि हम गोल्ड जीत जाए, मतलब और हरे का या इंडियन वुमेन्स टीम में जैसे चक दे मूवी आई थी, क्या पता एक ये टूर्नामेंट से मूवी भी आ सकती है। और यही तो चेस को ना ऐसी चीजों की बहुत जरूरत है, कैटलिस्ट, कि ऑलरेडी पॉपुलर हो रहा है गेम, बट अगर बॉलीवुड इन्वॉल्व हो जाए या कैसे स्टेट नेशनल गवर्नमेंट इस बार इन्वॉल्व हुई है, उससे चेस आगे चला जाएगा। एग्जैक्टली, एंड ऐसा इवेंट कब होगा? आई थिंक इंडिया में होंगे अब बहुत ग्लोबल इवेंट्स, आई थिंक, आई एम श्योर, बट ओलंपियाड का अलग ही टेस्ट है, बिकॉज यू हैव एवरी सिंगल टीम फ्रॉम द वर्ल्ड एंड इट्स लाइक अ टीम इवेंट, तो देश का नाम आता है, लाइक मतलब दैट्स द बेस्ट पार्ट। यप पीस भाई, आई थिंक वी कैन गो टू टीम बी इंडिया वंस, एक बार देखते हैं कि वहां क्या चल रहा है सब बोर्ड्स पे, है ना? मुझे प्रग का गेम बड़ा सही लग रहा है, मतलब इंटरेस्टिंग लग रहा है इसमें, बट आप आ गए प्रग के गेम पे? हाई को चलते हैं। प्रग का अपोनेंट भी काफी, इनफैक्ट मैं ये भी बोलना चाहूंगा, रौनक का जो अपोनेंट है ना निशित, तो वो ना पूरे वर्ल्ड में ऐसे टॉप 5 टॉप 10 प्लेयर्स में आता है अटैकिंग चेस में। तो रौनक ने बहुत सही किया कि भाई मैं ही अटैक कर देता हूं, तेरे को तो चांस ही नहीं मिलेगा। बट वो टैक्टिकली काफी स्ट्रांग है एंड वो ना ही इज वन ऑफ द सीनियर प्लेयर्स निशित, मतलब काफी ज्यादा। बट जो प्रग का अपोनेंट है वो है आई थिंक 25 साल के आसपास एंड जर्मनी का ऐसे बहुत काफी टैलेंटेड प्लेयर है। विंसेंट केमर जो टॉप बोर्ड पे गुकेश के साथ, वो तो उनका प्रग है, मतलब वहाँ उनका निकाल है, ही इज वेरी गुड एंड वो भी जूनियर लाइक अंडर 20 प्लेयर है। बट रास्मस वाने वर्सेस जो प्रग पेयरिंग है, आई थिंक इसमें स्पेशली लुकिंग एट रौनक पोजीशन, आई होप कि प्रग संभाल ले। फिर किसी ने जो E4 चाल आई है अभी, उससे लग रहा है कि प्रग ना थोड़े मुश्किल में हो सकता है, मुझे लग रहा है। I do like the fact though the bishop on c1 is as of now closed by its own pawn, but yeah, थोड़ा सा uncomfortable तो है clearly white के, yeah, bishop on g2 is strong and थोड़ा सा weaknesses बहुत है, I think e6 pawn ही weakness है, dark squares weak है, there is some stress for sure. True, but ऐसे अच्छा है कि मतलब प्रग इज बेटर डेवलप्ड, ब्लैक है प्रग, तो भी उसके ना डेवलपमेंट सारी हो चुकी है एंड व्हाइट के वजह से सारे पीसेस, मतलब जैसे आप बोल रहे हो बिशप c1 पे, तो वो घर में अभी तक घर से निकले नहीं, वो भी एक अच्छी बात है प्रग को लिए। I think Prag is surprised by this move a little bit, ऐसा मुझे फीलिंग आ रहा है हल्का सा, maybe he was not expecting it as such. Maybe he was like it should not be so serious, and now he underestimated a little bit and he's calculating now. I think Prag calculation is pretty strong. We saw it once he played that, पूरा variation कल रुकी 1 bishop g4, कहाँ से देख के बैठे थे वो, g3 f4, मतलब we know how strong his calculation, and he takes on c3 plays the best move, bishop takes c3. Nice. Oh, bishop c3 is the best move. Bishop played. Yes, played. And now, of course, intermediate move, ticking on d5, I guess. Nice. I missed that. We capture on d5. And then you probably just... I'm not sure which is the best move here, though. Is it knight d5 or... Knight d5. Yeah. Knight d5... Knight d5 मारोगे तो ना e6 का pawn ना, मतलब जिंदगी भर weak रहेगा। And also... after bc3, this bishop b2 c4 is also something to keep in mind. पर अगर knight से मारेंगे तो knight से ही मारेंगे तो आप बोल रहे pawn से मारेंगे तो is a move like bishop moving somewhere like to d4 possible? Actually he took with the knight, but I was thinking if you can just move the bishop somewhere. But okay, he played knight d5. Another best move in the position. I'm just worried about this, ये जो bc3 आएगा, then bishop b2 and c4. I'm just worried about this plan because bishop को खुलने के chances मिल सकते हैं,
but भाई यहाँ तो अब इसको इससे कैप्चर करना पड़ेगा ना, बी हाँ of कैप्चर। course हाँ तो इसके बाद में डबल पॉन आ गया, सारे पॉन ही स्ट्रक्चर बर्बाद देगा इसका। and you know Any after end game is BC3 better for black. after BC3 I think White's plan, you know, ये of course Indian भाई साहब की मदद है, so if you play at some point he also wants to sack a move with f5, like simply sack a pawn, like in many variation is showing the move f5 even, so that's a bit crazy to me, like matlab the idea being knight on d5 is hanging, you want to take with the e pawn and suddenly your king side is opening up. Yes, and अब जो बोल रहे थे कि बिशप घर में है, वो भी सीधा h6 पे आ जाएगा एक तीन चाल में। हाँ exactly, so f5 का वो भी आइडिया हो सकता है। Yeah, so I think this is not so comfortable, I would say. This is very, very, I think white will surely get an attack, I think at some point. And e6 weakness hai, king side weak hai, 2 bishops against 2 knights, usually not the best configuration of pieces, but okay, I think Prak can hold this. I think Prak can hold this. Hopefully. And, you know, वही है कि रौनक वहाँ पे बेटर है और यहाँ पे आई होप कि मतलब प्रग बचा ले, मतलब हाँ टेक्निकली हमको बाकी 3 गेम ड्रॉ हो गए तो भी दिक्कत नहीं है हमें, हमको बस एक बोर्ड पे जीत। ट्रू ऑनेस्टली मतलब मेरा तो ख्याल था कि जर्मनी लगा बहुत सही है इंडिया के लिए, तो मतलब मेडल चांसेस तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए, लाइक एक्चुअली इंडिया बेचारे इंडिया एक ही स्ट्रॉन्ग इंडिया एक थोड़ा सा वो हो गया बट जर्मनी के साथ तो वी आर एक्सपेक्टेड टू विन। True, but the thing is if they also remove India USA, right, if they win तो US को भी निकाल रहे हैं वो prizes से, so that's also one, you directly have it in your hands. तो आई थिंक इंडिया बी का एक राउंड अप कर लेता है, मतलब बाकी के 2 गेम भी देख लेते हैं। तो चलो लेट्स से प्रग ड्रॉ कर लेगा या होल्ड कर लेगा, रौनक भाई जीत जाएंगे, तो आ जाते हैं अभी गुकेश का गेम में। गुकेश का गेम is a dead draw. I think I just don't. There is no way anybody can win this, right? ये तो बहुत मतलब हल्का चांस थोड़ा बहुत है वाइट के पास, बट आई डोंट थिंक ये टॉप लेवल, ये तो हमारे लेवल पे हाँ इनके लेवल पे बहुत मुश्किल है, एंड प्लस गुकेश इन द फॉर्म दैट ही इज, मुझे नहीं लगता कि वो वही हो सकता है, क्वीन साइड पॉन पुश करना स्टार्ट कर दे एंड सडनली यू नेवर नो, बट आई थिंक केमर जी बहुत काफी खतरनाक खिलाड़ी हैं एंड दिस शुड बी अ इजी ड्रॉ, या सो एक्सपेक्टिंग अ ड्रॉ ऑन दिस बोर्ड, better for Ronak, worse for Parag. Can we go to Nihal's game now? That becomes very important. Nihal is wide, but Nihal is pleasantly better. I like his position, yeah. Isolated pawn. And the thing is, इन्होंने मैं था कि ये इन्होंने black ने CD4 मारा था opening में, which was a clear, I think, mistake. And now this knight on D4 is forever there, like just forever. Correct. And ये ना साहिल भाई टीम टूर्नामेंट्स के लिए ये बेस्ट पोजीशन है। हाँ बेस्ट है, आपकी वाइट है, आप पुश कर रहे हो, मतलब सामने वाले की थोड़ी फटी पड़ी है, you are playing for 2 results basically, that is the whole point of the thing is you can just sit around for a while and nothing would happen, ताकि आप बाकी गेम देखो, गलती को हारने लग गया you can start pushing. एंड अगर जैसे रौनक अगर जीत गया तो आप फटफट ड्रॉ कर लो, फिर ऐसे आप एग्जैक्टली हाँ ओपोनेंट का कोई उम्मीद ही नहीं है भाई। एग्जैक्टली, तो लकीली फॉर इंडिया मतलब निहाल के हाथ में पूरा कंट्रोल है ये पोजीशन। हाँ सो आपको ये जो D5 का पॉन है, आपको मतलब मजा आता है आइसोलेटेड पॉन के साथ खेलना, या आपको आई वुड से अगेंस्ट मजा आता है as long as उस पॉन की ऑपोजिट कलर बिशप इज ट्रेडेड ऑफ। एक बार मेरा किंग थोड़ा सा सेफ लगे मुझे, then I love playing against it. जब तक वो बिशप D6 पे बैठा है ना, थोड़ा डर लगता है। अटैक आता है। हाँ बट इसमें तो मतलब नहीं है। हाँ इसमें नहीं है बस। एंड बेस्ट पार्ट इज जो चैट को बताना चाहूंगा कि अगर एक नाइट आ गया आइसोलेटेड पॉन के सामने, आइसोलेटेड पॉन तो वैसे होता है जो कोई पॉन उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, तो नाइट आ गया ना D4 पे, मतलब ब्लॉकिंग द पॉन, दैट्स द बेस्ट पीस बिकॉज़ इट कैन नॉट बी किक्ड। आप क्वीन रख लो, रुक रख लो, तो ना कोई पीस अटैक कर सकता है उसको। नाइट को तो पॉन के अलावा ऐसे नाइट के नीचे तो बेचारा कोई नहीं है ना वो ऑर्डर में। एंड जो ब्लैक का बिशप पे D7 पे, वो हमेशा अपने प्यादे को ही देखता रहेगा, देयर इज नो वे फॉर टू बी एक्टिवेटेड, या बहुत अनलाइकली। एंड एक्चुअली वो जो F5 का आइडिया था प्रग के गेम में, तो वैसे ये है कि भाई ब्लैक को एक्चुअली नहीं चाहिए D5 का पॉन, कि भाई तो पॉन ले ले, बट मुझे वो बिशप बहुत स्ट्रांग हो जाएगा,
जो A1 डायगोनल पे है, अगर बेशक वहां पे आ गया तो बहुत, स्पेशली व्हेन निहाल ने G3 खेला हुआ है तो वो, बट निहाल तो करने But I think now just rook E1, right? And white is just absolutely fine. Just rook E1, doubling up rooks, and बिल्कुल yeah, I just feel कि maybe his plan is to at some point go knight E5. I think that has to be the plan. Otherwise, I don't see what's the point of knight G4. So, and he maybe wants to play knight F3 check and trade off knights. I think that might be the plan, right? ये knight exchange हो जाए तो then I can slowly start pushing D4 on a good day. यो आई एम बैक. क्या है भाई पोजीशन में, क्या हो गया? यो क्या किया आपने राउंड अप? हम निहाल को हम शेयर कर रहे थे, हम निहाल के पोजीशन बता रहे थे चैट पे, एंड वी फील कि भाई निहाल बॉस पोजीशन में, मतलब वो रुक रहा है कि मैं टीम को जरूरत पड़े तो पुश करूं या टीम को ड्रॉ चाहिए तो मैं ड्रॉ कर लूं. ऐसे निहाल के हाथ में बहुत पावर है फिलहाल. राकेश भाई आज एमएस धोनी की कोई वीडियो दिखेगी क्या हमें? अरे भाई कोशिश तो पूरी रहेगी, बट वापस ना क्लोजिंग सेरेमनी और ओपनिंग सेरेमनी भी जो हुई थी वो चेन्नई में होती है, तो बस अभी होपफुली इंडिया जीत जाए तो 2 बजे के आसपास, 3 तो बज जाएंगे आई थिंक, 5 घंटे तो चलते हैं गेम, एंड फिर हम बस निकल जाएंगे यहाँ से. तो होपफुली इतने नॉर्मली जो होता है इतना सामने से नहीं मिलेगा, बट दूर का ही वीडियो, हाँ दूर से कुछ मिल जाए. बट बड़ा सही जो इनविटेशन है क्लोजिंग सेरेमनी लिखा कि एमएस, मतलब स्टालिन सर का नाम है जो चीफ मिनिस्टर है तमिलनाडु के, जिन्होंने पूरा इवेंट स्पॉन्सर किया होगा. फिर उसके बाद एमएस धोनी का नाम है, फिर कैप्टन ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स, ऐसा वाला भी, मतलब बहुत सही लगा मुझे. और यहाँ पे भाई या ऐसे सर का जो है वो उसको थिरू बोलते हैं, उसको तो थिरू एमएस लिखा है. नाइस. निहाल क्या मस्त ऐसे स्ट्रेच करके बैठा है, लाइक अरे भाई अरे भाई हम तो जीती का वहाँ. मस्त चीज में स्टिल कर रहा है यार. नाइस. ये बहुत एपिक हो जाएगा कि हमारी जूनियर टीम, बेसिकली बी टीम, अधिबार को छोड़ के वो अगर मेडल ले ले और अच्छा वाला मेडल ले ले तो बहुत सही है. या इंडिया का फ्यूचर सही है बिकॉज 2700 रेटिंग पे इफ यू नॉट गारंटीड ऑफ ओलंपियाड स्पॉट इन द नेक्स्ट टीम, आई थिंक दैट रिमाइंड्स मी ऑफ रशिया या इन मेनी वेज, क्योंकि वहां पे भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको स्पॉट नहीं मिलता था. सो आई थिंक इंडिया इज काइंड ऑफ in around 5 years time I think they're the leader in chess I think. Rakesh, here is a question for you, that if India wins medals in any category, open or women's, do we get to field extra team in the next Olympiad? No, it doesn't really matter. I think अगर आप दोनों जगह पे गोल्ड भी जीत जाओ तो उससे अगला ओलंपियाड में कुछ फर्क नहीं पड़ता. अच्छा, ओके. या only host nation can field ऐसा एक्स्ट्रा टीम. सो जो 2024 का ओलंपियाड होगा वो होगा बुडापेस्ट हंगरी में, एंड जैसे हमने थोड़ी देर पहले शेयर किया कि 2026 का ओलंपियाड होगा उज्बेकिस्तान में. बट एक चीज है, साहिल भाई शायद आपको आइडिया नहीं होगा, मुझे भी फर्स्ट टाइम समझा ये वाले इवेंट में कि आपकी जो चलो मैं चैट को भी चांस देता हूँ और आप भी गेस करो कि ओलंपियाड का स्टैंडिंग जो है, मतलब आप 5th आए, 10th आए, 15th आए, उससे क्या मिलेगा आपको, मतलब आप कुछ गेस कर सकते हैं अगले ओलंपियाड के लिए? I assume FIDE कुछ टीम्स को ऐसे वो एक्सपेंसेस बेयर करती होगी आई गेस, बाकी तो बताना मुश्किल है. मैं चैट को भी चांस देना चाहूंगा कि चैट आप बोल दो कि क्या लगता है आपको, क्या मिलेगा ऐसा इफ यू फिनिश. नो इट डजंट मैटर, मतलब आप 100th भी आए तो एक चीज मिलती है आपको, आप 50th आए तो एक चीज मिलती है, आप 25th टॉप 25 में तो एक चीज मिलती है. ऐसे चैट चलाते क्या मिलेगी भाई? एक बंदा कह रहा है पैसे. नहीं यार भाई ये ओलंपिक्स जैसा है कि यहाँ पे भी अगर इंडिया फर्स्ट आएगी तो टूर्नामेंट से पैसे नहीं मिलेंगे. आप भले बाद में गवर्नमेंट कुछ गिफ्ट या प्राइज अनाउंस कर दे तो वो अलग है, बट यहाँ पे देयर इज 0 कैश प्राइजेस. एक बंदा कह रहा है ऑडी C6 में राइड. अरे भाई ये तो मतलब मैग्नस से थोड़ी ज्यादा. बट हाँ, तो आंसर बताना चाहूंगा कि
वो है आपको नेक्स्ट ओलंपियाड में आपको वो लेवल का होटल मिलता है। ओह वाओ। या सो यू स्टे एट अ बेटर होटल, यू गेट बेटर थोड़ा फिर ना। यहाँ पे भी 2000 प्लेयर्स आए हुए हैं एंड 20-25 होटल्स है। So depending on your last Olympiad का finish, you get a better hotel. And of course, Magnus Carlsen वगैरह तो वो तो है ही बड़े player, but ऐसे they can actually choose the hotels. हाँ ओके ठीक है, जो ऊपर स्टार्ट करते हैं ना they can choose. Yeah, makes sense. Correct. तो इसमें अमेरिका के जो कैप्टन है, 20 भाई अभी अगर आ गया मैं वापस भाई, सॉरी। हाँ, तो अमेरिका के जो कैप्टन है, इंटरनेशनल मास्टर है जॉन डोनाल्डसन करके। तो 1978 से वो कैप्टन है। तो मतलब अब जितने साल के है ना, वो बंदे ने उतने ओलंपियाड में कैप्टनसी करी है यूएस टीम के लिए। तो बहुत सही लगा मुझे ये सुन के। एंड ही इज वेरी पर्टिकुलर। तो वो ऐसे ओलंपियाड्स में यहाँ पे भी उन्होंने रैडिसन को इसलिए चूज किया क्योंकि अच्छे फैसिलिटीज प्लस आने जाने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं ऐसे। तो वो सब वो पूरा एनालाइज करता है। एक बार मुझे माइक लाइन बता रहे थे कि इस्तांबुल ओलंपियाड में 2012 की जो ओलंपियाड थी, तो वो इतने पर्टिकुलर वो देख रहे थे कि भाई एयरपोर्ट का होटल एयरपोर्ट के बाजू में था ओलंपियाड। तो देख रहे थे कि फ्लाइट्स जो लैंड और मतलब टेक ऑफ होती है वो किस टाइमिंग पे होंगे, तो वहां वैसे वो सब देख के वो होटल चूज करे। तो ये जैसे अपना हो जाए फ्लाइट के चलने से कॉन्सेंट्रेट अपना हो ऐसे। तो काफी छोटी छोटी चीज है, बट ये सब भी देखते हैं लोग, मतलब टॉप टीम चैट करिए कि ये रेटिंग शेमिंग है, बट नहीं यार। द थिंग इज किसी भी सिटी में जहां ओलंपियाड हो रहा है, यू कैन नॉट हैव लाइक 50 होटल्स ऑफ द सेम कैटेगरी यार। इट्स लिटरली इम्पॉसिबल। आई थिंक उसके बाद एंड यू नीड सम ऑर्डर, राइट? कोई तो ऑर्डर चाहिए ना, तो क्या नीचे से स्टार्ट करे? लाइक यू हैव टू चूज वन ऑर्डर, राइट? यू जस्ट कांट हैव नीचे से नहीं बोलना कल हुआ ना भाई तुम ऐसा करो, तुम झोपड़ी में रहो एंड देन भाई दैट इज आल्सो डिफिकल्ट टू से। आई थिंक डिफिकल्ट टू से मतलब वो तो बोल ही नहीं सकते ना। वही वो आएगा ही नहीं भाई। बिकॉज अगर टॉप पे रहेंगे तभी इवेंट की वो कैलिबर बढ़ेगा ना। इमेजिन करो अब यूएस अपनी सेकंड टीम भेजा था कोई 2600 वाली, तुम कहते हो उसकी वैल्यू नहीं है इवेंट की, ये नहीं है वो नहीं है, सो यू नीड टू स्टॉप दिस। ओहो वन फोटो लाइक नो फोटोस। अरे प्लीज नो फोटोस प्लीज। बट Team India's B chances? What do you think? They are going to fight to the end. Ronak is already better, right? Yeah, Ronak was better. Vamos! You know that. Yeah. He always sounds Yeah. बढ़िया हमारे बीस एक्चुअली जो हमारे 20 है 20 स्टार्स पे से नाम चुरा रहा शायद। ये क्या है भाई? मैं तो तब से जो आदिवान था अभी नहीं भाई। मैं तो वो इन्होंने यहाँ से उन्होंने मिस्टर बीस से चुराया है। एक्चुअली वो किसी कोई और है। मिस्टर बीस भी नहीं पैदा हुआ था भाई तब से हूँ मैं। नहीं। ये क्या भाई? सही में मिस्टर बीस भी बहुत सही है, मतलब उसके तो 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए। हाँ क्रेजी है। That's I think yeah 100 मिलियन 100 के तो करना, तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना है। हाँ भाई, हर किसी चेस स्ट्रीमर का सपना है 100 के करना भाई। दबा दो भाई सब्सक्राइब बटन जल्दी से। वो जो फ्लैग है ना, YouTube का फ्लैग मिलता है बस उसके लिए। हाँ ट्रू। I hope मतलब 20 स्टार्स तो थोड़े आगे है, बट साहिल भाई आप भी जल्दी से कैच अप कर लेना। हाँ भाई बिल्कुल। सब्सक्राइबर्स के इसमें। बट दोस्तों साहिल भाई का भी चैनल आप जरूर चेक कीजिए। ऑफ कोर्स 20 स्टार्स ऑलरेडी क्या 60 पे हो या 59.9? भाई मैं तो स्विच करते रहता भाई। रात में 60 पे था, अभी सुबह 59.9 है भाई। अरे फिर हो गया क्या? मैं रात को देखा 60 हो गया, मैंने कहा फाइनली हो गया फिर से भाई। वो होते रहता है भाई। इट इज जस्ट अबाउट वन वीडियो। मैंने वीडियो बहुत टाइम से बनाया नहीं है, डाला नहीं है कुछ भी इंटरेस्टिंग, सो आई विल मेक वन एंड आप ओलंपियाड अवार्ड्स कर दो, 20 अवार्ड्स। हां नाइस आइडिया। बट मैं तो 20 तो पूछना था ये भाई, ये कौन बंदा है जो रात को अलार्म लगा के अनसब्सक्राइब करके सोता है रोज? क्यों होता है ये? होता है पता है, रात को यू विल स्ट्रीम, सब्सक्राइबर मोड ऑन है, people subscribe because they want to chat, and जो पहली बार स्ट्रीम पे आए होते हैं सुबह उठते कहते हैं अबे रात को मैंने क्या गलत डिसीजन ले लिया लाइफ में। and then they unsubscribe। मेरे साथ भी होता है भाई, हर किसी से होता है। and then you lose like 10 subscribers अगर शाम को 50 आया तो।
but it's a good problem to have. But no worries भाई, पर उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट अभी गेम चल रहा है भाई. Let's watch the games guys. मैं तो गुकेश का देख रहा था, पर आप लोगों ने बोला था ये शायद डेड ड्रॉ है, मैं सुन रहा था तब. साहिल भाई ने तो अनाउंस कर देंगे ये गेम में कुछ होने नहीं वाला, मतलब ये तो खत्म है. नहीं, I think in fact I would say कोई जीतेगा तो गुकेश ही जीतेगा. I think ये F3 E4 pawns ये कहीं एडवांस होने के चांसेस बहुत कम है. Most likely white can just exchange queens and then it's a dead draw. I think white को draw चाहिए तो he can trade queens. तो and जैसे आपने देखा कि 2 मिनट पहले अदीबान यहाँ पे मिले थे मुझे, तो मैंने उनसे भी पूछा कि क्या लगता है आपको रौनक कैसे पोजीशन, तो वो तो बहुत खुश है पोजीशन से. And he being like a key member of the team, प्लस उन्होंने सब देखा हुआ है तो बहुत सही है. मतलब he also feels like Adiban is winning. गाइस यहाँ पे आगे आप देख सकते हो कि वीडी के मॉम डैड आ रहे हैं. तो आप देख सकते वेदिका भी है पीछे, जिनके चॉकलेट्स खरीद सकते इंडिया के शॉप पे. बहुत सही है. मतलब आप देख भाई चैट प्रेशर फील कर रहा है, मतलब कि पेरेंट्स आ रहे हैं, सब लोग अभी वो हाइट में 10x हो गया आज के राउंड में. तो और वो ना भाई, और एक बहुत सही चीज होती है, मतलब जो ओलंपियाड जीतता है विनिंग टीम का. अरे भाई एक सेकंड, नेशनल एंथम प्ले होता है, बट एक सेकंड, हरी भाई भी है हमारे सामने. ओह नाइस. हरी कृष्णा के फैंस, हरी भाई ने अपना गेम ड्रॉ कर लिया ऑलरेडी. I think players के लिए अच्छा experience है, like you know, to meet their fans. Like India में they can meet everybody, right? बाहर तो I think there'll be very few Indians there if they play abroad. I think so. ये एक बनना अच्छा experience है. हरी कृष्णा always been a gentleman. बहुत सही इंसान है. Gem of a person. True. भाई ये तो उड़ा देगा. ध्यान से भाई, not worth getting run over. 100 के हो जाएंगे पर राकेश भाई. मैं ही नहीं रहूंगा, फ्लैग किसके लिए भेजेगा. अंडरस्टैंडेबल भाई. ये भी बताना कि इंडियन टीम, सारे इंडियन टीम्स को स्पेशल इनोवाज है रखे हुए हैं. हरी भाई जाते हुए अपना काम कर लिया हरी भाई ने आज. hoping and praying like all of us कि हमको मेडल मिल जाए. इंडिया वर्सेस यूएस बहुत बड़ा मैच है, प्लस इन बोथ कैटेगरीज. इंडिया यूएस के साथ खेल रही है, ओपन में भी और वुमेन्स में. ट्रू. यस करेक्ट. लेट्स क्विकली गो टू प्रग का गेम. भाई प्रग का गेम में क्या हो रहा है भाई? थोड़ी मुझे तो टेंशन थी प्रग के गेम, और अभी भी है. रुक F5 खेला है एंड उसके बाद you know the engine चीख के मेरी मूव कह रहा है C4 with the idea of bishop B2 again. I think ये तो शायद आप मतलब आधा घंटा पहले आपने बोल दिया था ये plan, but then white played bishop E4 instead, which is not supposed to be a good move, and now rook F7 back. I think black basically gains something from this, right? Because rook F7 is much better placed than rook F8. करेक्ट. एक मूव मिल गया ना आपको अभी, और दूसरा रुक आप F8 पे ला सकते हो अभी. Exactly. Why not rook H5 भाई? Rook H5, wow, ये मैं सोचा नहीं. ऐसा ना, हाँ बोलो. हाँ, I was a bit scared कि यार rook H4 queen G2 में भी, and then G6 पे कुछ ना कुछ चक्कर हो सकता है. I have to be very careful now. Correct. And बीच में एक आपके लिए और हमारे चैट में जितने लोग जुड़े हैं सबके लिए एक चेस एडवाइस है. हाँ भाई. ऐसा नॉर्मली बोलते हैं कि रुक्स 3rd और 6th रैंक के बीच में अच्छे नहीं होते. ओके. रैंक 1, 2, 7 and 8 में बेस्ट है. ओके. गॉड. वो बेचारा वो हाथी है ना रुक, तो जैसे वो बीच में होता है ना वो सही नहीं होता, पीछे से बहुत बड़ा स्ट्रांग होता है वो, तो इसके लिए रुक F7 में ताकि वो डबल कर सके ऐसे. ओके. नेक्स्ट. सो प्रग स्टिल फाइटिंग ऑन. एक बार हम निहाल की गेम अगर नजर मार ले, कुछ हुआ है क्या? यस भाई, निहाल की नजर देख लेते हैं. निहाल की गेम देख लेते हैं. मैं नजर क्यों देखेंगे भाई? लेट्स गो भाई. इसमें क्या चल रहा है भाई, आप ही बताओ भाई. Yeah, so उन्होंने वही खेला. Nihal is so up on time. Yeah, I told you this is a depressing push of black because isolated pawn है, bishop is bad, there's no counterplay whatsoever, and उनके black के पास एक ही थ्रेड था knight F3 का, just to trade this knight,
उन्होंने immediately rook e3 खेल दिया, prevent कर दिया उसको. करेक्ट. वो नाइट ट्रेड नहीं करना चाहता क्योंकि जो नाइट है d4 पे बहुत स्ट्रॉन्ग नाइट है एंड उसकी वजह से ना वो ब्लैक की पोजीशन को उसने दबोच लिया है नाइट में d4 वाले. वाओ. तो आई थिंक एक तो रौनक तो है ही बेटर बट निहाल इन बीइंग इन दिस पोजीशन तो शायद हो सकता है कि जर्मनी अलग बोर्ड्स पे थोड़ा एक्स्ट्रा रिस्क लेके ट्राई कर सकता है. हाँ. बट इन टर्न वो होगा हेल्प इंडिया को ही. अगर वो ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, थोड़ा अटैकिंग खेल रहे हैं तो उससे हमको फायदा हो सकता है. वाओ. यहाँ पे तो आई एम नॉट वरीड. यहाँ भाई पे तो बहुत कंफर्टेबली हम लोग मतलब जीत सकते हैं. 3-1 या 3.5 भी हो सकता है. 100%. I think India B is guaranteed of a medal now. मुझे ये अभी के पोजीशंस देख के लग रहा है. ब्रॉन्ज तो है ही भाई, जीत के तो मिनिमम तो ब्रॉन्ज मिलेगा. राकेश भाई, फाबी ने भी यही कहा था, टचवुड भाई. आई थिंक 2-way रेस होगी. मुझे वो याद आ रहा है मोमेंट, तब से मैं थोड़ा कॉन्शियस हो गया हूँ फाबी के बाद. बट वो बेचारे फाबी ने तो मतलब कैंडिडेट में बोला था कि कैंडिडेट में भी जो फर्स्ट हाफ में अच्छी लीड थी नेपो और फाबी के पास, तभी भी वो नजर लग गई और यहाँ पे भी आके बोला कि अरे हाँ यूएस आर द हेवी फेवरेट्स. भाई वो तो नहीं हुआ. हेवी तो कुछ नहीं है यहाँ पे. वो होता है ना मोटिवेशन गुरु, यू शुड बिलीव इन योरसेल्फ, यू शुड ऑलवेज ऐसे बोलना चाहिए. अच्छा, तब से मैं डाउट हो गया उनकी टीचिंग से भाई, फाबी की हालत देख के. नहीं बट ऐसे शायद आई थिंक यूएस टीम ने भी सोचा नहीं होगा कि उनकी इतनी पिटाई हो जाएगी. I think what was missing was teamwork because they are such strong players कि they are just focused on their own games and वो teamwork थोड़ा missing है कि यार मतलब we should वो strategy maybe building is not there as much as youngsters में कितनी bonding है, like साथ में grow up हुए हैं. That's really an important element. That's why you see Uzbekistan and India both do well. Yeah, India too. But एक अरोनियन से जब भी मैंने इंटरव्यू किया था यहाँ पे तो लेव भी बोल रहे थे कि ना वो चिल करता है टीम तो मतलब यूएस की टीम, बट वो फाबी और डोमिंगस के साथ चिल करते हैं ज्यादा. और रॉबर्ट हेस और फाबी का लाइक सेम एज और बहुत बचपन से बहुत अच्छे दोस्त है. बट ये लोग तीन चार लोग ना सेंट लुइस में भी रहते हैं. यहाँ पे सेंट लुइस चेस क्लब है, फेमस वर्ल्ड का सबसे चेस क्लब. तो ये लोग साथ में चिल करते हैं. बट सैम हो गए या फिर मतलब वो नहीं आते फिर इसमें. वेस्ली और सैम इतना ज्यादा चिल नहीं करते हैं. तो यू आर राइट. आई थिंक एट सम लेवल ना वो टीम होता ना कि आप खाना इंडिया टीम जो है वो ब्रेकफास्ट लंच डिनर भी साथ में कर रही है, सब कुछ साथ में हो रहा है. तो वो हल्का सा डिफरेंस तो कहीं ना कहीं हो रहा है यूएस टीम में. एंड आई थिंक यहाँ पे रौनक की गेम में उन्होंने c4 खेला है एंड मेरे ख्याल से जस्ट टेकिंग ऑन f5 इज आल्सो इंटरेस्टिंग because it opens up the diagonal towards black's king somehow. But pawn f5 वाला तो f5 close हो रही है. I think it's a very important decision which structure basically Ronak wants. I think मारना ही चाहिए f5 पे. Otherwise ये tension तो वैसे भी long term it might not be holdable. So I think he just take on f5 and then open up this diagonal. Yeah. Yes, I think even that and मेरा engine इतना strong नहीं थी. मैं अब देख सकते मैं phone से जुड़ा हूँ. But engine is screaming bishop e3. मतलब एक बार वो बचा लो फिर ना बिशप हट जाएगा ना वो फाइल से तो अब क्वीन f3 भी खेल सकते हो ताकि वो बिशप पे और प्रेशर आ जाए. तो ब्लैक ने तो उसका जो d3 नाइट तो सॉलिडिफाई कर लिया. बट ना वो जो बाकी पीसेस है जो घर में बैठे हैं क्वीन d8 रूक h8 तो ये इसके वजह से शायद रौनक पता नहीं क्या भाई दो घंटे में जीत जाए ऐसा. हाँ possible. He looks very comfortable. भाई आर्मेनिया का पोजीशन अच्छा नहीं है भाई. चैट बता रही है भाई, देख सकते हैं क्या आप? हाँ बिल्कुल. थैंक यू चैट. मतलब चैट ना बड़ी सही ऐसे गुड न्यूज़ देते रहो यार आज हमको. मतलब बताते रहो हमको क्या चल रहा है दूसरे गेम में. ओके सो ऐसा करो बीस भाई, आप आर्मेनिया के चारों बोर्ड की वैल्यूएशन बस चेक करो. मैं आपको उज़्बेकिस्तान का पीछे से बताता हूँ. ये टैग टीम करते हैं भाई. लेट्स गो. ये सही है. तो टीम एफर्ट मिलके बाकी लोग के नीचे गिराते हैं. हाँ. अब्दुल सतारो और अनीश में तो काफी ऐसे इक्वलिश ही पोजीशन है भाई. Okay, board one, Anish has one move and it's equal. बाकी सब में वो वर्स है. तो I think he'll find it. So he has to play d4. Board two में Jordan Forrest is clearly better against Yakubov. That's a great position for him. So and great news for us. हाँ, great for us. Exactly. We are rooting for Netherlands. Yes, we are rooting for Netherlands.
वैसे भी अनीश तो वैसा है ना, आधा इंडियन ही तो है। So board 3 पे Netherlands is worse. Benjamin Bok is worse. I think उनकी पोजीशन थोड़ी खराब लग रही है मुझे, because C file pressure है, F file pressure है, so both तरफ से I think white is better. And then board 4 पे I think Uzbekistan is now better. Yes, हाँ, मैक्स की पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है। मैक्स फार्डमैन जो अनीश को भी हेल्प करते हैं, मतलब सेकंड अनीश के, इतना अच्छी पोजीशन नहीं है क्योंकि नाइट C4 आ रहा है अभी मैक्स के गेम में, एंड उसके बाद आई थिंक ब्लैक कैन टेक ओवर दिस। एंड प्लस जो उसका अपोनेंट है जहांगीर वाकिडो, वो भी बोर्ड प्राइस के चक्कर में, मतलब लाइनिंग में फोर्थ बोर्ड पे, उसने बंदे ने बहुत सही परफॉर्मेंस दिया है ये टूर्नामेंट। Okay, so far not looking good for India. Let's go to the Armenia games. भाई 2-2 हो गया तो भी हमको चांस है ना। हाँ चांस है। 1 पॉइंट अहेड, तो इंडिया भी अगर जीत जाए एंड By the way, tiebreak 2 क्या है? Because tiebreak 2 I think is the other thing, right? I think it's not the team match points. No, match points is first. Game points. हाँ, game points is third. Game points is third, but उसके पहले है Sonnenberger, मतलब एक बहुत weird ये सिस्टम है, मतलब मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता, बट इसका ये मतलब है कि आप जिससे जीते हैं वो टीम कैसे परफॉर्म कर रही है, वो वाला सिस्टम है। हाँ। आपको साहिल भाई तो आपको पता होगा, बुफोन्स जो है वाला सिस्टम तो ऐसा है कि आप जिससे खेले उनके पॉइंट्स, ओके, बट सॉनेनबर्गर ऐसा नहीं, आप जिससे जीते हैं उससे कुछ तो मल्टीप्लाई करके कुछ तो इस अजीब नंबर आता है। अच्छा, so that can change drastically in one round. एनीथिंग। एंड 2018 की ओलंपियाड की बात है जहाँ पे चाइना एंड यूएस टीम सेम पॉइंट्स पे थे, सब कुछ सेम था, एंड आयरॉनिकली मतलब चाइना का एक अपोनेंट था कोई एंड अमेरिका का एक अपोनेंट था, और उन दोनों का लास्ट गेम था, तो वेराज यूएस और चाइना के गेम्स खत्म हो गए थे, तो सारे लोग वो बोर्ड पे पहुंच गए थे जो बोर्ड था 78 का, कहीं तो पीछे वाला, तो सारे लोग मतलब वो वाला गेम ने डिसाइड किया कि गोल्ड किसको मिल रहा है। थोड़ा अजीब सिस्टम है, मतलब आई होप FIDE कम्स अप विद समथिंग बेटर, बट मुझे बहुत अजीब लगा कि मतलब कोई पीछे वाला बोर्ड आपका पूरा फॉर्च्यून डिसाइड कर रहा है। या ट्रू। यहाँ पे भाई ये ट्रांसमिशन एरर है क्या? ये बोर्ड 2 ऑफ आर्मेनिया, उन्होंने मूवी नहीं खेला है, 3 मिनट बस सोचे उनके, 10 मूव हुए। लेट मी सी। Board 1 Armenia is clearly better, chat. Bishop pair center. Clearly better. So board 2 अगर हम जाएं जल्दी से, ये तो आई थिंक ट्रांसमिशन एरर होगा, आई थिंक क्लियरली, इतना कम टाइम तो हो नहीं सकता, तो बट आई थिंक जो पोजीशन थी स्टार्टिंग में दैट वाज बेटर फॉर व्हाइट, बट आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली, मे बी आई शुड आल्सो चेक। करेक्ट। एंड जो साहिल भाई आप थोड़ा देर पहले बोल रहे थे ना कि ये टीम स्पिरिट या टीम बॉन्डिंग का जो वो अर्मेनियंस में नंबर 1 है, मतलब वो ना एक दूसरे के लिए जान दे सकते, जान छिड़क सकते हैं, ऐसे टीम है, और वो इंडिविजुअली इतने कोई स्टार प्लेयर नहीं है, एंड यू विल नेवर सी कि अर्मेनियन ना ऐसे इसने कोई टूर्नामेंट जीत दिया, जूनियर प्लेयर भी ऐसे कोई इतना खास नहीं है, ये टीम टूर्नामेंट में ना इनका मोटिवेशन 10x हो जाता है ऐसे। तो एंड जब ये 3 बार गोल्ड जीत चुके हैं अर्मेनिया, बाय द वे, तो स्ट्रांग मेक सेंस। अर्मेनिया को अंडर एस्टिमेट मत करना, बट जब ये 2006 में जीते थे तो प्रेसिडेंट ने प्लेन भेजी थी, उसकी पर्सनल प्लेन, प्लेयर्स को पिक करने के लिए, और जब ये वो प्लेयर्स पहुंचे येरेवन जो कैपिटल अर्मेनिया, तो वो वाटर फाउंटेन से स्वागत हुआ था उनका, एंड एयरपोर्ट से आए, बहुत एक यूट्यूब पे वीडियो भी है, एयरपोर्ट फ्लाइट से उतरे, रेड कार्पेट बिछा के ऐसे पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस और पब्लिक जमा थी, एंड प्रेसिडेंट रिसीव कर रहा है ऐसे, और वो बहुत चेस लविंग प्रेसिडेंट था जो आरोनियन के शादी में भी आया हुआ था कुछ साल बाद। तो अर्मेनिया की टीम आप सोचते थे कि चेस ना जड़ में आ रही है, कि चैट दे माइट नॉट हैव 2700 प्लेयर्स, बट आप इनको मतलब वो होता है ना, एक्स्ट्रा मोटिवेशन आ जाती है इनको ऐसे टूर्नामेंट। True. I think it definitely matters. Yeah. If you're rewarded well, then you automatically next time के लिए you will work hard, yeah, because you know कि क्या rewards है मेरे लिए. Yep. फिलहाल chat, I think आर्मेनिया का मैच मैंने देखा, सेकंड बोर्ड पे क्लैरिटी नहीं है. They are, I think they are tied on 2 boards, worse on 1 board, and जो बोर्ड का ट्रांसमिशन नहीं है, जो एरर है उसमें they were better slightly when the game has stopped. So I think 2-2 के chances तो हैं अभी.
but we'll have to wait for it, chat. Yeah, and I think एक बार एक India versus US का एक राउंड अप कर लेते हैं, and फिर I think मैं यहाँ पे बाकी का काम भी कर लूंगा, and hopefully बात मेरी भाई जोड़ सकते हैं थोड़ी देर बाद. But India A versus America फिर आप खोल सकते हैं. So Harish is already drawn. That's one result. Then second we have Vidit, who won his, I think most important game yesterday, but he's playing Wesley So, and at first glance Wesley's pieces definitely look a bit more active. I think Abhi Bishop on C8 developed bhi nahi hai, and Rook D1 here. With it, that's right. Yeah. Some pressure, yeah. I feel मतलब Wesley भाई टूर्नामेंट कितना भी बुरा जा रहा हो, एंड में तो सुपरस्टार है, लाइक एलिट जी है, तो मतलब वो क्लास दिखा रहा है यहाँ पे. बट आई होप सिर्फ अभी दिखाए, मिडिल गेम में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर. And such a symmetrical है. So if the position simplifies, if the pieces become less active, then it will be a dead draw, yeah. So I'm still hoping VD can hold this. I don't think this is like a dangerous position for him at all. So maybe we can go to the next board and see वहाँ क्या चल रहा है. Arjun. I love Arjun's position. मतलब इतना free flowing है ना white के pieces. I really like it. This is nice because पूरा queen side उन्होंने hold कर लिया है. King side पे उन्होंने knight f3 stabilizes everything for now. And अब वो bishop f4 plan कर रहे हैं. So I think even I like his position clearly. और ऐसा ना मतलब वो white के आपको देखिए अच्छी फीलिंग आती है, बट d5 का pawn सही है, ऐसे easily flow हो रहा है. मतलब वो एक गुड साइन कि ऑफ कोर्स प्लेयर्स के पास तो इंजन नहीं है गेम में, बट जब भी आपके पास ना 3-4 मूव का ऑप्शन है तभी सही लगता है. ब्लैक को ना मतलब ब्लैक दबाव में है फिलहाल. I think I would love to see Arjun win this game. Yes. And I feel we can. Arjun can. Yes, we can. And Sam Shankly game में, I would say this is the kind of position जहाँ पे a stronger player usually grinds down his opponent. But I think if I can, I was C7 weakness एक problem तो है, but it's not easy for white to really break through because D4 is also weak. I can just book the rook on D8, and your knight or king एक piece तो वहाँ tie down रहेगा. So I would say SL can hold this. I think it's not like a dangerous position at all. Similar to what VD has actually. मतलब few good moves and it should be equal. I think ऐसी position लग रही है मुझे. And actually जो हम बोल रहे थे कि निहाल के गेम का, तो शैंकलैंड की वैसी पोजीशन है. हाँ, exactly. He can play for 2 results. शैंकलैंड देखेगा अगर यूएस टीम को जरूरत है तो पुश करेगा, या फिर चुपचाप ड्रॉ करके निकल जाएगा. ऐसे ही. True. Very similar. And ये G4 pawn. भाई मिस्टर आपको क्या लगा, मतलब आरोनियन खेलेगा या शैंकलैंड? मैं तो बहुत सरप्राइज लगा था आरोनियन ही खेलेगा, क्योंकि शैंकलैंड का ऑलरेडी हर बार वर्सी पोजीशन में रहता था वो. और तो मतलब ना भाई जो उसने वो गेम जो इलीगल मूव किए है भाई, वो तो मतलब उसमें बहुत एक तो ऑलरेडी मीम्स भी बन गए. द ब्लंडर ऑफ द सेंचुरी भाई. आई विल बी बैक इन 2 minutes भाई. ओके. बट साहिल भाई, लाइक आपको याद है कि ही आल्सो रिजाइंड एक बार अनीश के साथ टाटा स्टील में. तो ये थोड़ा इम्पल्सिव खेलता है मतलब शैंकलैंड. बट उसने तो चेक भी नहीं था भाई. देख लेना वो चेक दे रहा है, जो मूव चल रहा है लिख लो. लिखने में भी तो टाइम लगता है. assumptions like he assumed. करेक्ट. वो जो 5 seconds का आपको ब्रेन को मिलता है लाइक चिल करने का टाइम, if he would have written that, like पूरा टूर्नामेंट अलग होता. मतलब अर्मेनिया would not have come to the lead. क्या पता पूरी स्टोरी अलग होती है ओलंपियाड यूएस टीम के लिए भी. True. And I think surely they would be in a better position because India 2 के साथ भी confidence low नहीं होता and so on, so they would definitely be in a better position right now. But ठीक है, I think he has a chance to redeem himself today technically, but I hope he doesn't. Like जितना मैंने मतलब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जो वाइब्स वगैरह, एंड जितना मैंने यूएस टीम के साथ हल्का सा ही इंटरेक्ट करा है, बट दे आर बेसिकली गोइंग ऑल इन टुडे. बिकॉज़ अब जब टॉप सीड हो, आप हेवी फेवरेट्स हो, तो फर्क नहीं पड़ता आप 6th आए या 10th आए या 20th आए. बट सिंस दे आर 5th और 6th आई थिंक या 5th है, बट उनके पास एक सुनहरा मौका है कि इफ दे विन दे कैन स्नीक इन. मतलब होता ना थोड़ा लक वक हो जाए तो दे कैन स्नीक इन. राकेश भाई
एक अपडेट है which is not looking good for India. That is women's team में we have two equal positions, one completely lost and Women's one game that is Bhakti, and one worse position, that is Tanya. Tanya was much better, but as a typical Kings Indian goes, you know, she's somehow worse now because I think Black has a huge center now, and yeah, there might be some tension. And also, most importantly, Bhakti is in a much worse position. Oh yeah, I see. Oh, bhai, Bhakti is lost. Yeah, exactly. And Arey that means yaar. कि women's team का it's not looking good at all. And they like ऐसा ना कि अगर एक प्लेयर हार रहा है तो बैलेंस करने के लिए कोई बोर्ड पे विन चाहिए हमको. Exactly, and I don't see any board जहाँ पे we are winning actually, or even have any serious chances so far. I think अभी तो फिर वही है कि आपको एक्स्ट्रा रिस्क लेने पड़ेंगे क्योंकि वुमेन्स टीम भी I think ना 1 point lead, तो like they have to try. Because the thing is, Vaishali has a position जहाँ पे it's all depending on the d6 pawn, but somehow her bishop is really bad, right? वो queen side pawn सारे last squares पे अटके हुए हैं, and white should always have enough compensation. Like somehow एक d6 pawn अगर मिल जाए तब भी कुछ chances बन पाए. I think Vaishali or Humpy, one of them have to strike, at least one of them, huh? Assuming Tanya still holds, even she has a worse position. Yeah, even she has a, and Vaishali का तो ऐसा position है, मतलब she can try, of course, to, and she can push, but sadly ना end game है, तो इतने ज़्यादा chances नहीं मिल Exactly. And plus her opponent Irina Crush, आपको पता है, she's like a multiple time US champion. Chess.com के streaming भी करते हैं, commentary भी करते हैं. But yeah, she is like a grandmaster, like open grandmaster, and she's very experienced. मतलब I think मैंने Irina Crush का जब interview करा था, she told me and Rakesh bhai, you will not believe it. Yeah. Shirov has made an elementary blunder. I think this must be a transmission error. It's not possible. Is it? अरे भाई Shirov fire on board है यार, मतलब. How is it possible? No, it's not possible. It has to be a transmission error, right? How can you miss bishop g5? This is not possible. And maybe it's h6 to stop. Yeah, chat. I can't believe it. I have to be honest. It's not possible. It is impossible. He plays g6 here. It's just not possible. Yeah. ये मतलब वो stroke of genius भी हो सकता है, but इतना ज़्यादा नहीं. नहीं, ये तो this is impossible, chat. Oh no, it happened. He played bishop g5 and now is completely winning. What? How is it possible? ये क्या कर रहा है शिरो, मतलब इसको क्या नहीं चाहिए कि इंडिया जीते? नहीं, the thing is he's banking on bishop h6 after bishop d8. That's what he's banking on. But now white can simply play bishop e2, and if you try to save the rook, now h4 from white and the queen is trapped. Maybe he missed it. Yeah, he missed this. Oof, अरे यार. Yeah, but difficult हो यार, easy हो, लग तो इंडियन टीम की रियल है यार. भाई शिरोव ने ब्लंडर कर दिया. 20 भाई क्या हो गया ये? भाई कोई नहीं भाई, बाकी टीम में है, बाकी भी है भाई, 3 प्लेयर उनके. 20 भाई आप चले जाते ना तभी टीम की लग जाती है. अब तो जुड़े रहना है. अरे सॉरी भाई यार, मैं सुबह के टाइम में थोड़ा कुछ काम रहता है यार. अगर उठे ना मैं सारी रेस्टोरेंट बैन कर दूंगा बोकारो में अब. साहिल भाई थोड़ा लाइन बताइए जो भी आप बता रहे थे, क्या है? क्वीन h5. हाँ, so if bishop d8 then there's bishop h6 apparently. Okay. And now the queen is pinned, of course. So I think after f4 for example, now I take on d8 and black has a lot of counterplay because d4 f4 सब कुछ weak है. Lekin I think the problem is after bishop g5, queen h5. Yeah, just queen h5, just bishop e2. And now the queen is very misplaced on h5. And let's say you play a move like rook 2, I don't know where you play, rook d7 or rook e8, whatever. And now h4, and the queen is completely stuck. And f4 से queen trap भी हो रही है. Exactly, and the queen is still trapped, and you have no clear defense. I think it's lost. की भी क्वीन थी ना h1 पे 2 दिन पहले, तब तो वो भी थे बट उसको अटैक नहीं कर पा रहा था. आज तो Shirov, how can Shirov miss such ideas? No, that's unbelievable. Like a कोई normal positional player कर दे तो समझ में आता है. Shirov,
करेक्ट, जो टैक्टिक्स में नंबर, मतलब मैं बहुत बड़ा फैन हूं शेरोव का. हाँ, literally. Like मतलब he's like at one point he might have been world number 1 in tactics, like literally, even that is a possibility, yeah. And that's how strong he is. And now, yeah, this is. He was the world championship challenger, but बेचारे को मैच नहीं किया, मतलब क्रैम्पिंग उन्होंने पॉलिटिक्स कर दिए. But yeah, he was like at the top, मतलब world number 2 तो था ही एक पॉइंट पे. ओ भाई. But भाई, long story short, इंडिया के तो लग गए, मतलब अगर अर्मेनिया जीत रही है, it's basically again not in our hand, मतलब अगर अर्मेनिया टीम. Yeah. And women's team भी हार रही है वहां से 20 बाय. Yeah, मैं देखा तानिया is in a worse position and even Bhakti is completely lost. भक्ति का क्या हुआ अचानक से, मेरे को समझा नहीं. क्या पता है, उससे कुछ ब्लंडर करा है. लाइक उसकी जो अपोनेंट है टाटा है, वो भी बहुत स्ट्रांग प्लेयर है, ऐसे मतलब आई होप कुछ ब्लंडर करना. बट the thing is, प्रॉब्लम क्या है यार, यही दिन मिला था फॉर्म में आने को इनको. thing is, ब्लैक का जो सेंटर है ना, it's falling apart. For example, यहाँ पे E5 प्रेशर है. Let's say black castles, yeah, in Bhakti's game. And now even a move like knight A4, knight D1, whatever you want to play, now E5 is hanging. Let's say knight A4. Knight to A4. दूसरा knight भाई. हाँ, knight to A4. And now E5 is hanging. कैसे बचाओगे? If you play bishop F6, which looks logical, now comes knight to H5 also. Or even knight to C5. And ये धीरे-धीरे करके I'm going to chop at all these pawns. And once I take on F6, you can't even take with the queen or rook. आपको pawn से मारना है. And then H6 is the weakness now. And white का king देखो भाई कितना safe है, मतलब एक extra queen भी board पे रख दूँ ना black के लिए, तब भी आप attack नहीं कर सकते. इतना safe है white का king, literally. So I think it's not like she's losing on the spot, but yeah, this is just a bad position. I think I still have hope here. I still have hope that it's possible. पर एक मूव का बात होता है, एक गलत मूव and then it's over. हाँ, it is possible to come back. That's true. It's not like कुछ यहाँ पे pawn मर गया या 2 pawn मर गया. It's not like that. Yeah. वो ये कि बीच पे बहुत सही बोल रहे हैं कि मतलब है चांसेस है. बट डायरेक्ट जो रोग आ गया हम देख रहे थे, भाई वो क्वीन पीट गई, उसके बाद तो कुछ कर ही नहीं सकते. मतलब yeah, so you can't do anything ना, क्वीन तो out of the game. कैसे कि Sargisen played bishop E2. He played it. भाई ये यार क्या बंदा है यार ये सर्गिसियन, मतलब भाई पता नहीं क्या ही करे, क्या ही बोले. ऊपर सेकंड बॉल का ट्रांसमिशन है, वी डोंट इवन नो कि क्या चल रहा है वहां पे. मैं कोशिश कर रहा हूं अंदर घुस के देखने का कि क्या सीन. हाँ, because third or fourth board पे it's almost dead draw. There is no hope for any team. So I think first board पे अगर वो जीत गए तो second board becomes very important. And अर्मेनिया तो कोशिश करेगी भाई ड्रॉ, and you never know, अगर अनीश गिरी ने हरा दिया या नेदरलैंड्स ने उज्बेकिस्तान को हराया, अर्मेनिया will be world champions. ऐसा है. By the way, Anish is clearly worse. Anish is also worse. भाई आप हंस क्यों रहे हो यार? अरे डालोगे मुझे भाई, भगवान ये क्या चल रहा है भगवान, एक ही दिन में भाई ये रोने वाली हंसी है भाई. Anish is also worse. Yeah, Anish is not winning this, unfortunately. But why is he worse? क्या है? Because now White's king is safe. He has no pawns on the queen side to attack. I have play on the H file first of all, and also E5 pawn weak है. I have control over D5, knight C5, bishop C5 possible है. And I think the thing is, black would love to play F5 and start pushing, but then that opens up your king. That is not possible. So you have no play whatsoever as black. And white के पास पूरा play, knight C5, rook H1, rook E1, and it's just one way street. So Anish is not winning this. The best he can do is a draw on a good day. अब्दुल सत्तारोव क्या है भाई? अब्दुल सत्तारोव. अब अनीश को वो करना है जो अब्दुल सर ने कल वो किस साथ किया भाई, उल्टा. लेकिन Jordan is also completely better. That's a plus point. लेकिन then we go to board 3. वहां पे Benjamin Book worse है, लेकिन not like much worse. He is worse though clearly. Because यहाँ पे this is typical Kings Indian gone wrong like मेरे लिए, because ये C file open है, C6 square available है. But final board पे I think black is better. Black is better. Netherlands is worse. Clearly. Basically. Yeah. Bad news for us. They can even lose 3-1 easily. Netherlands. It's possible. भाई और ये हो गया ना, मतलब of course we want India to win, but फिर अपने हाथ में ही कुछ नहीं है. अगर उज्बेकिस्तान जीत गए, they are champions. Yes, exactly.
तो फिर तो आप मतलब सिल्वर या ब्रॉन्ज के लिए खेल रहे हैं ऐसा है. By the way, in terms of Indian teams, Gukesh is already repeating moves. They've reached an end game, so draw in a few moves. That's confirmed. Can we have the game? Yes. Yes. Let's have Gukesh's game. But Gukesh, if he draws, he is literally confirming his gold medal on board 1. And by board 1 पे gold medal लाना कितने 9 पॉइंट किए उसने 11 में सारे गेम. No, yes. Amazing, incredible tournament for Gukesh. And India number 2 भी टिके रहेंगे क्योंकि हरि कृष्णा का गेम ड्रॉ हो गया. हाँ, वहाँ पे निहाल की सेम पोजीशन है. I think his opponent has played G6 and he's still thinking. I think Bishop F1, Bishop G2 is a nice maneuver now. Not immediately because Knight C4 का threat है, but at some moment. So I think Nihal is still better. वही पोजीशन है जो हमने देखी थी. And Bonhag's game. Oh, he played your move Beast by Rook H5. He played Rook H5. Oh, nice. I think Beast by का ना ऐसे चेस बहुत ग्रो हो जाएगी स्पेन करते. Yeah, I think हम यहाँ बात कर रहे हैं इंडिया के ओलंपियाड टीम में निहाल खेले पराग. I think बीस भाई को भूल गए हम. क्या है भाई, मैं नहीं खेलूंगा भाई. और नेक्स्ट सीओबी का विनर भी 20 भाई बनेगा. हाँ, मुझे लग रहा है भाई सीओबी तो छोटी मोटी चीज हो गई यार. वो तो फॉर्मेलिटी है आई थिंक नाउ. But doesn't Rook H5 makes sense also कि क्वीन पे भी अटैक था, फिर उस फाइल पे मेरे को एक रुक चाहिए कि वहाँ हमेशा अटैकिंग चांसेस हो मेट करने का. नहीं, it does. It's a double-edged move because you attack your opponent's king a little bit, but you also leave your king a bit without protection. Like it's a double-edged move. I think it's more of strategy. If you put the king on F7, you safeten up your king a little bit. No, like थोड़ा सा second rank covered. So I think it's a strategy how you want. दूसरा रुक भी ला सकता हूँ ना, Rook F7. हाँ, you can. इधर ना मतलब मैं 20 भाई को ज्ञान दे रहा था. अरे लेकिन I think Queen D5 मूव अच्छी है परख के पास. If you can trade queens, I think that's in his favor, right? Yes, that तो आप ही लोग बताओगे भाई. हाँ, I think so because then yeah, I think that will give him equality at least. I think. And by chat में कह रहे हैं लोग कि रौनक has lost his advantage somehow. अरे ये क्या है भाई, क्या हुआ ये पिछले 15 मिनट में यार. But that's the beauty of chess. उन्होंने थोड़ा देर में तुरंत ही चेंज होता है सब कुछ. उन्होंने Queen F3 खेला instead of Bishop F5, and after Queen F6, Bishop takes D3 was a huge mistake. Oh no. He took the knight instead of the bishop. अरे the Indian hates it. मतलब वो ना बाहर ऐसे उतर गया पूरे. But you know, I think यहाँ पे C takes D3 मारना है black को. Which is not. I'm not sure he'll play it. क्या Bishop capture on D3? नहीं, C takes D3 मारना है. That's what the Indian prefers. नहीं, मैं तो Bishop सोच रहा था. Bishop से मारा. हाँ, if Bishop takes, then it's again better for Ronak. हाँ, Bishop ही लग रहा है. Bishop makes sense ना. पर उसने खेला Bishop D3 और अभी 94 रन. उसे मार दिया, अरे मार दिया. Yes. Why is Bishop capture so bad? I think now 94 is a good move. 94. Yeah. अरे 20 भाई हमको पता तो हम भी खेल रहे होते. हम तो इंडियन देख के बता. अच्छा. ये बात भी है भाई. तो मैं सोच रहा था कि ये मैं भी होता तो यही खेलता है Bishop capture on D3. Bishop takes more sense है, मतलब कि अच्छे स्क्वायर पे जा रहा है, रुक अटैक हो रहा है. कई लोग कह रहे हैं विवेक देसाई को बोलो मैच देखना बंद करे. सही नहीं लग रहा है भाई. Chances are there कि Vivek is watching this match and if we can just stop, then we have great chance of winning, guys. Tanya is now just lost, I think. Lost? Direct lost ही बोल दिया. Her position looks really bad. And her opponent played the best move, F4. And now... अगर आप गेम लगा दे तानिया का तो the issue is if you look at the position right now, the bishop will be traded off. And it will be good knight against bad, not really horrible bishop, but bad bishop. And हमारा जो rook A3 पे है, it's stuck to defending the B3 pawn. Imagine a 5-point piece stuck to defending a 1-point piece, and your knight C5 can never be challenged. Yeah. This is strategically lost. अभी वापस बोलूंगा, देखो rooks ना अजीब होता है third और sixth rank के बीच में. And that's true. And look at this. Open file. Where will Tanya's king go? हाँ, king तो कहीं castle because h4 pawn you can't castle on the king side. Yeah. Rook on a3 तो वैसे ही चल दिए. You can't castle on the queen side. And e4 is incoming soon. Chat, unfortunately, I think this is lost. This is just lost. I think
we saw Bhakti's game jahan pe it felt like it was lost, but black had some at least moves. This is just strategically lost, unfortunately. So both Tanya and Bhakti right now, I think objectively lost. This is going I think like I was also a little surprised यहाँ से कि India team ने हरिका जी को last दोनों game में rest कर दिया. Yeah, and especially today because today, even I feel so. Like एक दिन rest दिया, I think. Clutch game है ना ये तो. हाँ. Today I was thinking कि हरिका should have played तो. Like हम यहाँ पे है, but मैंने तो कुछ सुना भी नहीं कि ऐसा कुछ scene है. But Rakesh bhai, do you think Tanya has any chance here? I just don't think it's possible at all. Honestly, I feel and ना वो होता ना कि तानिया ना शायद देख रही है बाद में अरे भक्ति की भी गेम इतनी सही नहीं चल रही है and you get that pressure and बेचारे अम्पी जी के पास तो मतलब कुछ है भी नहीं मतलब कुछ पुश करने के लिए. So not looking very good for. I think Humpy has to win. There's nothing else to do. At least she still has a playable game, I would say. There's nothing else to do. I think, and Vaishali, if I go to her game, I think White just equalized in Vaishali's game. I just don't see her winning because H5 बहुत बढ़िया move है, उन्होंने fix कर ली weakness H6 पे. And chat I don't want to be negative, but ना problem क्या है? इंडिया के पास 1 पॉइंट की लीड है, which is very scary. मतलब 2 पॉइंट की लीड होगी ना, आपके पास थोड़ा बैकअप है. एंड 4 टीम्स है 16 पे एंड इंडिया वुमेन है 17 पे. तो वो ना वी आर जस्ट होपिंग कि वो उनका गेम्स 2-2 ड्रॉ हो जाए उनके जो आपस में गेम. भाई ये यहाँ पे G5 खेलने का तो पूरा पोजीशन ही बंद हो गया ना. तुम ये मारो भी दो उसके बाद कैप्चर उसके बाद तो कुछ है ही नहीं. किंग कहीं नहीं जा सकता है, बिशप कहीं नहीं निकलेगा. If US wins, they go to let me confirm this. They go to US के 15 है. Thankfully they have 15 points. They go to 17, so India would still be ahead. So I think Poland and Azerbaijan and Ukraine, Georgia, they have like 4 teams. If all those, and are they playing each other? Poland, Azerbaijan, yes. Poland, Ukraine is playing, and Azerbaijan, Georgia है क्या? That is such a lucky pairing for India, भाई. अगर इनका आपस में नहीं होता तो they could literally all rush forward, right? Yeah. That's very lucky pairing, yeah. ये भी मतलब है ना कि ये we are just hoping कि वहाँ पे 2-2 draw हो जाए. हाँ, so I think even if India lose, I think bronze is still confirmed. मेरे को ऐसा लग रहा है, feeling आ रही है. Because draw भी होगा तो इंडिया का टाइब्रेक almost best है, and जीतते भी है 2 टीम तो 2 टीम आगे जाएंगी, 2 टीम पीछे रहेंगी. But if we lose, तो ही दिक्कत है ना, मतलब unless कोई 15 पॉइंट पे टाइब्रेक वाला हाई हो, but I don't see anybody. US has the best tiebreak, so I think bronze confirmed है chat हारने पे भी, but I'm really hoping बाकी 2 टीम draw कर ले. That will really give us chances for gold. But honestly speaking, this is, I think players के दिमाग में ये अभी नहीं है, because वो उनके हाथ में नहीं है ना. Like they were so close to gold and भाई they led from first round, मतलब start to finish मैंने lead पूरी तरह से ये किया, lead किया. But yeah, I think I'll try to ask someone, but I'm really surprised कि हरिका जी नहीं खेल रहे हैं. नितिन भाई कह रहे हैं उज्बेकिस्तान is winning 3-1, it's over. भाई यार क्या न्यूज़ दे रहे हो यार? But so भाई आराम से भी चिल करते हैं भाई, देखते हैं ना क्या होता है. अभी गेम बहुत बाकी, बहुत we are just anticipating everything. कल के गुकेश के गेम का ऐसा लगता है कि भाई जब तक गेम खत्म नहीं होता ना कुछ भी हो सकता है. वाई गुकेश कितने सारे हमने एग्जांपल देख लिए भाई. प्रज्ञानंदा का हुआ, प्रज्ञानंदा ने जब वर्स्ट पोजीशन से वापस आके जीत गया. वीडी ने कल G6 फाइंड किया, मतलब ऐसा लग रहा है ड्रॉ हो जाएगा. True. वेर एक टाइम पे हम लोग कह रहे थे विशाली का एक गेम एकदम ही ड्रॉ, दिस इज डेड ड्रॉ, दिस इज थ्योरेटिकल ड्रॉ. उसने फिर विन निकाल दिया था रुक और एक हार भी गई थी वो. हाँ, और एक हार भी गई थी. तो ये सब होता है भाई. सो जस्ट वेट. बट ये मेरे को अभी लगता है ये जो वैशाली का गेम करंट है वो तो इट्स कम्प्लीटली ड्रॉ, बिकॉज व्हेन किंग कम्स कैप्चर एंड उसके बाद कोई कहाँ से खोलोगे तुम. बट द थिंग इज लेट्स से यहाँ पे मैं किंग E6 खेलूं, जैसे व्हाइट प्लेज अ मूव लाइक किंग E2, ठीक है. हाँ, I play king E6. Yes. And what would you play, Bisbai? I don't know actually. Let's say you can't do anything, no. आप नहीं कुछ है नहीं करने को. हाँ. जैसे bishop F2 या I don't know whatever, and I pick up that pawn. हाँ. So what would you play here, Bisbai? What would you play? For example, as white. रुक से मारा, रुक D6 मारा.
What मैं would तो you मार play? दूंगा. I don't think कुछ है यहाँ पे. हाँ, तो I don't think वो मारना है. क्यों मारना नहीं है? मारने के बाद कुछ नहीं वैशाली होता. might be winning, I think. How is she winning भाई? Because extra pawn है ना उसके पास. She will play a6 Extra and pawn b5. use तो करेगा तब तो अरे जहाँ करेंगे ना कहीं a6 निकलेगा ना b5. कुछ. a6 b5 plan है ना. The thing कोई is, नहीं निकल रहा what white is saying is, मैं नहीं मारूंगी. And let's say I will simply play a4. And if you take on d5, I will take with the e pawn. And now I have a passed pawn, and that's a dead draw. Even pawn pawn बराबर है रे. नहीं, एक कम है. That's a dead draw because I have a passed pawn. भाई even this is a dead draw भाई. How will you progress? मैं को नहीं समझ. आप ये कह रहे हो पुश करने हैं. हाँ, basically I'll play. मैं यहाँ बिशप रख दूंगा इस डायगोनल पर, रहूंगा यहाँ पे बैठ के भाई जिंदगी भर. नहीं, I think I can push that game. Rook d6, king d6. Let's say आप a4 खेलते हो. I'll play a6 now. मतलब, and then king d3 and then king c6, and at least I have something. Like I know it's a draw, but at least I can push b5 and claim that I'm playing the game. But the thing is, white will not even do that. She will simply keep the rook on d5. And अगर मारोगे तो pass pawn मिल रहा है. That's an immediate draw. In fact, only white can win that. King f5 I think अगर रुक को d5 पे, अगर आप रुक को d5 पे रखते हो, हाँ, तो I will play rook c6, or I will try to play bishop d6, then rook c8, then rook b8, then a6, then b5. If you keep the rooks. Okay, so let's say a4, rook c6. Definitely has some chances. But I also have rook d8, no then? No, that is why I'm closing it with bd6 first. No. Okay, so you mean like bishop f8, bishop e7 किया, bishop f6 ले लो. Correct. Bishop e7 करके, then rook c6. Okay, so rook c6. And then let's bd6. Say I just wait, yeah, keep moving the bishop. Like let's show it. For example, this, then this, and then this, and now rook c6. Giri, can chat hear you? Yes, they can hear me. Yes. Okay, great. नहीं तो ना वो weird लगेगा कि हम साहिल भाई बोल रहे हैं और chat को समझ नहीं रहा है. But चक्का पता है क्या है? You can never play b5. Because c5 is falling. I don't think you can play b5 here. That's the issue. So this is a draw then. No. Yeah, this is a draw. You can't play b5. This is a draw, ठीक है, but it's bad news for us. Yeah, it's really bad news. तो यही एक ही बोर्ड लग रहा है जहाँ पे इंडिया जीत सकती है. वो मैं नहीं दूंगा. But ठीक है, chat. I have to go now. Sorry. Okay. अरे thanks for joining. मजा आया यार. And साहिल भाई तो आपको आगे लेके जाए. And भाई कुछ तो मैजिक कर दो और. हाँ भाई, कुछ तो होना चाहिए आज. भाई कुछ. Let's hope so for the best, man. That's all we can do now, I think. Yep. है ना? Yeah. Chalo guys. Thank you. Thank you Rakesh for joining. Bye. Take care. Man. And please keep us updated. Bye. India OP spam. India OP भाई. Whatever the result, I think they played really well. ठीक है. But अभी वो मौका नहीं आया. Whatever the result भाई. अभी hope करने दो. Whatever the result का मौका नहीं आया अभी. ये नहीं सुनना मैंने भाई. ये क्या whatever the result. पहले hope करो भाई. पहले हम खेल रहे हैं. But hope for the best, guys. Hope for the best. Against all odds. Bye. Okay. Yeah. So I think chat. Now we can look at the games one by one. Quickly, सारी games में update करते हैं. Women में ही है तो let's just look at the women's games one by one, the evaluations. First of all, Vaishali clearly I think is a pawn up, but because of the bad pawn structure, all pawns being on dark squares, ये dead draw है, and it's literally impossible for black to progress. That is the problem. So I think this one will be a draw. Let's go to Humpy's game. Now Humpy I feel has some chances. Now because the bishop on c8 is not developed yet. The black king side is weak. There's pressure on the e6 pawn. Vice pieces are very well developed. So if I had to bank on somebody winning, I would say it's Humpy. So I would not discount her somehow winning this game. That's my point basically. So I think there are hopes for Humpy to convert this. game में तो कुछ भी हो सकता है भाई. Exactly. Good point. So I think Humpy has chances. So what we need is one of Tanya or Bhakti to come back. I think that's what we basically need. अगर किसी तरह ये हो जाए, I think we have chances. And if you look at the Tanya game, she chopped off the b4 pawn. Yeah, she played b4 I think herself. Yeah, उन्होंने b4 खेल दिया.
but the issue is her king. I feel. I think अगर ये h4 pawn में h2 खेल पाऊँ ना वापस, I might have some hope. But the problem is the king. I just don't know how to develop my h1 rook. There's no way to save this h4 pawn. And if that falls, then black is pawn up and completely winning strategically because ये h pawn ही queen कर जाएगा. So I'm just hoping कि ये queen trade किसी तरह हो जाए. I think then Tanya is back in the game. But तब तक के लिए I think it is completely lost for her. And the only problem is this pawn. अगर ये pawn वापस चला जाए, if I can castle, I can play rook a1, I can push the knight back with b4 from white, and suddenly I can put the bishop on d3 and सारे piece active हो रहे हैं. Imagine करो यार, castles, b4, bishop d3, queen e4, and suddenly queen s1 पे check आ रहा है. So I think it can change drastically, but ये h4 pawn का क्या करे, I have no clue. So Tanya for now is lost chat, but we are still hoping for the best. Let's go to Bhakti's game. जहाँ पे what we were discussing did happen. After the move bishop h4, rook e1, castles, knight a4 was played, and यहाँ पे the choice is, will she just give up the e5 pawn or will she play a move like bishop f6? I think she should try to save the pawn because I just don't see what else, honestly. e4 allows queen c3, attacking the knight on a5 and checkmating on g7. So that doesn't feel like a good move at all. So bishop f6 maybe is a possibility, because even if bishop f6 is losing through some strategic maneuvers, I think if you just give up the e5 pawn, it's just lost on the spot, right? You would rather have minus, let's say 3 with a complicated position than -2 with a clear pawn lost and no counterplay, right? Yep. Makes sense. So chat, इनमें से एक को they have to come back. The team needs them. I think Humpy still has a chance to convert. If she's put in a must-win situation, she might convert that. So I think, let's see if Bhakti and Tanya come back. Let's go to the open section now. These मैंने पहले ही shift कर दिया, like कुछ अच्छा देखते हैं. Gukesh is still playing, but I think that game they're going to agree to a draw very, very quickly. Now we can just have a look. Yeah, nothing much to. Oh, wait a second. Gukesh has pawned down. No, equal pawns. Equal. My bad. Equal pawn. I got scared for a second. Yeah, he has ace and pawn. Yeah, it's a good draw. So we go to Nihal's game now. You can see Ukesh still focused. I think White is still playing because he just wants to see कि बाकी board पे क्या होगा. That's why White is still playing. Otherwise, he would offer a draw. Nihal plays bishop f1. Very good move. And now king to g7 played. And Nihal plays b3. Another brilliant move by Nihal. The idea is to basically prevent knight c4. And the weakness on c3 is not really a weakness because it's very well defended by the rook and the queen. And now I can play moves like bishop g2 and put pressure on your weakness on d5. If I chop this pawn off, next I play c4 and you resign. So I think Nihal is in a great position. And chat, which is the opening जिसे Nihal को plus दी है, that is the London system. बढ़िया भाई. वाह. So Nihal, लंदन की तारीफ हो गई भाई इधर. Of course, इसे जीता मैं यार, chances है. So for now, first board पे a draw most likely. Second पे Nihal is definitely pushing. We go to board number 3 now, where Prag is playing, and Prag has played the move queen d5. Excellent move. I think trading off queens. Now his king is perfectly safe, and he can focus on these queen side weaknesses. I think White के पास bishop pair तो है, but his structure is spoiled. And structure spoil होने का हम best advantage end game में ही उठा पाते हैं जब these pawns can be picked up. Now, of course, the bishop pair is absolutely fine and White is not worse. But my point being, after the queens are rid of, we are playing for 3 results. It's not like a one-way street anymore. Got it. So Prag also, I think so far equal. And Anish has already resigned. What? Chat में तो आया. भाई अगर ये गलत हुआ ना, भाई बैन भाई जो बंदा आ रहा है. नहीं रे, Anish is worse, clearly worse, but he is not resigned. कौन था ये भाई ये? मित्रों जी, मित्रों वाले काम करते नहीं यार, लेकिन दुश्मन वाले काम कर रहे हैं भाई. Anish is worse. Yes, he is worse, but he's still playing. Okay, let's go to Ronak game. Bhakti has blundered, by the way. I think Bhakti is going to lose now, unfortunately. No, Bhakti is blundered. Okay, we'll come back to that game later. So I think तो आ गया वापस अब बोलता क्यों है she played knight. She played actually rook to d8, I think. And now the problem again is queen c3, attacking the knight on a5 and threatening e5. So we go back to the open section. Ronak game.
And Ronak game में चलते हैं because that becomes very important now. If Ronak can win, India has great chances. And after the move, bishop takes d3, rook f1 was played, which is very logical, I think. I think knight e4, they were somehow tactically better, but rook e1 also very logical. And black plays the best move, king g8. Excellent move by black. And now knight to e4. Now, the Indian, as you can see, chat, does not like that move because black can play queen takes b2. And the c4 pawn becomes a deadly force now because it has no opponent to stop it. Now, black has a very critical choice. Does he leave the king side and go to b2 to chop off a pawn? Or does he play a normal move like queen f5 to maintain the queen around the king? I think from black's perspective, it's such a bad position for the king because the rook is stuck on h8. He should take the pawn ideally and just go for it because otherwise he's just suffering there. But I'm really hoping he does not because we don't want any counterplay. Instead of knight to e4, queen e3 was apparently a better move, tucking the rook on a7 and preparing moves like bishop to e5. Basically, asking the queen, why kithe? So that was the best move, but he played knight e4. Practically still might work, but definitely double-edged. So chat, बड़ा डर लग रहा है यार, बड़ा डर लग रहा है chat मुझे आज. I have to be honest. Women's team is right now clearly losing. Armenia is winning. Uzbekistan is winning. So not looking good for Team India so far. Let's go to the women events A section, please, bhai. Let's go. Hare Krishna is already a draw. Let's see quickly. विदित के गेम में कुछ मूव्स हो गए हैं भाई. रुक टू d1, बिशप टू d7, बिशप कैप्चर ऑन d5, सी कैप्चर ऑन d5 एंड दिस इज पोजीशन करंट. बीस भाई ये गेम से आपको किसकी गेम याद आ रही है? मेरे को तो कोई गेम याद नहीं आ रही भाई. निहाल की गेम. कौन सी वाली? जो अभी खेल रहा है सिमिलर है ना, आइसोलेटेड पॉन, नाइट ऑन d4. So we have to kind of expect if Nihal wins. And then Niranjan is here, bhai. Niranjan, bhai, OP in the chat, boys and girls, bhai. Thanks so much, Niranjan, for the thing is, if you're expecting Nihal to win, I think you expect Wesley to win as well. Niranjan bhai, सही नहीं लग रहा यार, कुछ क्या हो रहा है आज? नमस्ते दोस्तों. आप आ गए तो कुछ चेंज जाएगा hopefully. Yes, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा. साहिल भाई और बीस्ट भाई, सच बताना आप कि जब सिचुएशन गंभीर हो तो क्या करते हो आप? तो धोनी को बैटिंग के लिए बुलाते हैं. करेक्ट, वेरी गुड, सही जवाब. इस सिचुएशन में वी नीड अ धोनी लाइक एटीट्यूड. तो बीस भाई आपने बताया नहीं उत्तर. मैं तो भाई कभी ऐसे टेंस होता ही नहीं भाई ये सब चीजों पे. अच्छा, आप जेन मोड में रहते हो हमेशा? हाँ भाई, हम जेन मोड में ना, वोट भी वही किया है भाई, हाउ आर यू में भाई. अच्छा, आई एम इन जेन मोड टुडे भाई. अच्छा, ओके. तो यहाँ पे मैं यूजुअली मैं 3 चीज़ें करता हूँ जिसमें से 2 चीज़ें मैं आपको बताऊँगा. नंबर 1, मैं बनाता हूँ एक ग्रैटिट्यूड लिस्ट जिसमें हम देखेंगे कि ऐसा क्या है जिससे हम खुश हो सकते हैं, कौन से पोजीशंस हमारे लिए अच्छे हैं. इससे क्या होगा, थोड़ा पॉजिटिव वाइब्स बढ़ेंगे. फिर नंबर 2, मैं देखता हूँ ब्राइट साइड. इस सिचुएशन का ब्राइट साइड क्या है. तो ब्राइट साइड देखने में मैं क्या करता हूँ, जब मैं गेम एज अ कमेंटेटर या एज एन ऑब्जर्वर देखता हूँ तो ऐसे देखता हूँ कि क्या गलती अपोनेंट कर सकता है, व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक्स कैन माय अपोनेंट मेक, जिससे मुझे चांस मिल जाए, मतलब हमारे टीम को. तो मैं तो वही एंगल से देखूंगा आप सब गेम्स, सो दैट वी ब्रिंग दैट भाई. एंड इसी पॉइंट ऑफ व्यू की हमें सख्त जरूरत थी भाई. थोड़ा सा आप सद्बुद्धि से साहिल टिक्कू को, तब तक मैं वापस आता हूँ थोड़ी देर में. थैंक यू सो मच निरंजन फॉर जॉइनिंग. साहिल टिक्कू एंड निरंजन भाई, ओवर टू यू गाइस. थैंक यू. ठीक है, तो साहिल भाई, तो आप बहुत गेम्स देख चुके हो इस राउंड के, तो आप मुझे बताएं पहला कि इन विच गेम आर वी क्लोजेस्ट टू विनिंग फ्रॉम द लेट्स से 24 games or 18 games or 20 games, 15 games, whichever is saying. I would say I think Nihal is the one jahan pe if I had to bank my money on, I would put it on Nihal's game. Okay, so let us start with it. Yeah, I am really very happy to see Nihal's game. तो निहाल गेम जब भी हम देखते हैं तो वी आर गेटिंग दिस IQP पोजीशन. तो जो भी चैट में जुड़े हैं हमारे साथ, तो IQP 2 तरह के लोग होते हैं, समटाइम्स 3 ऑल्सो, जो IQP को पसंद करते हैं और जो लोग IQP से डरते हैं और पसंद नहीं करते हैं. सो यहाँ पे
साहिल भाई कहते आ रहे हैं कि we are having a pleasant position and the position on pawn on d5 is something that we can all attack with all our forces. So there is one concept which I have learned when you are attacking the pawn on d5, and that is the concept of principle of second weakness. So what happens is the pawn on d5 is our first weakness, जिसको हम अटैक करते ही रहेंगे. इसके बाद इफ ब्लैक कैन ऑर्गेनाइज कुछ डिफेंस अगेंस्ट दैट पॉन ऑन d5, वी माइट नीड ए सेकेंड फ्रंट इन ऑर्डर टू गेट द सेकेंड वीकनेस. सो साहिल भाई, वो सेकेंड वीकनेस आपको क्वीन साइड नजर आ रहा है या किंग साइड? I am not so sure. I think king side is pretty solid for black. So if let's say black just bishop g2 के बाद, it also depends on how black saves the d5 pawn, right? तो बिशप c6 से सेव करेंगे वो. हाँ, but if he does that, I think the rook on e8 can be hanging, right? हाँ, so you are saying tactically. I am just saying generally. हाँ, okay. So I think let's go bishop c6. Okay. So I think then. Oh, bishop c6 is a blunder, direct वही तो blunder. knight c6 f4 आ रहा है ना, so it's not possible right now. That's why I was confused. No, now it's मतलब this triple attack. Triple E, yeah, okay. Yeah, true. Wow. So he has set a small trap. Though the threat is queen e2. Did you notice? Yeah. So he's threatening a piece here, like queen e2 पे we have Nihal Sarin's gun, और इसके बारे में हमने already videos भी किए हैं chess.com India YouTube channel पे. Nihal Sarin's gun, very similar theme with the queen, rook and rook on the same line. Alright. हंस क्यों रहे हो वहाँ साहिब भाई? नहीं वैसे ही. For the मैं plugin. अपनी किस्मत पे रहा हूँ because Netherlands की टीम में the only board where they were better was Jordan and he just blundered. So now it's equal there also. So it's just not looking good for that them. is not good. I mean, but for the next 20 minutes or so, let's focus on those positions in which like we are very good. I want to build that vibe first so that we feel good about our positions. And then feel bad. And then have like... Oh, Vaishali drew, what? Oh, Really? Vaishali drew. Okay, Vaishali drew expected. Expected, chart, expected. Okay, let me just quickly check. Expected, kind of expected. Not much to do there. Let me just quickly confirm. Yeah, we have a draw here. Yeah. And that also gives me an opportunity to update the scores. Alright. मैं कुछ नहीं कर रहा चैट. कुछ नहीं मतलब. What are they accusing you of doing? ऐसी मजे ले रहे हैं. एक मिनट, 1 minute. हाँ. Oof, man, this is not looking good, chat. I have to admit, this is not looking good. वहाँ से आर्मेनिया भी जीत रही है, उज़्बेकिस्तान भी जीत रही है. Okay. Alright, so I am back and Sahil bhai, आपने सही गेम हमें दिखाया कि in this position Nihal is better. तो इसके बाद, according to your analysis, which is the next game in which we have already got a good score? I think Arjun is the one with the chances. Great. So let's quickly switch to Arjun's game. Arjun is playing in the India 1 team. He's playing against Dominguez today. And I also have their camps. You can see here I have the board and the camp. And Arjun is white. So first of all, Sahil bhai, जब मैंने ये फोर्थ मूव f3 देखा ना, मैं बहुत खुश हुआ. आपको पता है मैं क्यों खुश हुआ? इतना खुश क्यों हुआ मैं? पता नहीं, आप कार्लसन के फैन हो? f3 खेला उसने recently. मतलब f3 is an indication that he's playing for extra something more. And जब भी f3 खेले हैं अर्जुन, इनके positions बहुत अच्छे आए हैं. And I was also very inspired, especially when Vidit Gujarati defeated Vladimir Kramnik in Tata Steel with this opening f3. So coming to the present position, the pawn on d5 बहुत ही powerful लग रहा है मुझे. आपको क्या लग रहा है? Yeah. I think that's the basically, I would say, the trump card of White's position. And a5 pawn ensures कि कभी b5 से undermine नहीं होगा. So and there's no dark square bishop to attack the pawn, and
there's no way for black to get to a5 basically, because c6 is also controlled. No, I'm very happy about this. So I think even exchanging rooks and trying in the endgame has some chances. But on the other hand, I think it requires a long, strategic, near perfect game to convert this, because black is also solid. Like pieces bahut kam hai. Black is also solid. Yeah, he's passive. He's worse, but he's not like lost. I think it will take some strategy to win this. So in this position, the stockfish is telling me that it's clearly winning already, but I do not know the specifics. So yeah, even I don't. Yeah, Rookie one played, so stockfish says to take on e8. That makes sense. So let's check. But then the knight comes to d6, and it's not clear how you actually finish off. Like, so let's see. I will make the computer moves this time. You play against computer. Okay. Knight a4. Play the move. Yeah, makes sense. My idea is simple. You know what? आपका जो theme है, destroying the defender. Bishop f5 and takes on d7, I guess. Yeah. So g6, let's say. तो हमारे यहाँ पे एक चेस क्लब होता था, ओके? तो उस चेस क्लब में लोग खेलते थे. वहाँ पे अगर आप मूव बता के, थ्रेट बता के खेलते हो, तो यू आर यूजुअली कंसिडर्ड एज अ रियली स्ट्रॉन्ग प्लेयर. कि आप थ्रेट बता के मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, वैसे that ambition. So in this position, you're saying knight a4. You want to play g6. Yeah. Okay. Now. Oh, excellent. Nihal. Okay. We can have a look at this game first, I think. g6. तो जो अगला मूव है white का, it's a very deep move. Before I tell you the move, I want you to think and see whether you can find it. या आपने already कंप्यूटर जी को नहीं अब मैं निहाल गेम खोल के बैठा हूँ. अच्छा ठीक है. Beautiful move. I mean, I love the idea. यही मैं बता रहा था in the game of Nihal. Principle of second weakness. I think h4 looks tempting. नहीं. h4 से हमें pawn break मिलेगा नहीं. लेकिन गैरी से मिल सकता है, अगर हैरी से नहीं. अच्छा, okay, g4 क्या? Yes, beautiful move g4. Idea is to play g5 and get our knight on g5 so that it attacks the second weakness or the second front. So एक variation है, for example, if you play king c7, then white could probably play g5. If you don't take, let's say you play h5, then white can already think about playing h4, bringing the knight to f4 and capturing on g6. That's a beautiful position. Yeah, I think white requires some strategy to win this. It's not like कि ये खेला जीत गए. It requires some strategy. Yeah. So I am very happy भाई. आपने 2 games मुझे ऐसे दिखाए जहाँ पे हम बहुत खुश हो सकते हैं. यही है भाई. यहीं पे खुशी खत्म होती है और दुख स्टार्ट होता है भाई. I think maybe we can look at the games based on teams now, because we can calculate the scores. Yes. So अब A पे ही है तो A पे देखते हैं. फिलहाल I think Arjun is clearly better. I expect him to win. 1-0. Okay. But Hari Krishna is drawn. So we have 1.5. 1.5 I think we can get. So now we go to the VD game, where that is very important, and that reminds me of the Nihal game again, because isolated pawn, and it's very usually when Wesley So is in charge of such a position, more often than not he just wins. I think it's a very difficult position for anybody to hold against Wesley, and I think if VD holds this, it will be an insane result for him, because if you look at the structure here, the bishop on e8 is literally doesn't have an immediate future. At least all it can do is defend pawns. The knight on f6 is decent enough, but the knight on f5 is definitely better than any other black minor piece. So is this configuration reminding you of a game? Yeah, Nihal Singh game, I think. I really am isolated pawn. That's all I can see. Why? Second knight coming to d4, I'm a bit scared. Okay. So yeah, this is right. I mean, I agree with your apprehension that black is, not really good. But let's look at the bright side. What is the bright side in this position? Bright side here, well, I mean, it's not easy to convert, because the queen on b3 for white is a bit. I don't think it's appropriately placed. That's what I think, because b5, d5 are defended for now, and you don't really want to play for c4. You can't. So I think queen has to be somewhere else, and that's why the black queen can probably take up some good active squares and try to compensate for the weaknesses it has. So maybe queen f4 here. But I think again, with 97 check aa raha hai, so it's kind of dangerous.
but you have to be active, I think, somehow. Very good. I love that. I mean, you said something which was in my mind. कि अगर black could launch some threats, not attack, just some threats on the king side with queen f4, knight e4, bishop d7, bishop c6. Yeah. Then there will be some pressure, the kind of pressure that I want to borrow from Abdu Sattar of Nodirbek. एक बंदा कह रहा है right side VD draw king. Palak, we cannot really label somebody as a draw king or a draw master. I think they are just being objective sometimes. And from what I have observed, honestly speaking, if you compare India A and India B, okay, if you compare the playing styles, the players playing in India number 2, they are all getting some fighting positions because they are also aiming for them, and each player has their own distinctive style. But in India A, we have a very solid player on the first board, and the same goes for second board. Like their styles are very solid, and they are known for their solidity, and they have reached 2700 plus because of that strength. And India 3 and India 4 are like taking chances when they can. So we cannot label one player just because they are making a lot of draws. You have to see the big picture, and the big picture is that it's a team event. So yesterday we also saw a little bit of drawback, because it's a team event. In team event we also have to look at some other boards. So there we actually lost that point. So we could not look at all the other boards. So coming back. So I think VD I would say it's like 50% win for Wesley, 50% draw. I think I would place it at 0.75. Like for wide, Yeah, clearly. I think black has absolutely no chance, but draw ke liye chances are decent enough. VD has to come some good moves, and maybe a couple of slight mistakes by Wesley, and VD plays queen c5, however, and I'm not sure what the idea is because I can simply play knight d4 now. What was the point of queen c5? Oh, this move is not giving me confidence. Yeah, I don't like it all because this has no point at all. Maybe he's just waiting. Yeah, but I think waiting is the worst case scenario, right? So, I mean, then you're just waiting for Wesley So to slowly grind you down. That's... Yeah, this move I'm not sure. But there is a question of Anshika. Maybe Sahil, you can give your thoughts, then I will give you my thoughts. Anshika. भाई कोचेस बोर नहीं होते क्या गेम्स एनालाइज करते करते? नहीं यार, उनको पैसे मिलते हैं ना. That's the simple answer. But I think नहीं यार, they invested in the game, yeah. They have put in effort with the players to prepare opening strategies. They are really analyzing the games. उनके दिमाग में वो चल रहा होता है कि ये यहाँ चल रहा है. And let's say they are looking at the games कि players ने क्या mistakes करी ताकि feedback भी दे पाए उनको game के बाद. So I don't think they are just sitting there idly. They have a lot of work to do. And they're constantly analyzing the games of their opponents also, I guess. कल इससे मैच होता है वो भी देखते होंगे सब. ये प्ले कैसे खेल रहा है, ये प्ले कैसे खेल रहा है. Like they are constantly doing their job. Like it's a tough job, man. It's not easy. I agree 100%. I mean, the thing is, if you win, then the players get the credit. But if you lose, then you can definitely get some sort of backlash. So I think it's a thankless job. I mean, जो भी साहिल ने बताया इसमें एक point जो है, I think, which is like really pertinent, that is that coaches have to watch the games and the time consumption to give feedback. So when you are doing these team meetings, that's very important, I think, and it's a good point, Sahil bhai. So this is done. I mean, with this game we know that we have less chances here. So all depends on the one and only game remaining in the SL, in the first group, and that but is unfortunately SL. SL seems to be in a much worse position now. Much worse. I'm going to ask you why. Because this knight on b3, I think, is headed towards e3 and first c4, attacking e5. Maybe you defend, and then either my rook comes to f3 or my knight comes to f5. And I think one by one, I can also play a4, a5, by the way, to create an open a file as well. You can't take on a5, of course. I'll get the c5 square. This is looking like a position jahan pe you can grind down your opponent. Like this is even worse than what VD has, I feel. Because wahan pe at least you have a queen for counterplay. Yahan pe I just feel it's a dull sequence where very dull. It's just impossible to defend long term. That's what I feel. Matlab, e5 pawn agar f6 pe hota, I would be much happier. But now I am not happy at all, and I think this one is going to be very difficult to defend. And he plays knight d2. He plays the move. Knight d2.
So now I'm trying to see what could be Black's best chance to make a draw. Maybe play a move very quickly and wait for Shankland to pre-move. I think is one good strategy, which might just work. Apart from it, I think I'm not really sure. Maybe no, I think even that doesn't work. Yeah, I'm not really sure what to do. Rook e6, I'm just saving the pawn, I guess, preempting it. I was thinking, what is the best positioning for my pieces to combat the plan you mentioned? So knight c4 you are saying? And I think f4 also, yeah. भाई कितने plans बता रहे हो भाई आप? भाई आप plan ही इतने भाई. Knight c4 मैंने खुद निकाला. इंजन कह रहा है नहीं भाई वो भी ठीक है, but f4 खेलो ना. So it's like, there are so many plans that, and the thing is, I play f4 and knight c4. How do you defend the pawn? You can't play knight g6 because I have f5. So you have to take, right? And so if you have to take... Now f4, yeah? So I play f4 and then knight c4. So you have to take on f4. You have no way to defend that pawn. Because knight g6 loses to f5 check. And if king is on e6, I'm assuming king is on e6. I played king e6 and knight 2, so I was assuming that. So, and I think this should be very, very difficult. Very, very difficult. Chat, very difficult. So team A, for now, Harikrishna has drawn. Vidit is suffering. SL is suffering. And Arjun is making his opponent suffer. So for now, team US in the driver's seat, 2.5, 1.5 is the most likely result. Yeah, it is not looking good for team A. So can we go to team B now and go through all the games? कि कोहीं से भी कोई हल्की सी खुशी मेरे को मिलेगी कि नहीं मिलेगी? Okay. All right. So here is a good opportunity for us to feel a little happy because Gukesh has been solid. To be honest, I was not expecting Gukesh to play today. I thought they will, rest him. And बीच में कह रहे दंगा करवाओगे क्या? अच्छा ठीक है भाई ठीक है. टीम ए की भी लगी पड़ी है भाई, क्या कर रहे हैं हम? देखा मैं 2.5 1.5 वो चल रहा है उधर और देखते हैं भाई कुछ भी हो सकता है भाई, अभी टेंशन मत लो. देखो आई वुड से गुकेश ही जीत गया. I would say नहीं, ये गुकेश जीतेगा तो भाई मैं चेस छोड़ दूंगा. This is impossible. आपका चेस छोड़ने का टाइम आ रहा है भाई. नहीं, this is either a draw or white wins, and I think white cannot win this. It's a dead draw भाई. Yes. I mean this is a draw, and तो coming to the position, तो draw इसलिए है क्योंकि there are very few pawns. कह रहा है very very difficult. तो टिक्कू भाई हम रुके की जाए. भाई रुको यार, हम भी रुके ना यार, क्या पता कुछ चमत्कार हो जाए. So Gukesh का साथ में रोएंगे. Chat Gukesh का, let's assume a draw for now because there's not much to play for. Nihal Sareen has played a spectacular move, rook f3, and after the move queen to d6, he played knight to b5. All Indians' first preference. तो चलते हैं भाई उस गेम पे चलते हैं. अब बोर्ड लगाता हूँ पहले. Yes, and okay, knight to c6, and he played the Indians' best recommendation there, rook to f3, and के बाद क्या बोलना था? भाई copy paste नहीं करना है भाई. And now the thing is, you have two choices for the queen. If you go to, let's say, b8, I think that is probably very bad because I will take on e8 and slowly take control of the e file. Okay? But the best move is queen c5. But now I have the move b4. And the queen is basically, I think, almost trapped. If you go to b6, then knight d6. Niranjan bhai, aap hi kar lo bhai. मैं तो करने b4 दे queen रहा हूँ. b6 allows knight d6 and f7 is hanging, so it's over. So you have to go to f8 all the way back instead. After I think b4, queen c5, b4, queen f8. And in that position, I can play knight to c7, attack your both rooks, and also the d5 pawn. So black has to take on e1. I take back. Let's say rook goes to d8 or c8. And now I just chop the d5 pawn. So Nihal Sareen is probably going to win a pawn. His pawn structure is going to be a bit sus for a while, but I think he is better. He's clearly better now. So he's come up with a very good sequence of moves, rook f3 and then knight b5, and black is struggling. So that's a plus point for Nihal. I think Nihal has good chances to win. That's 1.5 in our favor. Let's go to Prag's game. What's happening there? And chat, the position looks decent enough for Prag. He's managed to exchange the bishop pair. White does not have the bishop pair anymore.
He does not have the queen on the board anymore. The time is equal. White has double pawns. I would say dead equal. If anybody wins, I think it's black. I think, okay, not anybody wins. I think it's a draw most likely. What do you think, This is a Bhai? huge improvement for Pragnananda, who was in trouble. I'm really, जब मैं वापस ये Olympiad Games में देखूंगा, तो I will really focus on these moments where the evaluation is changing. What are those moments? How is Prag able to bring back the position back in his favor? Wow. I like the move b6, and you know what? I would maybe fancy black's chances here. Yeah, exactly. If anybody wins, it's black, most likely drawn. But if anybody has to push, I think black is the one who pushes. And so I think Prag is definitely going to be fine. I think he's not going to lose this. Now we go to the final game. So far, it looks like 2-1 in our favor. And we go to Ronak's We need game. only draw now. But Ronak was the one who's completely winning. But after knight e4, his opponent did play the best move, that is queen takes b2. Okay. And then after knight to g5, he played the best move again, h6. And after knight takes e6, he again played the best move, rook f7. So Ronak's opponent has been playing the best moves for the past 4-5 moves, and he has kind of equalized the game. And also, the pawn on c4 is a big asset, I think. And the only drawback for him is the rook on h8 is still awkward. So I think Ronak practically should be better. But yeah, he was at one point completely winning, and now it's not clear at all. यहाँ तो नाइट से मार सकते हैं, रुक से मारेंगे. Now this check, and now he tries to defend it like this. check पे वो and king यहाँ पे h7. mate guys. तो ये मतलब मेट भी नहीं हो रहा है आपका, A1 रुक से आ रहा है. कोई बात नहीं, यहाँ पे रुक मर रहा है भाई. अरे भाई A1 जा रहा है वहाँ. अरे mate in 3 हो रहा है भाई, हम लोग रुको भाई. Honestly speaking, chat, I think Ronak spoiled it. I think this is at best a draw now, because opposite color bishop जाएंगे को मारते हैं तो उसके बाद black का bishop is black का pawn and bishop combo is more dangerous than I feel any white combination. And I think एक बार ये king, एक बार rook h8 निकल जाएगा ना, I think black will start pushing for the win. So Ronak has to be very, very careful. King h7 plan hai, and then rook gets into the game, and then I start pushing the c pawn. And the pawn can be played to c2 all the way, and the bishop can defend it all the way from g6 to h7. So I think this is looking a bit dangerous now. I would start calculating ways to, stabilize the position. I'm a bit worried now. This is what I would call break लगाने का time आ गया. Plus there is another angle कि रौनक के पास 16 मिनट 50 सेकेंड बाकी है, और at this moment they have only completed 24 moves, so 16 minutes उनके पास है. मतलब 16 moves भी करने हैं उनको. अभी 20 भाई बोलेंगे 24 मिनट से भाई. इंक्रीमेंट जोड़ के बोलेंगे. तो that ये पोजीशन मुझे I think this learning from yesterday's experience just take draw, just not worry. Yeah, don't try to over push. I think because and this is the time you go and check the other boards. Yeah, which Gukesh did not do. I think that's where he went wrong. So you have to also maintain कि यार देखे मतलब I was winning. I should not tilt. We saw what happened yesterday. Gold हमारे भी जेब में होता. So if I feel I spoiled my position, I go and check out the game, see what's happening there, and then I don't over push at all. बाद में का मौका आया कि I have to win at all costs, then you can do it. But until then, not really. तो थोड़ी देर में मुझे लग रहा है कि थोड़ी देर में हमें ऐसे मोमेंट्स आएंगे जहाँ पे बहुत सारे गेम्स टाइम प्रेशर में होंगे. इससे पहले मैं आपसे एक सवाल करूंगा, आप मुझे डायरेक्शन दे देना कि कौन कौन प्लेयर्स हैं वो जो बोर्ड प्राइस के लिए चांसेस हैं. उनके गेम्स हम चेरी पिक करके देखेंगे, फिर वापस आते हैं टीम्स के लिए. निहाल सरीन हमने देख लिया. नेक्स्ट एसएलआर भाई, ए और बी वो सब हमने देख लिया. मतलब वुमेन्स हमने देख लिया ए. मैं ये देख रहा हूँ कि इंडिया सी टीम और वुमेन्स के जो बी और सी है उनके बारे में. I think Vantika is the one player, and Nandita. तो पहले उनके गेम्स देख के हम एक विजिट मार के आते हैं. वंतिका ठीक है. एंड चैट तो मैं पढ़ लेता हूं. चैट में यार भाई डू समथिंग, क्या ही कर सकते हैं भाई इसमें. अब मेरे हाथ में थोड़ी मैनिफेस्ट कर सकते हैं भाई. वी स्टार्ट्स मैनिफेस्ट. यस भाई, यस श्योर. रुके. तो ये है पोजीशन ऑफ वंतिका, एंड आई डोंट सी एनी रीजन टू वरी. बट साहिल भाई,
आपने होमवर्क करके आए होंगे आप शायद, तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, ड्रॉ या विन? Vantika ka, I think she's let me quickly check. समय 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 खो रहे हो, समय ले रहे हैं। एक सेकंड यार, वंतिका नाम गायब क्यों हो गया? या नहीं, वंतिका का चांस एक्चुअली अब नहीं है अनफॉर्चुनेटली। आई जस्ट चेक, इस राउंड से पहले था, अब नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट बिकॉज ऑफ हाँ, नेक्स्ट आई थिंक नंदिता आई थिंक हैज अ गुड चांस। नंदिता, ओके, शी इज रैंक सेकंड and if she wins today she at least wins silver. If she wins today, so the position is not silver. winning, I'm sorry, like Yeah. black has a check, a dangerous check through which black can immediately win, I think. So if she draws, if she loses, even then she has chances for because इनके पीछे दो प्लेयर हैं जो इनको टेक ओवर कर सकते हैं, दो ही प्लेयर हैं, लेकिन वो अगर वो ड्रॉ भी कर लेंगे तो वो ओवरटेक कर लेंगे। तो आई थिंक as long as one of them loses, she still has chances for bronze, I think. But she most likely lost her medal today if she loses. that's I mean that's a difficult situation. All right, next. Finally, Divya is one who's ranked third in her category, 5th board pe. If she can win, He has already won, na? अरे नहीं भाई नहीं। if she wins, she ensures bronze. I think she gets bronze. Yes, you are right भाई, 20 बार सही बोल रहे हैं शायद। She won. Oh, nice. So she will get the bronze medal, chat, at least. That's confirmed. Pratyusha and Divya both have won. Nice. बाकी ओपन में तो आई थिंक कोई ऐसा है नहीं, like everybody who's playing has still chances for a medal. So यही दो लोग थे who had chances, I think, because Tanya also has chances and so on, but Tanya of course is already we've seen. Okay, so maybe Bispai, also by the way, no, yes, I think Padmini does not have chances. Can you quickly show the game to the viewers? Divya Deshmukh's win, maybe the last 20 moves or so. Okay, bhai, let's go, bhai. Why women team losing? Yeah, last time we saw Vaishali has drawn and Tanya and Bhakti are both losing. So because of that, it's not looking good, unfortunately. And in fact, since then, the position has gone from bad to worse. And yeah, I think Bhakti basically has a queen for rook and bishop and knight, and it's just, I think, lost. यहाँ पे जो ओपोनेंट थी भाई दिव्या की, she decided कि मैं 2 रुक चाहिए मेरे को for a queen चाहिए मुझको। हाँ भाई, she liked that thing. And उसके बाद यहाँ पे अरे ये क्या है बस क्यों रहे हो? Has Divya got any chance for a medal? Yes. If she wins, she gets bronze. Divya won right? already भाई. She gets bronze, confirm. हाँ. तो यहाँ पे बस एक गलती हो गई भाई इनके ओपोनेंट से, बहुत ट्राई किया उन्होंने. And this was a critical mistake भाई. यहाँ पे पॉन मारने के लिए गई और यहाँ पे डबल अटैक नहीं मारेंगी तो वैसे भी 3-5 पॉन्स हैं, it's anyway lost. तो नहीं तो ये पॉन तो जा ही रहा था वैसे भी. तो yeah, so I think Divya will win the bronze medal in the 5th board. बीस भाई, हाँ, एक बार वुमेन सेक्शन में चलते हैं. वुमेन सेक्शन में ही बताओ. Because you might not believe, Humpy is also worse. What is happening, guys? What is happening? Is Team India crumbling under pressure, guys? I don't know. Yeah, most likely yes. Chad, unfortunately, the answer is yes, because Humpy is worse, Tanya is much worse, and Bhakti is just it's resigns. भाई ये क्या मूव है भाई? मैं सोच रहा था यहाँ पे मारूंगा, फिर मैं देख रहा कि या तो मेट ही हो रहे हम लोग सीधे. Basically, जो उन्होंने H4, H5 का प्लान खेला, that was not the best, apparently, because Black has a lot of counterplay, and Black just took the H6 pawn and has just I think it's 2 pawns up now. And now Bishop E4 is a great move for Black because she can exchange a lot of pieces and also get the Bishop to a better diagonal defending her king. Bishop हम उठा के B7 से G6 पे रख सकते हैं literally. So I think that really helps safeguard her king. And I think it's really difficult. I mean, it's possible still Humpy for her to win this. It's not like lost, but slightly worse for her now. Even Bishop D5, I think such a logical move to exchange pieces, yeah? Looks very logical.
कोई है जो वर्स नहीं है। हाँ भाई, 2 लोग आज आरसीबी का दर्द समझा। एग्जैक्टली चैट, हमने चैट से बात ही नहीं करी। छोड़ो यार गेम, छोड़ो, तुम बताओ चैट क्या चल रहा है रे। छोड़ो यार गेम शेम, बोर हो गए रे, दिमाग पक गया रे। हर गेम हर कोई हार रहा है यार। सुबह सुबह आदत नहीं है लोगों खेलने की, मुझे लग रहा है। भाई मैं तो कह रहा आराम से एंजॉय करते हुए। हाँ ये वाला ना गेम, आई थिंक वी कैन डिसमिस दिस राउंड एंड स्टार्ट अगेन एट आई थिंक 3 PM। आई थिंक पिटीशन फाइल करते हैं। रीडू अंडू होता है ना ऐसे, कंट्रोल जब दबा के भाई। भाई तो अभी गिव अवे कर लेते हैं, थोड़ा मूड भी बदल लेते हैं चैट का भी, क्योंकि हम पहुंच गए हैं जब गिव करते हैं ना तो एक बंदे का अच्छा होता है और 200 का बुरा। सो आई डोंट थिंक दैट विल इंप्रूव द मूड। अरे बीइंग ऑनेस्ट, अनीश इक्वलाइज, क्या बात कर रहे हो, सही बताओ प्लीज। अनीश ने किया क्या इक्वलाइज? साहिल इज लिटरली क्राइंग फॉर एन ऑब्जेक्टिव अपडेट। अबे कौन था अनीश इक्वलाइज वाला? इसको पकड़ो रे। अला हार रहा है अनीश, पौधा प्यादा मर रहा है। कौन था ये? नितिन पाल भाई, मेरी फीलिंग्स ना खेल रहे हो आप यार, ऐसे मतलब बताओ यार। कार्तिक बरा बोल रहा है गुड मॉर्निंग, अभी आ गया उनका मॉर्निंग मैसेज। ये ट्रायल था भाई, ये ट्रायल था। अनीश विल ड्रॉ भाई, अनीश विल ड्रॉ। ये ट्रायल था भाई, दिस वाज अ ट्रायल राइट, दिस इज नॉट द रियल मैच, है ना रंजन भाई? ये तो 3 बजे स्टार्ट होगा ना असली। क्या करे यार, ये तो गरम कर रहे थे सीट्स। तो लाइफ इज वो स्ट्रेंजर, टेस्ट कर रहे थे, डीटी वो टेस्ट कर रहे थे। The reality is like strange, compared to Okay, fiction. सही तो खेल रहा है अनीश। अनीश को क्या दिक्कत है, मेरे को बताओ। खेल रहा है क्या? मुझे तो पॉइंट डाउन के कोई चांसेस नहीं। मुझे भी पॉइंट नहीं, मुझे तो पोजीशन गलत दिख रही है। फिर मैं आई एम सीइंग द रॉन्ग पोजीशन। रुको। हमारे पोजीशन, अच्छा मैं गलत पोजीशन देख रहा हूं। तो Oh, Anish has kind of made it interesting now, but the best move here is G4, which is literally impossible to play. Yeah, that's नहीं G4 तो मैं सबसे पहला चीज वही G4। अरे F4 हैंगिंग है रे, वो भी नाइट D5 चेक के साथ। Not in a million years he plays G4। मैं तो G4 ही सोचा था भाई सबसे पहला भाई। Impossible है G4 भाई, impossible है literally। I think he will never play G4। Just with the feel of the board वो लगता है भाई G4 खेलना ही भाई। Mix mash music बोल रहे knight E4 was amazing and yes Ronak missed it। Yeah, he missed it। So Anish is still struggling। चैट एक काम करो, देखो 20 भाई आप ना इंडियन गेम्स का अपडेट दो, सारे गेम्स का। मैं बाकी 2 टीम का बताता हूँ, ठीक है? इतना क्यों करना भाई, आराम से चिल करते हैं भाई, रिलैक्स। बहुत टाइम है अपने पास। मैं देखता हूँ एक बार। नहीं है टाइम, बहुत टाइम है भाई। चैट जिस बोर्ड पे नीदरलैंड बेटर था ना, वही बोर्ड ड्रॉ हो गया। वैन फॉरेस्ट का ड्रॉ हो गया गाइस ऑलरेडी। वैन फॉरेस्ट का ड्रॉ हो गया। Anish Giri plays F3। I told you he will never play G4। He played F3। बेंजामिन बोग जी के लगे पड़े हैं बिशप C6 के बाद। He's really struggling। And फाइनल बोर्ड पे क्या कर रहे हैं वर्मर डैम जी? वर्मर डैम जी को देखते हैं भाई क्या कर रहे हैं एक बार। वर्मर डैम जी completely lost। इतना एक्साइटमेंट है साहिल में। Completely lost। एक मैं आर्मेनिया की नजर मारता हूँ यार। आर्मेनिया में शिरोव इज कंप्लीटली लॉस्ट। ओके 1 डाउन। मैं पर ये गलत नहीं है कि इस टाइम पे कोई टाइम है यार मैच करने का, अभी सुबह के 10 बजे। उनका इक्वल चल रहा है सेकंड बोर्ड पे। For 10 days पे you made it is them equal। for 10 days you make them board play। पे it is- अरे रुको ना भाई। So Armenia is winning। अपना सेंटेंस कंप्लीट करना चाहते हैं। Armenia is winning। अरे रुको भाई तुम। Armenia is winning 2.5, 1.5 confirm। Uzbekistan most likely even 3-1। And India 1 is losing 2.5, 1.5। India woman is losing 3.5 half। अरे कुछ तो समझ आया, कोई नहीं सुन रहा है। ऐसे बोलोगे तो गेम दिख। अगर अब इंडिया 2 भी हार गया ना तो ऑन स्ट्रीम रोते हुए देखोगे स्ट्रीमर को पहली बार भाई तुम। भाई सुबह कौन गेम कराता है यार? पहले तो तुम 10 दिन बोलो कि दोपहर में खेल रहे हैं, उसके लास्ट दिन कहोगे अच्छा चलो आज सुबह है। ये क्या है भाई, ये गलत है भाई। हाँ भाई ये टेक बैक होना चाहिए। दिस इज नॉट फेयर। ऐसे बहुत चीजें इन्वॉल्व है भाई। 20 भाई यूजुअली राउंड को सुबह क्यों रखते हैं? क्योंकि हमें प्राइज गिविंग में बड़े बड़े लोगों को भी बुलाना है, तो उसको डिले नहीं करना है। अगर तो हमेशा ही सुबह मैच रखो ना, फिर हर दिन सुबह रखो। फिर हर दिन सुबह के लिए सब लोग नहीं मानेंगे। अरे ऐसे थोड़ी होता है भाई। नहीं सुबह रखो तो देखा ही नहीं मैच यार। सुबह शाम को लोग आते हैं देखने के लिए मैच। लाइक पीपल कैन कम ऑन देयर जॉब्स एंड छोड़ो वो सब छोड़ो ना भाई। जॉब का भाई काम करते हैं। मैं ना होता है भाई कोई
मैं तेरा Just 5 फिर मिनट में आराम से आता हूँ भाई, ठीक है? आई थिंक You और take इससे a पहले मैं break, रो भाई. दूं, हाँ. है ना? तो मैं कैमरा ऑफ कर रहा हूँ भाई। मैं wait, रो wait, के wait, आया wait. चैट, सी यू सून। कैमरा नहीं ऑफ करो करो। ना भाई. नहीं भाई, मैं रो के आता हूँ, सी यू सून चैट, अरे सी यू सून। कहाँ से चेंज कैसे करेंगे? सी यू सून क्या? म्यूट करके निकलो भाई अपना, हाँ। दूसरे रूम में जाओ. अबे रो ये क्या है रे? वहाँ. और क्या भाई? रुको भाई, तुम्हें कुछ सुंदर दिखाता हूँ। लुक एट द वॉल, एंजॉय। थैंक यू भाई. ठीक है भाई। तो बीस्ट भाई, अब मैं चॉइस देता हूँ आपको। हाँ भाई. आपको गेम्स मतलब जहाँ पे वी आर बेटर वो देखना है, या जहाँ पे वी आर वर्स वो देखना है? मैं क्या तो देखना? कह रहा आराम से निहाल और अर्जुन का गेम देखते हैं भाई. बाकी सब में कुछ हुआ तो चैट बताएगी भाई. करेक्ट। क्या खुश रहते हैं भाई जब तक जितना टाइम है भाई. ऐसे भी ज्यादा टाइम बचा नहीं अपने पास. क्या है भाई? ओके भाई, मैं एग्री करता हूँ कि जब वी आर एक्चुअली फीलिंग गुड, इट ऑल्सो हैज सम होप ऑफ ट्रांसलेटिंग आवर वाइब्स इनटू गुड Yes, रिजल्ट्स। yes, yes. Yes. So yes, we have a very pleasant position in the game against Nihal Sarin. I mean Nihal Sarin versus Blue Bam. हम्म. And winning plan निकालते हैं भाई, मेक अ विश करते हैं फिर। तो थोड़ा यहाँ पे मैं लगा देता हूँ निहाल सरीन का गेम। यस, वी आर हियर। सो मेक अ विश, क्वीन F8 के बाद हमें D5 पॉन तो मिलेगा 100%। Yes. तो नाइट C7 पे यू विल गेट द पॉन ऑन D5। तो नाइट Knight C7, C7, रूक E1, Capture, क्वीन E1। captures. रुको And रुको then मिलेगा, रुक रुक को C8, हटाना पड़ेगा. रुक कहाँ लाएगा? C8 Rook C8, C8 and now we'll capture here. क्वीन D6 भी खेल दो। Queen D6 attacking the knight, but then you can just push. वाह, ये भी खेल सकते हैं। अच्छा, मैं नाइट F4 के बारे में देख रहा था, कंप्यूटर भी नाइट F4 बोल रहा था, बट अच्छा. ठीक है भाई, नाइट F4 ही खेलता है भाई. कंप्यूटर ही देख के खेलना है तो फिर तो क्या ही दिक्कत है भाई. फिर नाइट नहीं, Knight आई एम F4. जनरली सेइंग नाइट F4, बट okay, so this is the computer version, but I have a feeling Nihal is more likely to play pawn to C4. So, but by the way, this is not Nihal Sarin's position. I think I put a wrong camera then. This is not Nihal's position. Sorry, chat. I mixed up the cameras. This is Let's Nihal. assume we are winning. Yes, guys, on India is winning 3.5, 1.5 women section में. In men's section also we are winning 3-1 in both India A and India B, guys. Don't worry. Everything is good until it goes bad. तो यहाँ पे जो हमने वेरिएशन देखा वो तो हो रहा है, तो निहाल सरीन से हमें पक्का 1 पॉइंट मिलेगा। क्या बात Next, कर रहे हो? पक्का है, पक्का हाँ। 100%। तो अब हम चलते 100%? हैं 100%। तो अब हम चलते 100%? हैं, अरे 100% है भाई। अभी हम चलते हैं अर्जुन एरगेसी के पोजीशन। अच्छा, ये तो देखो यार क्या हुआ। वही हुआ जो आपने कैलकुलेट किया, वही हुआ। तो ठीक ये दिखा देते हैं चैट को कि रुक E1 मारा, क्वीन E1। हाँ, एक सेकंड क्या हुआ यहाँ पे? अच्छा हाँ, ये तो देख लिया ना, अर्जुन गेम। लेट्स गो। तो अब हम चलते हैं अर्जुन के गेम पे और हम लगाते हैं इनके कैमरा। तो यहाँ पे Dominguez is dead, guys. Dominguez is dead. Completely destroying Dominguez. Arjun Erigesi OP in the chat भाई। जैसे ही भाई गए हैं यहाँ से साहिल, काफी अच्छी हो गई है हमारी सारी जगह पोजीशन। हाँ, ये पोजीशन देखो भाई, C5 पॉन, D5 पॉन, मतलब टीम वर्क किसको बोलते हैं? टीम वर्क। यप। मतलब C5 साथ को जा रहे हैं। ब्यूटीफुल पॉन्स। लुक एट दिस नाइट्स। ओहो हो, मजा आ गया भाई गेम देख के भाई। प्रज्ञानंदा भी देख रहे हैं कि अरे हम यहाँ पे जीत रहे हैं, अच्छा है। और बीच में आपको ये पता है कि मुझे एक और गेम का याद आ रहा है जहाँ पे अर्जुन एरगेसी ने ऐसे ही 2 पॉन लेके उन्होंने एक गेम जीता था इसी टूर्नामेंट में। एंड गेम में वो जाके जीते थे, आपको याद है? तो नहीं याद है। वो ऐसा गेम था जहाँ पे अर्जुन हैड हेल्प द टीम टू विन, और उन्होंने इंटरव्यू भी दिया था कि दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम happy that this is first time where I am helping the team to win, and because of my win the team is winning, because बाकी सब ड्रॉ हुए थे। So किंग C6 पे रूल्स नहीं अलाउ करते भाई। शायद आप कहीं और ऐसे मूव्स देखे होंगे, बट किंग C6 यहाँ पे तो नहीं होगा। भाई खेल सकते हैं भाई, आप लोग नहीं खेल सकते, ऑन बोर्ड हो सकता है वो मूव, आपको क्या पता भाई। तो D6 चेक हुआ है ऑलरेडी, मतलब नहीं D6 नहीं हुआ, सॉरी F6 हुआ है। एंड नाउ यहाँ पे आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा।
यहाँ क्या कैलकुलेशन करना है भाई? तो यहाँ पे हम सिलिकॉन मॉन्स्टर को ऑफ कर देते हैं और अपना फिर भी दिमाग। मैं D6 खेलूंगा भाई। तो अब आप बताओ क्या खेलोगे ब्लैक? किंग D8। किंग D8 खेलोगे आप तो तुरंत विन है। खोजो विन को खोजो। आई एम ट्राइंग टू आई थिंक मे बी दिस। तब नाइट E5 पे आ जाएगा, हम वो नहीं चाहते। सॉरी अबाउट दैट देन। आई डोंट नो देन मे बी किंग को अंदर ले आऊंगा। किंग को अंदर आओगे तो G2 जाएगा। G2 आपको मिल रहा है पॉन ब्रेक, तो आप पॉन ब्रेक तुरंत। कहाँ है? अच्छा ये यस डोंट टेल मी ये मूव है यस, यही मूव है भाई। ये तो नहीं ये तो दिक्कत वाला मूव है। खत्म हो गया ना गेम। क्यों? किंग E8, फिर नाइट को लाओ B6। Knight to B6. Yes. Oh. And now if you capture, pawn takes, pawn takes. दो पॉन्स And दो पास पॉन्स। ये बिशप की हालत अच्छी नहीं लग रही है। ये सब हो गया। वेरी गुड, ये सब हुआ है। All of this has happened already, guys. Oh my God. जब तक हम लोग एनालाइज कर रहे हैं तब तक खेल दे रहे हैं भाई अर्जुन ऋषि जी। और श्रीनाथ बहुत खुश होते हुए देख नजर आ रहा है हमें। He's very happy, I am sure. वाओ भाई। कार्तिक पर पूछ रहे प्राइस क्या है गोल्ड के लिए? प्राइस मनी क्या है भाई? प्राइज मनी इज आई मीन, अगर हम जो ओपनिंग मतलब क्लोजिंग सेरेमनी में जो मिलेगा वो सिर्फ मेडल होगा, लेकिन उसके बाद आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल विल कम फॉरवर्ड टू अवार्ड दीज विनर्स। अच्छा मतलब डायरेक्ट ऐसे हम लोग को कुछ मिल नहीं रहा है टूर्नामेंट जीतने में? उनको खेलने के लिए कुछ पैसे मिल रहे होंगे अच्छे। आई थिंक इंडियन टीम विल बी गेटिंग like a playing fee, but playing fee is not prize money. तो there will be I think some तो awards. अच्छा अगर कोई और जीता, मान लेते हैं कि इंडिया नहीं जीता भाई, मान लेते हैं एक मिनट, उज्बेकिस्तान जीता, तो उसको फिर मेडल देके छोड़ देंगे? एक क्या 2 मिनट लो भाई आप। भाई बीस भाई मेरे ख्याल से मैं कैमरा ऐसे ही रखने वाला हूँ भाई थोड़ी देर। गाइस अरे आप तो मत ही दिखो तो अच्छा है भाई। आप रो रहे तो बट बेस्ट हो रहा है भाई। हम लोग जीत रहे हैं सारे गेम भाई। रोता भाई मैं ठीक है। कंटिन्यू। तानिया इज विनिंग गाइस। तानिया इज एक्चुअली विनिंग। शी इज बैक। कुछ भी दैट इज हाउ शी प्लेज इट भाई। तानिया ओपी हो जाए भाई एक बार। क्या बोल रहे हो? जो पीछे मैं देखा उसमें लॉस्ट है। अरे रुको ना भाई तुम क्या बोल रहे हो भाई? कौन सी पोजीशन देख रहे हो भाई? अच्छा नहीं भाई ये तो हेलुसिनेशंस भी मतलब सुबह 11-1 बजे भाई दिन को। यार चैट ने बोला यार, चैट पे मैंने विश्वास कर लिया यार भाई कुछ भी मतलब। तानिया मिस्ड, शी हैड अ चांस, शी मिस्ड इट। या Queen C7 check apparently was a draw, but she missed the chance. Oh, Queen to C7 check and this is a draw, guys. This is just a draw. कैसे भाई? किंग H6 पे जाऊंगा, कहाँ पे ड्रॉ है? Queen F7 क्या है थ्रेट? Rook F4, Queen F4. तो मैं जाऊंगा जय किंग G5। चलो भाई जय। ऐसा इतनी हिम्मत? Queen E7 check? अरे ओह ठीक है। आ जाओ मार्केट में आ भाई। या ये तो एटलीस्ट ड्रॉ है भाई। This is a draw and she missed it. But the good thing is chat कि मतलब मौका मिल सकता है कभी भी। होप नहीं लूज करना है भाई। साहिल टिक्कू की आवाज सुन के भाई। ठीक है। अरे तो अगर अभी 33th मूव पे मिला है तो हो सकता है कि हम लोग को 33th क्या होता है 33rd मूव पे मिला है तो हो सकता है हमको मौका मिल जाए 40th मूव पे भी। ओके तो यहाँ पे बीस्ट भाई, तो आई हैव सीन, आई मीन ऑब्जर्विंग दैट यू हैव बीन सेइंग कि अगर मतलब कुछ भी हो सकता है, दिस इज अ वेरी कॉमन टर्म यू हैव बीन यूजिंग, तो यू नो दैट इससे कुछ भी हो सकता है इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आई मीन वेरी फेमस ड्रामा ऑल्सो, अनुपम खेर किंग। तो वो बोलते हैं कि अगर ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है, बेसिकली मीनिंग दैट अ मिरेकल कैन हैपन एनी टाइम। Yes, and what about she plays? हाँ यही मैं सोच रहा था, Bishop to D3. How did she know? Because if she captures, then ये आ रहा है। अच्छा। Even I thought this move and she played it. Awesome Tanya, you can do it. Bhai, no offense, but आपकी मूव खेलना I am not sure हम में से किसी की मूव खेलना actually। रहने दो आप चुप ही रहो ना भाई। आप जब तक बोल ले रहे थे तो पता है गलती की थी। जैसे चलो एक काम करता हूँ मैं, ठीक है I'll do one thing।
I'll join the chat for exactly 5 minutes, ठीक है? And we'll see आप क्या होता ज्वाइन है. ही नहीं करो भाई, आप रुको भाई. ठीक है. मैं 5 मिनट दूर हूँ भाई, ठीक है ना? हाँ, दूर रहो, आप देखो क्या क्या होता है भाई. अभी मिरेकल से कैन हैपन भाई. साहिल टिक्कू इज नॉट देयर. तो एक न्यूज कंफर्म करनी थी भाई. चैट में मैसेज आया मुझे कि इंडियन इंजीनियर बोल रहे हैं, जो ऑलरेडी डायमंड मेंबरशिप शायद जीत चुके हैं, वो बोल रहे हैं कि इंडिया इज गेटिंग 7th 2700. कैन यू कंफर्म दिस? इज दिस ट्रू? ये तो आपको कंफर्म करना चाहिए. हाँ भाई, अर्जुन इज विनिंग. नो, ही रीच 2700 नाउ. या अर्जुन. अच्छा, so a win will give him 2700. Wow. So we have to be ready on social media. Wow. Guys, Tanya very low on time. 59 seconds on her clock. Opponent is having 17 minutes. Let's see what Tanya plays. Sorry, opponent has to play first. Opponent plays first. Come on. देखो फ्री बिशप है, ले लो. लेट्स गो. ये करिशा, टेक द फ्री बिशप. टेक द फ्री बिशप. नहीं, और क्या भाई. भाई आप देखो, जब तक टिक्कू नहीं था तो किंग G7 हुआ था. जैसे ही टिक्कू आया, रुक C2 हो गया भाई. अरे ठीक है, मैं बता रहा हूँ भाई, ये हो सकता है भाई. ये रोता बहुत ज्यादा है ना बंदा, इसलिए कुछ नहीं होता है. ओके. मैं तो देख रहा हूँ पोजीशन ऑब्जेक्टिवली, और इनके बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि शी इज डेफिनेटली टेंस्ड. Yes, she's tense. She doesn't know what to do. What a brilliant move, bishop to D3 by Tanya. And now all you can do is capture here, and you get a check here. And this is lost, guys. This is lost for her opponent. Tanya is coming back, guys. Don't worry. Yes, let's stay on this game for a moment. Arjun is 2696, so he will be 2700 after this win. By सही है भाई. भाई, if we lose, it will be all because of Sahil Tickoo भाई, because he cries a lot भाई. So yeah. Let's go to Arjun game भाई. Arjun game में knight to B6 खेल दिया है भाई, खेल दिया है. And now you have to capture. And this is happening. Let's go. Let's go quickly. Oh, it has captured and B6 आ गया भाई, बोर्ड पे आ रहा है. अर्जुन एलिगेसी की गेम में भी कंप्लीटली विनिंग हम लोग. तानिया के गेम में कम बैक होने वाला है बहुत ही जल्द गाइस. लेट्स गो. So B-Stats is now predicting a comeback, a miracle. Yes. And we have a move because Tanya, if you look at the clock, she has less than 40 seconds. Bishop to E4. She's made a move. She's played bishop E4. Again, making it difficult for black's knight to come to E4 because of rook C7 again. And Ib Karisa about to make her next move. क्या खेलेंगे वो खेलेंगे. आप बताओ ना यहाँ पे ब्लंडर मूव क्या है. ब्लंडर मूव ये हो सकता है, I think queen E5 not the best move. Chances are queen क्या queen E5. Queen to E5. I don't think it's that great a move, but the computer, yeah, because of this, I think, because of this rook into C5, I feel maybe there is some chance, but she doesn't go for it. She's yet to make her move. So for another minute, we will stay on this game. Bishpa, क्या बोलते हो? क्या भाई? क्या हम एक और मिनट के लिए इस गेम पे रह सकते हैं? हाँ भाई, थोड़े मूव तो देख ले भाई. डोंट स्प्रेड हेट नहीं है भाई. ये मेरा प्यार है साहिल टिक्कू के लिए. तुम नहीं समझोगे भाई, क्योंकि तुमने कभी किसी से प्यार नहीं किया. Okay, this is great. Rook to F7 is played by. Rook to F7 is actually a good move. Unfortunately for India,
It's getting a little difficult. Let's see. एक बार देखते हैं भाई क्या विदित कुछ कम बैक कर रहे हैं क्या. Okay. भाई यहाँ देख लेते हैं भाई. एक कैप्चर B6 हो गया है भाई. किंग टू D7 इज प्लेड. एंड अब क्या करेंगे भाई हम. एक मिनट तो मैं वो कैमरा किंग को ढूंढ ऊपर रहा ले हूँ. ले. किंग टू D5. एक मिनट मैं थोड़ा कैमरा लगा लेता हूँ. There's some move made in Tanya's game. Just want to know whether it's improving her position or is it deteriorating her position. देखते हैं. One moment. She's played Queen H3. तो Queen H3 से कुछ फायदा हो रहा है क्या? अरे और E4 कुछ है नहीं ना करने को. Yeah, it's becoming a little tough for India here. Coming back to India 1 in the open section, we have Vidit Gujarati's game now. And Vidit का पोजीशन अगर हम देखेंगे, वो ब्लैक से खेल रहे हैं, डिफेंस कर रहे हैं अगेंस्ट वेस्ली सोज अटैक, क्योंकि विदित के पास IQP था जब हमने लास्ट देखा. और ये स्ट्रैटेजी जो है, eliminating the queen side pawns, is considered to be one of the best defensive strategies because you eliminate the very important queen side the pawn, especially the B2 C3 अगर हम एक्सचेंज कर सकते हैं तो ड्रॉइंग चांसेस बढ़ जाते हैं. तो इससे साथ आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ विदित होल्डिंग इट बिकॉज अब सिर्फ हमारे पास नहीं, अपोनेंट के पास भी IQP है. तो दिस इज इंक्रीजिंग आवर चांसेस टू होल्ड ऑन दिस पोजीशन, ऑन दिस बोर्ड. और ये देखो जो मूव विदित ने खेला, आई लव इट बिकॉज इट्स अ काउंटर अटैकिंग मूव, इट्स नॉट पैसिव. तो वो दे रहे हैं अपना पॉन ताकि वो अपोनेंट का पॉन ले सके. बट लेट्स सी, नाइट D5 मारेंगे तो क्या होगा, क्या है हमारे पास जो कैसे है भाई, कैसे बचेगा मेरे को तो नहीं पता. मैं नाइट B5 के बारे में सोच रहा था, पर नाइट B5 पे मैं यहाँ पे आके तब बिशप C6 खेल के मैं मार सकता हूँ. अच्छा, बिशप C6 खेल के आप यहाँ पे नाइट जैसे हटेगा, कहाँ हटेगा. नाइट B4 मारेंगे वो. नाइट B4 बॉम्बे 4. अच्छा, नाइट B4 and you want to take here, capture and then capture here, ऐसे. Yes, but yeah, still objectively we are a pawn down. So that is the only drawback I think in the game. Okay, so चैट में किसी ने लिखा है वेस्ली सो का सूट कितना ब्राइट है. दैट्स आल्सो ट्रू भाई, चमक तो रहा है भाई. मतलब ब्लू है, बहुत ब्लू है. एक मिनट. B3 is plays knight to B7. चैट क्या लग रहा है, कुछ हो पाएगा हम लोग का. IQP क्या होता है? IQP होता है आइसोलेटेड क्वीन स्पॉन भाई. ये क्वीन स्पॉन है और ये आइसोलेटेड अकेले है बेचारा, कोई और पॉन नहीं है उसको डिफेंड करने के लिए, तो उसको कहते हैं आइसोलेटेड क्वीन स्पॉन भाई. आई एम होपिंग मैं सही बता रहा हूँ भाई. हारे तो हो सकता है, ब्रॉन्ज भी नहीं हारे तो भाई बहुत ही मुश्किल हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है भाई. चलो भाई. अरे आ गया भाई, वापस आ गया भाई. ये बोर हो गया भाई. क्या चल रहा है तानिया के गेम में, कुछ हुआ क्या? तानिया के गेम में यार एक ही मौका मिला था, अब तो नहीं मिल रहा है ना. Completely lost, resigns. Queen B, King to H2 and just yeah, it resigns. Tanya has lost chat, so that means it's already half. Oh, Vidit, something happened, no? Wesley so pointed or something to Vidit, right? वो adjust बोलते हैं उसको. Adjust था. Okay. So Tanya has lost. That means it's already half, 1.5 in their favor. And Bhakti Kulkarni, if I quickly check, is also completely lost. Okay. No, I'm having a result here. Who drew the game? Vaishali has drawn. Okay. Vaishali has drawn. By the way, Bhakti, I'm still hoping she can create some complications here, because she apparently has this move Queen D8 check. Can we go to Bhakti's game quickly? Okay. Bhakti game को पेश किया जाए. Yeah, the idea being Queen D8 check, and once the king moves, I play G5, and the idea is to create a passed pawn on the H file. I think if that happens, I think maybe like this H pawn can at least वो भक्ति के पास क्वीन है भाई.
अरे उसके पास रूक नाइट और दो नाइट है रे उसके लिए. अरे बहुत मुश्किल है खेलना भाई प्रैक्टिकली. This is completely lost by the way. Let me point out. Pawns winning. क्या बात कर रहे हो सही में? Pawns ही जीत रहे हैं क्या? Pawns? यार ये गेम ही नहीं दिखा रहा मुझे. रुको. Oh, Pawns is better. Okay, Pawns is better. Value of Pawns is better. That's a good sign. रुको. Armenia में एक बार मैं चेक करूं. We can see to Bhakti's game. Let's see if she plays Queen. No guys, trust me, Bhakti is not losing. Bhakti is winning. Oh, she played Trust Queen me, F6 guys. by the way. Pawns is better. Yeah, this is a good I think from the position she was having. By the way, Beast Pie, मैं यहाँ पे एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि मैग्नस कार्लसन अपने वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच के लिए अपने साथ एक आदमी को उन्होंने मतलब हाइप मैन ऐसे एक आदमी को जॉब पे रखा था. तो उनका मतलब हाइप करता है सब कुछ हाइप करता है. मतलब ही विल गिव अ ग्रेट कंपनी एंड ही विल ट्राई टू कीप द मैग्नस कार्लसन्स वाइब रियली हाई. उनका यही जॉब है कि अच्छा गाना बजाना, मैग्नस को मोटिवेट करना, ये उनका काम था. ये काम मैं भी करता हूँ. मैग्नस हायर मी. नहीं मैं बीस्ट बाय को ये एक्चुअली सुझाव दे रहा था कि आई थिंक यू कुड बी अ रियली गुड हाइप मैन फॉर इंडियन टीम्स. Really? Like I think so because he Really? can. I think so. Yeah, I personally think so. क्योंकि ऐसे मतलब पॉजिटिव चीजें बताते हैं जिससे आई थिंक और प्लस ये तो गाना भी गाते हैं प्लस गाना रिकमेंडेशंस भी देते हैं. तो आई थिंक यस कुड बी अ गुड हाइप मैन. देखो यहाँ पे नाइट C2 D3 इज द बेस्ट मूव फॉर वाइट. पर क्या खेला है वो उसने अभी तक? कैमरा तो देखो यहाँ पे ना अभी 9 मूव्स बाकी है चैट. 9 मूव्स. ठीक है, 1.5 मिनट में 9 मूव खेलना है. बाकी जो भी कैलकुलेट कर दो इंक्रीमेंट के साथ. By the way, chat, a few updates. First of all, Armenia का for now there are some drawing chances because Valio Pons ने edge ले ली है. Second, Ronak is completely winning and so is I think Nihal also. Yes, so that update you should give us first by. Yes, let's go chat. We are going to win. Team B के जीतने के chances अच्छे हैं. Prague's game is a dead draw. I think it's going to end in a few moves. So that's a complete confirmed draw. Not over yet, but drawn. Okay. Gukesh game is, well, I think White is trying to push somehow. He's trying to just, as if dance around, but of course should be a draw as well. उन्होंने थोड़ा सा pawn sack देके king e6 लाने की कोशिश कर रहे हैं, d6 करने की कोशिश कर रहे हैं. But I think he should be able to hold this. एक मिनट देख लेते हैं. हमें क्लैरिटी चाहिए कि कौन से गेम के बारे में आप बात कर रहे हैं. ठीक है. हाँ, गुकेश. रोनक इज विनिंग. रोनक की जो गेम है बोर्ड पे दैट इज विनिंग. टाइम भी नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है भाई उनका ओपोनेंट के पास. भाई गुकेश इज विनिंग बोला. नहीं, गुकेश इज ड्राइंग. रोनक इज विनिंग. ड्रॉ ना. हां, रोनक इज विनिंग एंड निहाल इज विनिंग. गुकेश इज ड्रॉ. Excellent move, chat. Ronak, can you do Ronak's video? I think that will be important. I think his game is finishing soon. Maybe there's some element there. Yeah, 40 seconds. He just played some move. Wow, 12 seconds पे move खेला. Bishop F5 he played Bishop F5. And now Rook F3 is the best move for Ronak, I think. Wow, evaluation बार देखते हुए आप समझ सकते हैं कि कितना विनिंग है रोनक के लिए. This win can boost the confidence of Indian stars. Yes. Rook F3 Ronak. Come on, let's go Ronak. Rook F3. Oh, Rook F3. Yes. Oh, wow. Nice move भाई. पर Rook F3 पे मैं ये मार दूंगा तो भाई. हाँ, तो Rook takes. Rook takes. E6. अच्छा, Rook takes. तो अच्छा, Rook takes. तो साहिल भाई आप शायद पीयूष सिंह का मैसेज का रिप्लाई कर सकते हैं. कोच को बोलो बताने गुकेश को कि he can take draw. I think Gukesh knows there's nothing to do. He cannot an important rule भाई. तो ये सबको बताना चाहूंगा कि they have changed the rule from this Olympiad. A coach or a captain cannot participate in any of the decisions on the chessboard. So they have taken off this important feature that all the captains had initially. But इस Olympiad से वो coach cannot interfere. Coach cannot tell you to take a draw. I think that's a positive decision, yeah. I think वो उसमें there's always elements of like players should be able to decide themselves, I think. Yeah. Because that rule can be misused in many ways. Thank you, Deepa Lakshmi ji, and I'm really glad you are enjoying the commentary. Coming to the game, so what will Ronak play? Rook F3? Will he get this move? I think he has seen that move, but he's just ensuring कि सही है. And भाई एक बार भक्ति में देखते हैं. भक्ति में बहुत लो टाइम था भाई. I just want to see क्या खेला उन्होंने. Knight C2 E6. I think he should be chopped off immediately. I think और कोई option तो है नहीं ना.
Yes, bishop into e6 फिर queen h7 I think. Bishop into e6 and then what do you play भाई? Rook captures. e6. Yes, फिर queen h7 खेलना पड़ेगा, idea g5 और h3. Some practical chances are there. I would not discount that at all. Some practical chances she has. ये इंडियन पता है सेकंड बेस्ट मूव क्या बता रहा है? ये क्या मूव है भाई? पता नहीं क्यों बता रहा है, शायद h3 भाई के कैप्चर है ना, it's a capture, so when you have to capture back a piece, obviously second best move will be lost, no? हाँ वो तो obviously है ना भाई. logic yes. Okay, got it भाई, got it. Both the players down to less than 2 अबे minutes. यार वलेओ पॉन्स नहीं रे. भाई आप हमें गुड न्यूज़ बताना भाई. ठीक है छोड़ो, चलो मैं नहीं बोल रहा, कुछ नहीं बोल रहा. This is not looking clear now. तो रौनक has Let's go played back. rook f3. He has played rook to f3 भाई. Let's go Ronak. Ronak has played guys rook to f3. अपोनेंट के क्लॉक को देखो, सिर्फ 30 सेकंड है. सिर्फ 30 सेकंड बाकी है भाई. Can this be the first win? या अभी 8 मूव बाकी हैं भाई. इसका टाइम भाई चले जाए भाई लो 1-2 सेकंड भाई, 0 सेकंड हो जाए भाई. नहीं, I think this is the thing कि टाइम कम है तो ही रौनक का भी टाइम कम है. That's one more thing. So I think दोनों players को टाइम प्रेशर में खेल रहे हैं. And I think यहाँ पे already he played g6. He played the move g6 apparently. And now Ronak can simply sack on f5 and play the move bishop to e5. Wow. With the idea of rook g3. Sorry? अभी मैं बताऊंगा. then rook g3. g6 ये मारा तो bishop e5, queen g6 फिर क्या rook g3. वापस आएंगे queen h5, उसके बाद क्या? knight f4. अच्छा, knight f4 तो queen into f7 is coming. Okay. No, he's not playing it. I think. I don't think he's playing. He's not playing it. अच्छा, तो क्या खेल रहे हैं? No. I don't. If he's touching the bishop or the. He's touching the bishop. I don't know bishop, why. Yeah, bishop. Bishop h4 he played. Also a very good move. Also an excellent move actually. Queen h4 मारेंगे तो? Queen h4. Now knight g5 check is the idea. तो 2 pieces दिया ना? हाँ, but e7 मार रहा ना इसमें. कैसे? Rook attacks e7, queen attacks e7. No? Queen takes rook, knight g5, queen takes g5, queen f7. Oh, he took. Oh no, this I played. Sorry, my bad. अच्छा e7 मर रहा है. अच्छा e7 मर रहा है ना तो ये मर रहा है ना. And the rook on f3 basically prevents any mate. Yeah, perpetual because f4 square is controlled. And so this is Chad. ये देखो, this is a brilliant move according to chess.com's game review. वाह भाई, मुझे वो ब्रिलियंट क्या खेला ओपोनेंट ने क्या खेला? अरे रुको ना, ब्रिलियंट साइन भाई उसने क्या खेला ओपोनेंट ने? पता नहीं. वाह, बहुत सारे मूव्स हो गए. उसने c4 नहीं, what did he play? Oh, he played bishop e6. He played bishop e6 and Ronak captured back rook e6 and now queen takes f3. He gave away the queen. Oh. So it's winning now. Ronak is completely winning now. हाँ, तो अब ये मार देंगे ना हम लोग सीधे क्वीन. और क्या? Yeah, you can take with the queen now or even the pawn. Both are possible. कौन से? Then bishop मार दिया उन्होंने. क्या यहाँ पे फोर्स विन मिल सकता है हमें? Rook c6 पे फोर्स विन है क्या? Apparently, taking with the queen was better. That's crazy, no? But anyway, bishop 3, bishop h4, and now queen e4 is an interesting move because threatens g6 and h4. Queen e4 bishop मिल रहा है हमें free का. I think the bishop no free का. Queen e4 wins. खेल रहे. He's going to play queen e4. e4. हाँ, because it attacks the bishop and you can't give away g6, so that will be a clear win. The winning moment, I think this is going to be the winning moment. Queen e4, idea attacking on g6. Yes, हो जाएगा भाई. ये विन बहुत ही important है. एक चीज जान रखो, team 2 if they win, I think they are guaranteed of the bronze medal regardless of the results. So if they win, bronze medal confirm है उनका, regardless of what happens in other games. So that's one very important element here. जीतना बहुत important है. Yes, the opponent is tensed. You can already see it. You can see that from the camera here. His fingers, he's twitching his fingers. भाई गया था ना रौनक क्वीन उठाने के लिए almost. Yeah, he's just justifying everything he said. Yeah. He's going to play queen e4, I think. Let's go Raunak. The problem is the pawn. Yeah, the pawn is running, so he'll have to come back with the rook to stop the pawn. I think that's basically it. Queen e4, c3, queen g6 मार देंगे, queen h6 मार देंगे. No, queen e4 पहले g7 बचाना पड़ेगा ना. I think rook g7. Queen h4, c3, rook e1, c1, rook c1, c2, and rook c1, and I think you save it. So I don't see any troubles here, right?
Like I can just pick up a6 now and start pushing the a pawn actually, and there's no defense. Yes. यहाँ पे Okay, king he's and pawn less endgame than से भी 50 winning seconds होगा. now. He should play faster. Yes, रौनक टाइम देखो भाई. रौनक टाइम क्लॉक नहीं देख रहे. रौनक थोड़ा मैं तो कंसर्न हूँ. रौनक नहीं देखा. डबल अटैक क्वीन e4. अनीश का कुछ लोग कह रहे हैं, Anish लेकिन draw. अपडेट. अनीश ड्रू. अरे वाओ. Yes, Anish drew. Anish Awesome. OP भाई, Anish OP. Let's go भाई, सिर्फ अच्छी न्यूज़ आ रही है भाई आज. भाई खेलो भाई रौनक. Let's go. रौनक भाई खेल दो. टाइम नहीं है रौनक भाई. क्वीन e4 सही सोचो आप बढ़ा तो रहे हाथ. भाई रौनक कम ऑन भाई- रौनक, क्वीन e4. रौनक भाई Dude. खेल दो. टाइम निकलने के बाद मत खेलना. बहुत सारे मूव्स हो गए. Yeah, he Queen took it. E4. मैंने Very कहा good. क्वीन गायब कहाँ हो गई भाई. I got scared for a second. देखा बिशप नहीं है, मैंने कहा बढ़िया. हाँ, मैंने वही देखा. Awesome. अब इनको रुक पीछे लेना पड़ेगा ना. रुक टू E1. Yes. रुक E1, रुक C1 guys. चैट ये. Yeah, and the thing is, हम बस अब a6 pawn उठा लेंगे, and then we start pushing the a pawn. Simple plan है. रुक को distract होना पड़ेगा, and then we pick up the c3 pawn for the a pawn, and then because we have an extra pawn, we'll exchange one pair of rooks, and the queen endgame is completely winning. थोड़ा So I थोड़ा think- स्लो. भाई के पास टाइम कितना है भाई? नहीं मेरा मतलब है सिंपल सा आइडिया है. यहाँ पे आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है. यहाँ पे जाएंगे, इस पे भी अटैक करेंगे, उठा लेंगे ये वाला पॉन, फिर पुश करके जीत जाएंगे. दैट्स इट. by the way, chat, I will quickly also check कि women's team में क्या चल रहा है बाकी teams में, because that is now relevant, right? नहीं अकेले मत जाओ. अकेले मत जाओ, ठीक है भाई. हाँ, अकेले मत जाओ, मैं चलूंगा साथ में. अकेले मत जाओ तुम. देख लेते हैं. बस एक 40 मूव पहुंचने वाला है. एक और मूव खेलना है. अभी रौनक थोड़ा रिलैक्स लग रहा है. मूव्स भी खेल चुके हैं ऑलरेडी. C2 पे वो क्वीन F4 भी खेल चुके हैं. Okay, I think उठ के कहाँ चला गया रौनक? he's checking the other games. देखा, he's checking the games. Like this is I think I really like it. I think he'll come back in around 20-30 seconds. I think प्लस he's checking 40 the सेकंड्स हो 40 मूव्स हो गए भाई. अच्छा हो गए. हो गए. क्वीन F4 खेल देगा. अच्छा, मेरे को लगा डर ही गया मैं कि क्यों चला गया 40th मूव खेलेगा ना. ठीक है. अब चलो. ठीक है. So chat, let's do one thing. So in I think women's में second and third board पे we also need to receive the results, right? Because एक सेकंड भक्ति का गेम में कुछ हो रहा है. ये हाँ. I think now h3 is the only move, right? She has to play रूक E7 मेट हो रहा है भाई. mate? हाँ. Mate कहाँ से हो रहा है? रूक E7 चेक आ रहा है. King d8? Knight E6. King c8? How is it mate? मतलब अगर आप H3 पुश करते हो तब. नहीं, h3 पुश करने की बात ही कह रहा हूँ. Queen she played queen e4 check. She did not play h3 though. She played queen e4 check, but now king d2. तो रूक E7 चेक को शायद उन्होंने प्रिवेंट कर दिया है. नहीं, but I वो think भी even नहीं h3 हुआ. directly should have played maybe a better practice. I don't know. Opponent is thinking 30 seconds. उनके Yeah, but पास. she will not go king f1. No, she will not repeat. She'll play king d2. That's very obvious. She'll play king d2 or king d1. What's her plan then? I'm not sure. King D2 पे H3 decoy. h3, knight h3. हाँ, तो अभी थोड़ा टाइम मिल गया हमें. But knight h3 मर रहा है ना यार. Yeah, this is lost objectively. हाँ, it's नाइट lost. H3 मर रहा है. No, queen d5 check and king c1 पे there is queen h1 check. So king c3 only move. But yeah, king c3 is good enough. She plays king d2. Chat only moves that it works. Yeah, white is completely winning, but only moves there. Yeah. She plays queen b4 check instead. Okay. Now king c3 is no longer possible. Not possible. King c3 is not possible. That's interesting. Good try. And king c1 के बाद she will play h3 chat, I think. But अरे 40 मूव पहुंच गया ना. वो लोग चिल करके खेलेंगे. ठीक है. So now white will win chat. 40 पहुंच चुके हैं. I think white will win. अब तो दिक्कत है. हाँ. So बीस भाई एक काम करते हैं. वुमेन सेक्शन में बोर्ड 2 और 3 पे जो मैचेस हैं उनका एक बार देख लेते हैं. Why? Because I think अगर उनका ड्रॉ हो गया हारने पे भी we might just win, right? So एक बार 2-3 जो वुमेन्स बोर्ड 2 और 3 पे चल रहा है, पोलैंड, यूक्रेन, अजरबैजान, जॉर्जिया. बोर्ड So थोड़ी let हुआ, me कुछ और हुआ ना भाई. कुछ और मतलब
बोर्ड कैसे हुआ वो? नहीं मतलब तो ये हुआ वो ना? टीम बोर्ड, टीम 2 and 3. टीम बोर्ड। हाँ, So team एक बार अगर हम सारी गेम्स टक टक देख लें एक बार। हाँ, चलो बोलना शुरू करो, मैं खोलना शुरू करता हूँ। बोर्ड 1 is Nana Zagizne against Gune. That's already ended in a draw. It's a draw, yeah. So half each. Next is Khaneem against Nino, and that to me also looks like a draw. Nino कौन है? That also is a draw. Second board, Khaneem. Nino है ना? versus वो। That also is a draw most likely. They're playing on, but there's nothing to do. I'm back. What did I miss by? So हम देख रहे हैं वुमेन्स बोर्ड का 2 and 3 का देख रहे हैं, because we know if they all draw, टीम वुमेन्स का मेडल बढ़ता है, right? अच्छा, okay. तो you are our stats boy, साहिल भाई. आप सब stats हमें बताते रहे. हाँ, तो टीम सेकंड पे भी ड्रॉ होगा, थर्ड पे ऑलरेडी ड्रॉ हो चुका है. लीला अगेंस्ट गोवर इज ऑलरेडी एंड इन अ ड्रॉ, सो 1.5 ईच. एंड नाउ फोर्थ बोर्ड पे अगर ड्रॉ हो जाए तो मजा आ जाए. फोर्थ बोर्ड पे क्या सीन है अभी? लेकिन व्हाइट इज मच बेटर. जॉर्जिया की प्लेयर काफी बेटर है वहां पे. सो इफ समहाउ ब्लैक कैन होल्ड हियर, आई थिंक दैट विल गिव इंडिया वन एक्स्ट्रा, आई थिंक चांसेस. या आई थिंक एक उनका मेडल का बढ़ जाएगा. But why is she better? मेरे को नहीं समझा. Because rook is on c6. I think हमारे पास c file control है. Bishops coming to b5, 2 bishops. King side पे भी attack है. 2 weakness principle. I think you have h5 and other ideas. So I think यहाँ पे चक्कर है. So we'll see. And also one more thing. I think एक और है. That is I think ये यूक्रेन का था. Then we have एक और बोर्ड था ना? Poland against. No. जॉर्जिया अगेंस्ट हम कौन सा देख रहे थे अभी यार? यू लुकिंग एट, अभी हम लोग जॉर्जिया वर्सेस वो देख रहे थे, अजरबैजान. सो हमें यूक्रेन से पोलैंड देखना बाकी है अभी. हाँ. सो यूक्रेन पोलैंड में, बोलो यूक्रेन पोलैंड, वेयर इज यूक्रेन पोलैंड? यूक्रेन में मारिया है, मुझिचुक. मारिया. या सो मारिया में फर्स्ट बोर्ड पे शी इज ऑलरेडी वन. हाँ, शी हैज वन. सो 1-0 up for Ukraine. Second board पे it's a draw already. So 1.5 half. Fourth board पे it's already a draw, so 2-1. And third board पे Olivia is fighting for Poland. So Olivia के हाथ में सब कुछ है, लेकिन the game I think is a dead draw. So that means कि I think Ukraine will win the match. And वहां से I think दूसरी तरफ से कौन जीता था? I think यूक्रेन और पोलैंड है ना ये? नहीं, पोलैंड नहीं. पिछले मैच में कौन जीता था? पिछले वाले में आई थिंक वी सॉ. पिछले वाले में तो क्या जॉर्जिया अजरबैजान. हाँ. सो उसमें भी ड्रॉ था ना? नहीं, एक बोर्ड पे बेटर है ना वो. एक बोर्ड बेटर है आई थिंक. सो दैट्स द इशू. तो आई थिंक मोस्ट लाइकली दोनों वुमेन्स में रिजल्ट आएगा. मतलब रिजल्ट आएगा तो इंडियन टीम के लिए बुरा है. मतलब दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से. सो या. So Koneru Hampi has drawn in the no. But that's then over, I think. Then it's over. Hampi has drawn, chat. Vaishali has drawn, but the other two boards we are unfortunately lost, I think. So team women's, I think loss looks most likely. So I think we can go to the open section. Has now. Arjun won? I'll check. Arjun has won. Yes, Arjun has won this game. Sure. So Arjun is the newest player to reach 2700, bhai. That is insane. I think he's reached 2700. I'll confirm this very quickly. He has reached 2700, yaar. 2702.2. Awesome. For the first time, I think we have Arjun, Vidit, Hari, Gukesh, and Vishi. 5 players above 2700. Wow. That's awesome. That's awesome. Mr. Dodgy ने ट्वीट किया, Arjun is truly the new Gukesh. Wow, that is great news. Great news for us. All right. So I think maybe now we can take a look at the open section once and have some clarity as to what is happening. The first team. इसमें के गेम में क्या चल रहा है अभी? Vidit, is he like consolidated now?
Yeah, I think Sahil, you can share throw some light on this. So, if you look at Vidit's position, I think hum pawn down hai. But luckily for VD, the pawn is not like a A3 or A5 pawn, because a A3 pawn tha na, knights against is very dangerous. So the king, even from D6, can control this pawn. That's the good element here. So that is clearly in VD's favor. However, I think pawn up, with the it's always Wesley will push forever. I think it will not be an easy game. So I think VD can hold this. Depends on can he approach this pawn somehow. I think it will be a very long game. Jahan pe Wesley will, I think at least 50 move game chal sakti hai. Be totally possible. Okay. So I think with perfect play it might be a draw chat, but it will be a very long game. I think. So VD ka draw mante hai. Hari ka draw ho chuka hai. Arjun has won. So what's happening in the SL game? SL game में यार Shankland is better दिखा रहा है भाई. So he has managed to somehow exchange one pair of rooks. I think chat the problem is कि ये knight जो है ना D3 वाला, it has a lot of juicy squares. I can imagine this knight coming to B2, D1, E3, hopping into F5, and even A4, A5 as mentioned before. Shankland still pushing. But the main element is it's not like SL is losing on the spot. So SL can still defend this. There's hope, chat. There's hope. But the problem is Vidit also has to defend and SL also has to defend. Both defend, then India can win, right? And India wins. Yes. Okay, there's hope. There's hope, chat. There's hope. Tanya has resigned, chat. Tanya has resigned. So we go to एक बार B section में मार लेते हैं यार. Please bye. Gukesh still playing a drawn position. Not much has changed in that position. I think it's still a dead draw. Nihal against Bluba Matthias. The position has become, I think, completely winning now. Because I think Nihal is winning on the spot. Can we go to Nihal's game once? I think chat Nihal is winning on the spot. Okay, please show the game. Meanwhile, I'm updating the scores. Yeah, in Nihal's game chat, King E2 is winning on the spot for Nihal because the rook and the knight will be attacked, and the rook has to go somewhere. Wait a second, rook H1 is still there. King D2, rook H2, King E3, AB5. rook H1 में क्या है? मेरे को नहीं समझ में. Maybe H2 pawn मर रहा है. H2 pawn मर रहा है. H2 pawn ही तो मर रहा है. मेरे को तो पीस मिल रहा है ना. हाँ, but हमारा B5 knight भी जाएगा ना. Check से मर रहा है H2. So let's say King E3 for now and A takes B5. I still think after the move King D4, Nihal is completely winning. And नहीं भाई पहले D2 तो मार दो. वही मैं सोचा ऐसे क्यों जा रहा है. पहले D2, rook H2, King E3, AB5 and King D4. We don't move the rook because rook defends D3 and A3 and we play the King to D4. I think it's completely winning. And Yep. One moment, we're down on cameras. I think Sahil by battery guy. Okay. So I think this is a chance to just tell you that we are losing in the women's section as Koneru Hampi has drawn and Vaishali has drawn. Tanya has lost and Bhakti is on the verge of losing. So Bhakti has to create a miracle here, and she has to in somehow India keep too. The game alive. India too has already got 1.5 out of 2. They look good and are probably going to win. And India 3 have won a game and lost a game. So we are 1 out of 2 there. And maybe the enabling and disabling will help us in setting up the cameras. Kitna professional enabling and disabling will help us. Alright, we are back. So this is the situation. All the scores are live and updated. एक सेकंड में एक बार आराम से देखते हैं भाई. मेरे को कभी भूल जा रहा हूँ मैं यार चीजें. Gukesh अभी भी खेल रहा है ना. Gukesh still playing this on. Yes. Yeah, but I think this is White is actually trying to play. It's not Gukesh. I think it's White who's trying to push. So Sahil, is there any way in which things can go wrong here? First, tell me that. What do you think? Is there any chance? Honestly, if I just keep the rook on the 7th rank, very good point. Yes. I just don't see how we can do. So because there's no way. Yeah, I also feel and the thing is, you also need to defend the F3 pawn. If I pick it up suddenly, then
I think you will be the first to offer a draw. I think. So I think while it does not have the liberty to move rook a1, rook h1, rook h8, like itni liberty nahi hai. If I pick up f3, I am winning or at least trying to win. So I would say White is just playing on because he wants to see कि बाकी boards पे क्या होता है. तो वो देखो स्टेयर कर रहा है कैसे विंसेंट काइमर. हाँ वो इंटीग्रेट कर रहा है उसको. He is trying to make he wants black to kind of forcefully try to make a draw and make a mistake in return. Black को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. इसकी भी चेक रुक्स. एक ट्रैप मुझे दिख रहा है. अगर व्हाइट रुक b3 खेलता है तो आप क्या करोगे यहाँ पे? मैं Rakesh drawn. Really? Let me just quickly check. हाँ. Prag was playing on the. Yes, Prag already draw. So with this chat, Prag has drawn. I think that's the first result for Team B. That's a 0.5. That's a decent result because Prag had the black pieces and he was worse at one point, and that's a good result, especially with you pawn down ही है वो. Yeah, but he has an immediate draw. No, check, and h2 is falling. h2 गया तो फिर h pawn queen कर सकता है. So, but chat, I think we are completely winning on Ronak's board and also much better on Nihal's board. So I think we'll win both games. So Gukesh को सिर्फ draw करना है, and I think India 2 is set to win today. I think that's the only team which might win for India. Norway lost to Philippines. Wow. Norway का तो भाई ये tournament I think ये sympathy है. Norway से बेकार नहीं खेला किसी भी टीम ने. I think they have. I think Carlsen will be really disappointed. Yeah, I think. Do you think this is the point to offer a federation change to Carlsen, Niranjan bhai? नहीं. This is a good time to chat. पर What do you think? मैं एक्चुअली दूसरे एक मीम देख के हंस रहा था. तो क्या हुआ, एक मीम है जहाँ पे एएसएफ ने डाला ये मीम, और मीम में है कि वो मुन्ना भाई, एक सीन आता है जहाँ पे कुछ रैगिंग होता है, रैगिंग सीन, और मुन्ना भाई बोलता है अपन को भी करना है. तो वहाँ पे टाइटल यह है कि फ्यू डेज बैक गुकेश क्रॉस 2700. फिर अर्जुन मुझे भी करना है. अच्छा है मीम. अच्छा. सौरभ कह रहा है मैन इंडिया वुमेन. ये क्या भाई? मैन, अच्छा मैन कॉमा इंडियन वुमेन लूजिंग सच अ हार्ट ब्रेक. दैट्स ट्रू भाई, दैट्स ट्रू. कार्लसन चेंजिंग फेडरेशन यूएस से. अरे भाई नहीं यार ये नहीं होना चाहिए भाई. यूएसए में कार्लसन गया तो खत्म ओलंपियाड, फिर तो फॉर्मेलिटी हो जाएगा. ना जाएगा यार, क्यों जाएगा वो? इंडिया बुला लो यार उसको नॉर्वे में इतना ज्यादा वो है. एक क्वेश्चन है भाई, क्या b5 पॉन को बचा सकता है ब्लैक? आई थिंक ही कैन प्ले. नहीं कैसे बचाएगा? देखो इनका पोजीशन देखो, मतलब बहुत ही सैड दिख रहे हैं. ये देखो किंग टू प्लेड बाय निहाल. हां किंग टू प्लेड और वो मतलब बैठ गए, मतलब अरे मैं क्या करूं, मैं तो हार रहा हूं. जस्ट टू प्ले दिस कैप्चर्स king to e3. वैसे king e3 और king इस यहाँ जाने में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है. d4 जाना एक्चुअली. आई डोंट थिंक there's much डिफरेंस. ओके. king e3 ये मरेगा, यहाँ जाएंगे और यहाँ जाके उठा लेंगे pawn. अमरीश, उन दोनों गेम्स रिजल्ट आने वाला है. सो मोस्ट लाइकली बोथ वुमेन टीम्स विल गो अहेड ऑफ इंडिया. आई थिंक दोनों में एक टीम इज विनिंग 2.5, 1.5. Yes, they've also reached the time control now, so Nihal should be able to win. एक बंदा गुकेश 1 लिख रहा है भाई. ऐसे मजाक मत किया करो भाई. इट्स इम्पॉसिबल भाई. निहाल ने क्या खेला है भाई, देखो तो. Whenever needed टीम के लिए. तो यार ओपनिंग कौन सी खेली? ओपनिंग को भी क्रेडिट दिया जाए भाई. यहाँ पे चैट क्यों भाई? भाई लंदन सिस्टम ओपी इन द चैट भाई. मतलब जब जरूरत पड़ी तो किस ओपनिंग ने साथ दिया भाई? लंदन सिस्टम. तो साहिल भाई, आपने कुछ समय आपने देखा कि हमने एक पोल भी किया था, उसका रिजल्ट्स भी आप अनाउंस करो कि क्या था उसका रिजल्ट. How are you? धक होने लगा है 57%. अच्छा फिर कौन था पोल है? नहीं वो लंदन सिस्टम का. डू यू लव? अच्छा उसका रिजल्ट क्या है? मुझे दिख ही नहीं रहा यार. तो रिजल्ट 52:48 था. ओह. एंड आप देख रहे थे शायद कैमरा में मैंने दिखाया सबको कि यू नो अपोनेंट रुक h1 खेलते हुए बहुत ही डिसअपॉइंट लग रहे थे. उनको लगा कि अरे अब तो मैं हारने वाला हूँ. हाँ. और आप इन मुकेश इस गेम में. मुकेश कौन है रे? मुकेश कौन है भाई? अरे हाँ, साधवानी का गेम ऑलरेडी. He won already. Sadhwani has won chat. Awesome. So India 2 takes a 1.5 lead in this tournament in this round, and with this they have great chances to win today. इस क्वेश्चन में रिजाइन क्यों किया? Because king खुल गया ना अब. Now it's
वो king खुल गया. Now it's king f3, king h2 and rook g1 should be made soon. So with this chat, great game by Ronak. Yeah, great game to strike on demand. Beautiful game by Ronak. Completely outclassed his opponent right from the opening itself. Starting से ही better थे वो. Let's go. And now we have Nihal Sri and Gukesh playing. Gukesh ka draw I think looks very likely, and that would take India to 2 points. And Nihal is completely winning. And with that, India तो मतलब जीत रहा है ये. या उनका टाई ब्रेक भी इंप्रूव हो जाएगा. 3 points मिल सकते हैं आज. लेकिन द क्वेश्चन इज भाई अब लेट्स क्विकली गो टू देन आर्मेनिया का गेम क्या चल रहा है. हाँ, एक बार वो देख के आते हैं क्या चल रहा है. आर्मेनिया के एक प्लेयर का नाम बता दो कोई. सो आर्मेनिया के प्लेयर्स का नाम, हाँ सर्गिसियान, गैब्रियल लिख दो पर आ जाएगा. सर्गिसियान गैब्रियल. हाँ हो गया, चलो मिल गए सारे गेम्स. ओके तो ऑलरेडी 2 गेम ड्रॉ हो चुके हैं सर्गिसियन के गेम में. He's completely winning. So अब सारा गेम सेकंड बोर्ड पे आता है ना. Oh, he already won. He already won. Wow. Resigned. And सारा अब मतलब गेम 2 पे आता है भाई कि अगर ये Valeo Pawns OP in the chat भाई. Valeo Pawns OP in the chat. सब के सब चर्चे लगा लो भाई. पोस्टर लगवा लो भाई Valeo Pawns के अपने घर पे भाई. Valeo Pawns has to win today. अच्छा. Valeo Pawns OP in the chat भाई. बहुत बड़ा फैन हूँ मैं उसका भाई. बहुत बड़ा फैन भाई. जल्दी से चैट भाई पूरा स्पैम कर दो. Valeo Pawns OP, Valeo OP, whatever it is. रोज बेचारे 1-1 घंटा दूर से आते हैं खेलने के लिए. इतना दूर से बहुत मेहनत कर रहे हैं. He deserves a win today भाई. वाह. So यहाँ पे मूव क्या है भाई व्हाइट के लिए. In fact, I would rather prefer black to be honest, but still, let's hope for the best. So एक बार हम अब उज़्बेकिस्तान की गेम देखते हैं. क्यों? हाँ, उज़्बेकिस्तान का एक प्लेयर का नाम बताओ. 2 का ड्रॉ ऑलरेडी हो चुका है. थर्ड बोर्ड का है बेंजामिन बोक. ओके, अब्दुल सत्तार ड्रॉ. उनके ऊपर जो वैन फॉरेस्ट के थे उनका ड्रॉ. बॉन बेंजामिन का क्या हुआ भाई? I think Benjamin Boak has good chances to draw this game if he plays Rook G3, and I think he will. He has good chances to draw this game. Rook G3 खेलना है उनको, और उनको फिर A4 खेलना है, और ये Rook G6 खेलना है, and सारे pawn बचा के रखने हैं. He has good chances for a draw here. Can we go to the final game? Max Vermadam, does he have any chances? कौन सा गेम? Apparently no. मैक्स का. अबे यार ये मैक्स हार रहा है यार. मैक्स क्यों हार रहा है? मैक्स तो अच्छा 2 पॉइंट डाउन है यार. मैक्स तो यार मैक्स कैसे जीतेगा? मैक्स कांट विन यार. ड्रॉ ही कर ले. ड्रॉ ही चाहिए. पर कैसे ड्रॉ करेगा? सर पीट के मेरा यार. 2 पॉन है यार. पॉन मजाक है. ओपोनेंट प्लीज G5 खेल दे एट द करेक्ट मोमेंट भाई, हम ताकि दोनों पॉन उठा पाए यार. हम नाइट भी नहीं मारूंगा, आई प्रॉमिस. अरे यार एक नाइट अपना सैक मार सकता है भाई एक इंटरेस्टिंग टाइम पे वो फॉर द 2 पॉन्स. दैट इज आल्सो ट्रू. नहीं होगा यार, लेकिन वो इतना now you can't even take b4 because of knight d5 check. बढ़िया खेल रहा है वो. Chad, as it seems like Alexei Shirov disappointing us tonight. He has been in horrible form in this last 2 rounds, blundering in both games actually. I think, if I'm not mistaken, at least a few rounds I've seen him lose. So yeah, I think with this India के chances बहुत कम होते हुए. किस कैटेगरी में? ओपन सेक्शन में, because अब I think ब्रॉन्ज के लिए फाइट कर रहे हैं हम लोग. अच्छा, ऐसा बोल रहे हैं. And the worst part is, even if India A wins, they might not get the medal. क्यों मुझे ये डिटेल्स बताओ. एक मिनट, Because slowly if Armenia बताओ. wins, Armenia किससे जीत रहा है? Armenia is winning against this Netherlands. नहीं against Uzbekistan. नहीं. Against Spain. Okay, so they are confirmed of a medal. We don't know the color yet. Because But they will Uzbekistan be is 1 also in point the ahead, race. no, from India too. All right, let's say gold is gone. हाँ. Now coming to Then it is Uzbekistan. Uzbekistan against Netherlands. Uzbekistan is winning. By how many points? By 2.5, 1.5. Arey, then So yeah. both will win, and they will go to 80. I think 19 points. And So then India too Uzbekistan will go to will 18 be points. उज़्बेकिस्तान को मिलेगा ना फिर गोल्ड. हाँ, आर्मेनिया को मिलेगा Uzbekistan gold, Armenia silver. Then India too will win bronze, and India will come 4th. Even after winning today against USA, even if they win. That's just really sad, to be honest.
All right, coming. Let's focus on the winning moment of Nihal Sarin. I really want to get this with the camera because opponent is also really expressive. We might see some reactions here as the game is going towards a win. Yes, so this is the one, the winning plan executed by Nihal Sarin. Go with the king towards b5 because that is where you have 2 pawns waiting to shine. And we have some moves, so let's get to the moves. Oh, there is one plan though, black has. I think rook h3. What do you think of this trap? Yeah, it's interesting with the idea of h4. हाँ, एक मैंने भी सोचा था h3 with the idea but of I think h4. the issue is it's just one pawn. I can simply start pushing a4 and I don't care about it. He plays rook h3. भाई बिस्पाई हम सही सोच रहे हैं. वो तो ठीक है, but ये pawn मार के फिर भी मैं जीत जाऊंगा यार यहाँ पे. अच्छा, let's play against b5. King into pawn, मारो भाई. खेलो भाई. मार दिया भाई. But I think even Armenia wants Uzbekistan to draw, no? Yeah, could be. and Uzbekistan does not care, yeah. So Armenia, please pray for Uzbekistan drawing. भाई लेकिन ये win बताओ मुझे पहले. I think I just push the pawn, no? hg3 खेलो भाई, खेलो. हाँ खेलो. Push the pawn hg3. a4 नहीं क्या खेलोगे? अभी a4 के बाद a5 थोड़ी. रुको, a5 नहीं खेलेंगे मैं. रुको भाई. अरे रुको भाई. अच्छा हाँ, खेलो. hg3 rook c1. g3 rook c1. अच्छा. hg3 rook c1. हाँ, c1 जाके यहाँ पे बैठ जाने का. उसके लिए तो हाँ, उसका एक ही पॉन है ना. उसका किंग लाना पड़ेगा तो क्वीन कर लेंगे भाई. तब तक क्वीन बना लूंगा मैं. अब खेलो g2 rook g1 and it's over. Great technique. g2 g1. Only if it would get us gold चाहिए. Nobody can stop. कोई ना, चलो क्या कर सकते. अब तो वो है कि टाइम प्रेशर भी निकल गया ना यार 40 मिनट वाला. अब तो बस वो है कि आधे घंटे के बाद अब देखते हैं सब टाइम प्रेशर में कोई गलती करे तो मुश्किल है वो. भक्ति and the thing is कि एक बार he wins, the Gukesh game doesn't matter, no. India wins anyways. So once he loses, I think उनके opponent भी draw ऑफर कर लें Gukesh को. He will also not play on because 2.5 हो जाएंगे. So once Nihal is winning, I think his opponent, Gukesh opponent, also offer a draw. So we got 3 points. Wow, that's a great performance. I mean, great performance posted by the Indian. Yeah, I think India too definitely deserves the medal. I think there's no doubt. Maybe they deserved more. But okay, I mean, there's only so much you can do. And in this position, I'm really hoping White plays Bishop B2. Bishop B2. Arre. Really hoping. Accidentally she would touch the bishop, puts it on B2 accidentally. That would be really awesome. Only if that is possible. बिस्वा अभी आप ऑब्जेक्टिव बन गया. ओनली दैट वाज पॉसिबल. पहले बोलते थे हाँ अरे क्यों नहीं खेलेगा भाई, आप बोल के तो देखो. बिशप B2 से वेरी डम मूव ना यार. अब आ गए आप हमारे लाइन में. जब मैं बोलता था नहीं भाई ऐसे ब्लंडर्स होते नहीं है, आप में बदलाव दिखा दे रहा है. पूछते थे ऐसे ब्लंडर बताओ भाई कुछ यहाँ पे क्या ब्लंडर. तो मैं बोलता ये खेल ले फिर. तो 20 बाय में बदलाव दिखा. नहीं ऐसा कुछ नहीं भाई. आप जो क्वेश्चन पूछो उसके अकॉर्डिंग आंसर करेंगे भाई. Knight capture S3 and queen to D6 is played. Yes, queen D6 has been played. So this is, I mean, going down. Sahil bhai, based on all our ये खेला तब भी कुछ नहीं हो रहा. अरे यार ऐसे कैसे यार, मेरे मूव्स कुछ तो गलत होगा ना इसमें. अब तो ये खेल दूं मैं. तो रुक h6 है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नाइट f4 भी है. And then rook to g7 check, thinking कुछ हो रहा है. And then you do this and you are completely won. एक 2 मिनट चैट पढ़ लेते भाई. और हमने गिव अवे क्वेश्चन पूछा नहीं. शायद this could be the last giveaway. We never know. So maybe we have to use a good question this time. मैं नहीं रोया. शंतनु श्रीवास्तव बोल रहे हैं. अच्छा ठीक है भाई. Is India getting gold, silver और bronze? गौरांश शायद bronze मिल सकता है, silver मिल सकता है. I think दोनों में bronze मिलेगा chat. Both categories bronze is most likely now. I think women's में gold मिल रहा था. There was some compensation there, but अब वो भी नहीं मिल रहा है यार. So it's just kind of sad. Yeah, okay. So Sahil bhai, coming to your stats, can you quickly check if we already have some confirmation about who is winning which port prize?
Board price. I think we already saw, no? I think Tanya ka board price has taken a dip. That is one problem. Let me quickly check if there's somebody right behind her. SL completely lost board right. So I think this is a good time to take a break from the India women's and check India A. SL is completely lost. ऐसा बोल रहे हैं, पता नहीं सच है या नहीं. Oh, this is over. सच में. सैम शैंकलैंड ने ही काम खराब कर दिया भाई. किसने सोचा था भाई? जिस बंदे को हम इतना टेम्प्ट कर रहे थे खेलने के लिए, उसी ने काम खराब कर दिया रे. Chat, and now US is the only team which can win because क्यों भाई? क्यों? Because it will be tied 1.5 each, and if they draw, nobody gets the medal. But Actually, winning nobody plan gets the medal anyways. माने मुझे तो विनिंग प्लान इतना ऑब्वियस नहीं लग रहा है. क्या है आपका विनिंग प्लान? Rook A6 check. King C5. मेरे पास सीक्रेट प्लान है. Rook A6 check, King C5, Rook H6 मार दो, Rook B3 check. खेलो भाई. अच्छा, you want to give checks क्या constantly? नहीं मैं चेक नहीं दूंगा. फिर क्या करोगे? I'll pick up H6 then. हाँ मार दो. अभी जो ओरिजिनल, अभी जो करंट पोजीशन है उससे खेलो. Yeah, we played the check, no? क्या Rook B3 check अभी आपका मूव है? नहीं, करंट पोजीशन ये नहीं है. ये है क्या करंट पोजीशन? करंट पोजीशन तो इन्होंने Rook A6 check No, दे दिया. I'll do one thing. I'll first push the A pawn because ताकि आप वो check के साथ pawn ना मार पाओ. ठीक है, Rook B3 check खेलो. इतना भी इजी नहीं है भाई. या King C5 खेला ना? हाँ, so A4, Rook B3 check. अच्छा, maybe it's not that easy actually. Check कर रहा है, constant check कर रहा है. अरे King E7 क्यों खेला SL? Oh no, this is not looking good. I want activity, so I want King C5, but this is lost now. I don't have anything to play for. The reason I wanted King on C5 is because of this trap I had set for Sahil Tickoo. But what is Rook? But King E7 is just useless, no? Now I just pick up H6 now. This was my trick. कि कुछ हमें एक्टिविटी मिले King D4 जैसा, लेकिन मे बी दिस इज नॉट इमीडिएट. फर्स्ट हमें चेक देना पड़ेगा. So this was my plan. But King E7 a vital mistake. And now the crazy fact, but the thing is, both teams are playing for nothing. To be honest, there is no medal available actually. Yeah, if कोई we medal lose, ही नहीं है. nothing happens. So it's like, it doesn't matter. Like whoever wins gets fourth, and who loses probably gets sixth or fifth or whatever it is. Quick look at Vidit's game. Shantanu Srivastava is saying he's praying for a pre-move, but that's a rare occurrence. It can happen once in many years. Rare occurrence plus Sam Shankland was defending at that time. अभी इधर तो डिफेंडिंग कर रहा है, इधर तो वही he is in the driving seat. तो what about this position by end game अगर हम देखेंगे तो is there a winning plan for white here? I don't think so, because first of all, as you can see, the knight on b3 and the bishop can come to b5, so there is no path for the white king to come in. That's the first thing. I don't see a path because d2 is controlled, c1 is controlled, d3 can be controlled. Second, knights are kind of doing a good job, but the knight on e3 moves, I play king d5, and that's, I think, close to a draw again. So knight c2 moves, I pick up the d4 pawn. So I don't see a clear plan for white, but I think you can slowly try to, घुमा के खा सकते हो. So Dominguez has lost to Arjun, so we have got 1 point there. Hari Krishna has drawn, so we have got 1.5 there. And Wesley is, Wesley with it is draw, so 2 points. So that means it's going to be a 2-2 clash. Exactly, and nobody benefits from this, I think so. अरे ऑल राइट. सौरव कुमार यूएस थर्ड नहीं आ सकता क्योंकि हम इंडिया 2 से थर्ड आ रहे हैं शायद. ऑल राइट, नाउ लेट्स गो एंड हंट अवर बिग विन. वेयर इज अवर बिग विन कमिंग? Nihal, Let's go. Let's go to Nihal Sarin's game, who has been the Rahul Dravid of our team, as RB Ramesh put it once. Okay, bye. यहीं पे. All right. So let's get Nihal Sarin's game.
वही हो हुआ चुका है भाई, भाई। एग्जैक्टली जो हमने सोचा वही हुआ। नाउ जस्ट कम हियर एंड चिल एंड यू कैन जस्ट पुश फॉरएवर आराम से। क्वीन बनाओ, खत्म करो, गेम जीत गए। यस, सही बोला आपने। वाह। ओपोनेंट रिजाइन क्यों नहीं कर रहा, मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा। हो गया, रुक C1 खेल लिया, देख तो लिया, अब सब कुछ आता है उसको। By the way, Bhakti is also lost. Just confirming. I force now. Okay. So, Beast Bhai and Sahil Bhai, I think this is a good moment for both of you to continue. What do you think? बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल। क्या ही Okay. कंटिन्यू करे, अब आप तो जा रहे हो, रुको भाई, अभी आप बैठो इधर, देखो ये सब। मैं तो ओके ठीक है, आप दोनों बोलते रहो, मैं अपडेट करता हूँ कुछ। क्या अपडेट करना, बताओ मेरे को। Scores, वो I जो guess. आपको फाइनल स्टैंडिंग्स दिखाने पड़ेंगे ना, उसका ग्राफिक मैं ही अच्छा, करता अच्छा, हूँ अच्छा। हमेशा, तो आप वो बात अच्छा। करते रहो, पोजीशन को देखते रहो। निरंजन भाई क्या क्यूट ही है भाई, कितना कुछ कर सकते हैं। ओके भाई, करो। तो यू बोथ कैन प्लीज कंटिन्यू, आई एम हियर विद माय कैमरा, बट प्लीज कीप शोइंग सम गेम्स टू द चैट। निहाल के ओपोनेंट रुकेश को खेल दिया है। I think what he's trying to do is take both the pawns, but Nihal has only one move to win now. ओनली Only वन one मूव, move. क्या है? Yes. Chat, important moment. What is क्या the है only ये? move for Nihal to win? रुक तो जीवन। Yes, that's the वाह, only रुक move. एफर नहीं Everything चलेगा else- क्या? Everything else is a रुक draw. F1 Ooh, क्यों रुक जाना? एफर इज अ ब्लंडर बिकॉज ऑफ, दिखा Chat, दो भाई, I'll back you ब्रिलियंट। one second. अरे रुक एफर इज अ ब्लंडर भाई, आपको पता है क्यों? हाँ, I will नहीं just नहीं push, नहीं ना? नहीं 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 नहीं, बिकॉज ऑफ रुक क्या? इनटू F4। रुक इनटू F4, अच्छा हाँ, अच्छा हाँ, ये भी है, ये सोचा मैं था, मेरे को लेकिन लगा हो कि गया work है, नहीं कर निहाल हैज सीन द ट्रैप रहा। एंड ही हैज प्लेड रुक G1, अपोनेंट ने मारा ये, और देन ही हैज प्लेड रुक G4। Yeah, and now there is nothing at all, absolutely nothing. मैं एक्सचेंज कभी नहीं करूंगा जिंदगी में, यहाँ पे बैठ जाऊंगा F3 पे और इसको पुश कर करके क्वीन बना लूंगा भाई। यस, गुड गुड आइडिया, गुड आइडिया। सो गया क्या उसका ओपोनेंट निहाल का? हाँ? मैं रिजाइन करके जाना भाई यार, ओपोनेंट जी हेलो, क्या ट्राई कर रहे हो आप? जाओ भाई, वी विल हैव लेस गेम टू सी देन। So yeah, we are still waiting resignation here, and which may come any moment. I think in the next 1 minute. क्या बोलते भाई? क्या? सॉरी, कितने टाइम में रेजिग्नेशन? हाँ रेजिग्नेशन बस ऐसे रुक F3 खेलने वाला है, हाँ। और जब तक क्वीन नहीं बनाया तब तक ये रिजाइन नहीं करेगा। क्वीन ये A7 पे रहेगा, पॉन तब तक ये खेलते रहेगा, लग रहा है ये बंदा। By the way, किसी ने हाँ। सोचा यूएस ने इंडियन टीम को हरा दिया वुमेन्स में, उनको हम्म। कुछ नहीं मिलने वाला। क्या? They will not even get any medal. फालतू में फेल दिया भाई हम लोगों को, मतलब इससे क्या भाई, ये क्या मतलब था भाई? अच्छा। रेटिंग पॉइंट्स भाई। हाँ, of course. Okay, Nihal will win this. रुक F3, और क्या, और कुछ है क्या? हाँ, Rook F3 looks very normal, I think. देख लेते हैं भाई, इंजन क्या बोलता है भाई। रुक F3, रुक A3, everything is fine according to इंजन। Yeah, Nihal wins chat, team 2 wins, so that's very important. एक बार ये जीत जाए तो at least तो हमारा विंसेंट- ब्रॉन्ज कंफर्म हो जाएगा। हाँ, विंसेंट भी ड्रॉ ही दे ही देगा भाई वो, फिर उसके बाद कहेगा कि चलो भाई नहीं कर रहा मैं पुश अप। Yeah, by the way, Bhakti is mate in 6, mate in 5 now, so Bhakti is lost. चलो देखते हैं भाई, कैन एनीवन फाइंड मेट इन 6? Guys, try and find mate in 6, guys. Let's go. Yeah, you can see the disappointment on the face of the German opponent. He is a little disappointed with the way things have. But you know, credit to Nihal Sareen. पहले से कितना dominance से वो खेला आज निहाल in the London system, by the way. So we may require some enabling and disabling. Sorry, Vince bhai. कर रहा। Okay.
So yeah, Nihal Sarin relaxed, about to get his win, very important win. भाई सोचो how important this win is for India. I mean, I think it's of great relevance. We are getting a medal with this. It's a great deal for Team B to get a medal. भाई साहिल भाई ऐसा लिख दे तो ठीक रहेगा क्या? निहाल सरीन लाइक अगर जब जीतता है तो निहाल सरीन विनिंग द गेम आल्सो इंश्योरिंग अ मेडल फॉर इंडिया. श्योर हो आप? इंडिया मेडल हो गया. ओके, भक्ति का रेजिग्नेशन आ गया गाइस. आई थिंक थोड़ा वेट कर लेते हैं. वेट कर लो भाई, आराम से. जब आना होगा तो आ जाएगा भाई. कुछ पता नहीं भाई, लास्ट में मोमेंट में पता चला कि हमारे टाई ब्रेक्स ही खराब थे भाई. अच्छा ऐसा है तो ठीक है, कुछ भी हो सकता है ना भाई. ओके ओके. व्हाट इज निहाल थिंकिंग? आई वांट टू नो. नहीं निहाल कुछ सोच नहीं रहे हैं, शायद सोच रहे हैं. खेला नहीं ना. यस यस यस, ही इज थिंकिंग. तो बीस्ट भाई, आपको लास्कर का रूल पता है? व्हेन यू आर इन अ विनिंग पोजीशन क्या करना चाहिए? रूल तो नहीं पता, पर विनिंग अगर है अपन तो चुपचाप से गेम खत्म करो भाई, नॉर्मल चेस खेल के. अच्छा भाई साहिल भाई, आप जानते हो ये रूल? SOYH. I think when you are winning, तो the prophylaxis is something which I've learned really helps. तो अपना counter play रोकना, because once you stop your opponent's counter play, then it's over. ओके. इस रूल का मतलब मैं भी यही सोचता हूँ अभी तक भी. आई ऑल्सो फील दैट यू नो prophylaxis is something which is very important when you are winning. But you know, one international master who was a coach when I went to World Youth, वो बता रहे थे कि of course prophylaxis is important, but you should not make it as your life, because prophylaxis करते करते you might become very defensive. तो we have to have that golden mean, balance maintain करना पड़ेगा between prophylaxis and you know aggression. But लास्कर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने किड्स के लिए बहुत ही अच्छा सलाह दिया है कि अपने हाथों पे ऊपर बैठ जाओ. सिट ऑन योर हैंड्स व्हेन यू आर विनिंग. इसका क्या मतलब हो सकता है? पता नहीं भाई. ताकि आप मूवी मत खेलो. हाँ, मूव खेलो मत. ऐसा टेम्प्ट हो गया आप, स्पेशली इन विनिंग पोजीशन, कि जल्दी जीत जाए. लेकिन डोंट बी इन दैट हरी. You don't have a flight to catch. You have to finish the game. पर you know, मेरे लाइफ में ऐसा हुआ था कि I had a flight to catch and I could only catch the flight if I finished the game early. फिनिश किया आपने? फिनिश किया, but it was in my opponent's favor. मेरा भी हुआ था, पता है? I was playing a match और जीतने पे I was getting a prize of I think 200-300 euros. Oh, okay. छोड़ने का मतलब नहीं है ना. तो I was मैं literally every move I played in 1 second. Every move, like I had 1 hour 30 minutes on the clock. My opponent had 18 minutes. Okay. And the push was equal, and then I realized I had to go. I offered a draw, and he took it. And I left. अच्छा, तो मिल गया आपको prize. तो and you know it's like मतलब crazy है, like इतना सोचना पड़ता है. मैंने हर एक move 1 second में खेली भाई, literally हर एक move. ये कौन सा लंदन सिस्टम खेला होगा आपने? नहीं, I think स्लाव था. अच्छा, ब्लैक से? Right, मतलब मैं वाइट था. अच्छा. He was playing स्लाव. ओके. तो आप प्राइस तो जीते? हाँ, I think 200 कुछ था, 200-250 यूरो का. ये इंडियन वुमेन टीम का मैच सारे खत्म हो गए ना? कुछ नहीं बचा ना? नहीं, सारे खत्म हो गए, लॉस्ट. नो चांसेस आल्सो. अभी वो है ना कि उनका कुछ टाई हो जाए बाकी का. दैट इज व्हाट आई एम कॉन्स्टेंटली चेकिंग. फिलहाल के लिए डजंट लुक प्रॉमिसिंग, बट वी आर स्टिल चेकिंग. तो साहिल भाई, आपसे लास्कर ने क्या बोला था वैसे कि कितने देर तक हैंड पे सिट करना है? जब तक आप तो नहीं खेल रहा है. जब तक आप श्योर हो कि विनिंग है, तो आई थिंक ही विल कैलकुलेट द विन अंटिल द एंड, अंटिल द पॉन्स गेट प्रमोटेड, बिकॉज इट्स अ क्वेश्चन ऑफ रेस. एंड रेस में क्या मैटर करता है सबसे ज्यादा? टेम्पो. किसके पास एक मूव एक्स्ट्रा है. तो दैट इज व्हाट मैटर्स. शिवाजी करे ब्रॉन्ज कंफर्म नहीं है, गारंटी है यार ब्रॉन्ज वुमेन्स का. दे गारंटी ऑफ ब्रॉन्ज. भाई श्योर हो ना? अब थोड़ा कैलकुलेशन कर लो एक और बार. हाँ, सो बेसिकली उनके 17 पॉइंट है. एंड स्टैंडिंग खोल लो ना.
हाँ वही खोल रहा हूँ। ये निरंजन भाई मैं भी सो खोल दूं, ओके ठीक है। वुमेन सेक्शन तो लोग नहीं देखे क्या? तो बेसिकली चैट उनका टाई ब्रेक इज द सेकंड बेस्ट इन दिस एंटायर टूर्नामेंट एंड दैट टू बाय अ बिग मार्जिन, ठीक है? ओके सो नोबडी कैन कैच अप ऑन टाई ब्रेक्स विद देम, जहां तक मुझे आइडिया है। एंड TV2 ये नहीं है कि TV3 है शायद, जो राइट पे तुम देख रहे हो। तो इसमें पोलैंड, अज़रबैजान, यूक्रेन एंड जॉर्जिया 4 टीम्स ऑन 16 पॉइंट्स, 1 पॉइंट बिहाइंड इंडिया, ठीक है? दोनों में रिजल्ट आ रहा है, बोथ मैचेस आर गोइंग टू गेट अ रिजल्ट क्लियरली। तो दो टीमें 18 पॉइंट पे चली जाएंगी, दे विल गेट गोल्ड एंड सिल्वर रिस्पेक्टिवली। अब बहुत सारी टीम्स हैं जो 17 पॉइंट पे आएंगी, इंक्लूडिंग इंडिया 3 कुड बी 1, इंडिया 2 कुड बी 1, लेकिन उनका टाई ब्रेक इज मच वर्स कंपेयर्ड टू India 1, India 2 or 3 and other USA and Kazakhstan. So unless by the way, what is the margin we lost to? 3-1 I think. So it depends on tie breaks, but tie break में बहुत बड़ा difference है between all teams on 15 points and in the Indian team. So it's very unlikely कि इतना tie break कोई catch up कर पाएगा। तो वो that is the main logic कि मतलब India should get bronze. इंडिया जीतेगी तब भी उनका टाई ब्रेक खराब है, they will only get 17. मैं अभी नोटिस कर रहा हूँ कि इंडिया 1 वर्सेस यूएसए ओपन में है और इंडिया 1 वर्सेस यूएसए वुमेन में है, फिर इंडिया 3 वर्सेस कजाकिस्तान ओपन में है और फिर इंडिया 3 वर्सेस कजाकिस्तान वुमेन में है। Just saw it. Just realized. 16 पॉइंट में चैट दिक्कत है, 4 ही टीम है ना, तो कितने ही जीतेंगे, 2 ही लोग जीतेंगे ना, तो 18 पे पहुंच जाएंगे, तो सिल्वर गोल्ड चला गया ना, तो बाद ब्रॉन्ज तो मिलेगा, अपने को मिलेगा वैसा सी। It's very similar to the open section, no? 2 टीमें आगे निकल गई and हमारा टाई ब्रेक बाकी में अच्छा है, तो we come. You want to go to the open standings? Yeah, let's go. Okay. Same scenario chart. यहाँ पे India 2 will win, go to 18, but Uzbekistan and Armenia will go to 19. So clearly they will maintain their lead, and Uzbekistan will get gold, Armenia silver, India to bronze, and India and USA में जो जीतेगी भी, they will go to 18 points along with India 2, but उनका tie break खराब होगा, तो उनको कुछ भी नहीं मिलेगा. That is the sad part. Yeah. And बाकी Netherlands is losing, Spain is losing, Germany is losing, England Serbia का tie break is way worse, and yeah, 1 point पीछे भी है वो, तो yeah, it's just यही रहेगा आई थिंक, जो अभी स्टैंडिंग्स हैं यही स्टैंडिंग्स रहेंगी आई थिंक 99% आफ्टर द फिनिश ऑफ द टूर्नामेंट। गाइस यहाँ पे निहाल ने खेल दिया है रुक टू F3, ऑसम, and we can see a resignation incoming very soon. बस ये पॉन को A7 तक पहुंचना है, ओपोनेंट रिजाइन कर देगा, उससे पहले वो ट्राई करते रहेगा, पूरे खेलते रहेगा लास्ट तक। USA has better tiebreaker than India A. नहीं, but India B is the one who's getting. Is one good news for Red Team B wins, ensures their bronze medal 99.9%, and that is a great deal for India. चलो कहीं से we got this +1. Great game by Nihal. And now किसी को स्ट्रीम दिख भी रही है, लैग हो रहा है भाई, दिख रहा है। I think अब वो गुकेश का ओपोनेंट भी ड्रॉ कर देंगे उनको. I think he'll offer him a draw now very soon. जोश इस डैश डे लगे हुए हैं, ये क्या है भाई? आई थिंक गुकेश का शक्ल ही दिखा देते हैं ना, ठीक है। कैन वी हैव ऐसे we are live. इट्स लाइक फाइनल मोमेंट भाई, लास्ट टाइम हम लोग देख पाएंगे गुकेश को खेलते हुए लाइक दिस इन द ओलंपियाड दिस ईयर। दिस ईयर, वैसे बोलो भाई। हाँ तो पूरा बोलने दीजिए, बोलने देंगे तो बोलेंगे हम। बाय जोश, बाय कम बैक टू योर बेस्ट मोड। I think this is a great position for black. What do you think, Sahil Tickoo? 20 बाय, लेकिन एक चीज आपको नोटिस करना चाहिए। हाँ भाई। कि ये जो प्लेयर है, सुनो ना, ऐसा निरंजन भाई मेरा कैमरा गलती से भी ऑन मत करना आप, ठीक है? ऐसे ही बातें करते हैं, आप बताओ भाई। तो विंसेंट कैमरन
भाई कैमरा ऑन को जल्दी जल्दी नहीं जल्दी भाई एक सेकंड दिखा दो। अरे यार नहीं भाई chess.com इंडिया पे हम सब यहाँ पे जागते हाँ। हैं और फुल एनर्जी जोश से yes कमेंट करते let's हैं। go निरंजन भाई। और बताओ भाई निरंजन भाई गुको शूट के चला गया। आई थिंक ही इज गोइंग टू वॉच निहाल गेम आई थिंक। और निहाल का गेम खत्म हो गया उनको पता चलेगा। यस अभी मतलब गेम तो पता हो मतलब चल गया है। एंड यहाँ पे एक चीज नोटिस करना है कि अपोनेंट इतना पॉन दे के क्यों कोशिश कर रहा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। G6 और G5 को डबल करके ऐसा क्या है। तो बीस्ट भाई ये सवाल आप इसका सवाल का जवाब आप दो। कोशिश करो कि आप ये अटेम्प्ट करो। जल्दी दो। क्या एक सवाल क्या था आपका समझा ही जल्दी नहीं दो। मेरे को। तो मैं एक और बार आपको क्वेश्चन सुनाता हूँ कि why is Vincent Keimer trying so hard giving his pawns especially on the G line in this rook endgame? What is the advantage that Vincent Keimer has if black has the pawns? तो उसका एडवांटेज ऐसे एक ही है भाई कि उसका किंग और रुक दोनों उधर है भाई। तो बढ़ा सकता है वो पॉन को कोशिश कर रहा है वो। दैट इज द ओनली एडवांटेज ही हैज। Maybe now Sahil can throw some light on this. किंग भी सपोर्ट कर रहा है ना उसको पॉन को। और वहाँ पे मीटिंग का भी वो रहता है हमेशा। यार रिपीटिंग मूव्स यार रिपीटिंग मूव्स किंग C8 हाँ विंसेंट नाउ नोज इट्स डन because he played rook G4 but even without those two pawns it's a draw actually. That's the best part. यार विंसेंट भैया छोड़ो ना भैया कितना खेलना है भाई आपको। गुकेश इज लाइक तू मार ले भाई। इज लाइक तू वो दोनों मार ले भाई चिल कर। ड्रॉ ले ही नहीं रहा भाई। विंसेंट इज स्टिल प्लेइंग ऑन। He doesn't want to take a draw. And he has just 4 minutes and still he's acting smart. Just kidding guys. Vincent भैया ले लो ना draw. No, this is Gukesh is so confident. Yeah, he knows it's a draw. दोनों pawn दे दिए। I think this is also great from Gukesh ki after that tragic loss yesterday he came back and played solid chess today and did what the situation demanded. He played a very solid game and at no point I saw him having a worse position I think. By the way, Valeo Pawns has drawn chat and with that Armenia has gone ahead of Team India thanks to Alexei Shirov's blunder and Armenia goes ahead confirmed. They have crossed Team India and they are confirmed of silver medal. Yeah, these are the final moments. You are seeing the game between Gukesh and इतना मातम पड़ा हुआ स्ट्रीम में क्या हुआ मतलब Yeah, we are just waiting. Beast Bhai, come back to your original position as we are going to the final moments of this Olympiad stream. We have done 11 days of consistent streaming with Beast Bhai and Sahil Bhai. We also had some interesting guests join us in between, and now we are on the verge of winning this match. I mean, India too is going to win against Germany. The match victory is already ensured thanks to the win of Nihal Sarin. And yeah. Nihal Sarin OP, right? What a Yes, player, I think we should have what a Nihal team Sarin player. OP in the chat because I think he was unbeaten, right? Can you Yeah, quickly yeah. confirm, Sahil Bhai? I'll quickly check. Yeah. Please confirm so that I can accordingly put it in the social media. एक second.
played flawlessly भाई, एकदम हर बार टीम के लिए खेला. What a great guy भाई. Nihal Sarin OP. Yep, he's undefeated with 1, 2, 3, 4, 5 wins and 1, 2, 3, 4, 5 draws. 5 wins and 5 draws. Yeah. Yes, he did not play in the second round, so it's 5 wins and 5 draws. Wow. What a player. What a player भाई. Incredible. And he's gained 13.5 rating points. He's gained like around, I think he will gain lucky around 17, 18 points from this. From this event. Has been truly a team player. I think White will push for a long while here. ये बहुत लंबी चलेगी, है ना? भाई जबरदस्ती का खेल रहा है यार वो. Okay, Vidit is drawing chat, by the way, I think. So that means US and India will tie. And that basically means ki bhai, it's drawing immediately for Vidit. Can we switch? Yeah. Yes. Let's quickly check with its game. So Bispa, I hope you are in your original position and we are going to switch. Yes. Yes भाई. Bispa was doing some hanky-panky things. क्या है भाई? All right. देखा आवाज़ भी वैसी निकल रही है. So basically h5 is zugzwang now. If the king moves, I pick up the pawn. If the knight moves, I pick up the pawn. If knight e3 check, king b4 attacks the knight. So basically the d4 pawn is lost. I think I don't see a way to save it. Do you? H5. Okay, that's a nice move. I think now the king cannot move, the knight cannot move. Yeah, it's a draw chat. So what is it called? Bispa. Zugzwang. Correct. अभी बोला मैंने literally copy paste मारा बीसबाई ने. भाई zugzwang किसको नहीं पता भाई, जबरदस्ती भाई. अब सही है. चैट सबको पता zugzwang, बताओ भाई कितने लोगों को पता है भाई. चैट में कोई ऐसा एक बंदा है इसको नहीं पता भाई zugzwang. अगर एक भी बात पता है भाई तो फिर क्या ही चेस के देख रहा है भाई, मत देखो भाई. वैसे ही बड़े खतरनाक लोग देख रहे हो फिर वो मत देखो भाई. By the way, this endgame that Gukesh has, it's a very important theoretical endgame and something that we all should know. And all those who are like planning to learn rook endgames, you can go to chess.com/endgames and try that rook endgame. There is a chapter on this, and there's also 100 endgames you must know. It's a very nice book if you want to study endgames. And also there is a challenge on Niranjan bhai. Yes, bhai. He has to. आज करोगे? चैट में इसको नहीं पता. मैं आज तो रेस्ट लूंगा भाई. It has been a really. कल करोगे? मैं करूंगा अगस्त में. कोशिश तो मैं अगस्त में करूंगा और जब मैं रिकॉर्ड तोड़ूंगा. नहीं भाई साहब इतना लंबा टाइम लगेगा आपको. मतलब मैं जब अटेम्प्ट करूंगा और जब अटेम्प्ट्स के बारे में अपडेट देता रहूंगा. हमारा तो व्हाट्सएप ग्रुप है तो मैं आपको जरूर देखो दूंगा अपडेट. Sindarov, you know, he's so young but playing perfectly for the team. So in his game, like he had a better position throughout. He was winning at one point, but he spoiled it, and then it was equalish, and he realized that Vamadam is completely lost. His teammate is winning, so he takes the repetition immediately, and now they have drawn. So with this chat, Uzbekistan will also win. I think the final board is completely winning with 3 draws. So Uzbekistan will get gold, Armenia will get silver, India 2 will get bronze. Now India 2 का performance is crazy, man. To get bronze, वो गुकेश ने तो अच्छा खेला तो हम इतना disappoint हो रहे हैं. But it was not clear they would get a medal, right? At the start of the tournament, if somebody told us हम कहेंगे बहुत बढ़िया है bronze यार team 2 के लिए, मतलब it's crazy. So I think they've played pretty well for the team than the rating they have. Yeah. And even Vidit and Arjun are unbeaten by played really well, I think both. Oh, acha, that's a good point you are making. Arjun is unbeaten. Vidit is also unbeaten. Wow. Arjun, I am not sure if he's unbeaten. Yes, unbeaten. मेरे सामने है. Unbeaten है. He was lost in a couple of games, but he came back. Okay. And Vidit is unbeaten, of course. Wow. वो जो feeling, you know the feeling you get when you are unbeaten in a tournament, उसके बाद जो tournaments आते हैं ना, उसके बारे में बहुत confidence आ जाता है. Especially, I mean, this is something from my experience. If you are not Vidit. हाँ, I don't know भाई. मैं generally बोल रहा हूँ. विदित को confident आने नहीं देता ना लोग कोई. नहीं कि unbeaten क्या draw क्यों किया? Unbeaten छोड़ो भाई तुम. Draw क्यों किया? अरे. बेचारा विदित.
Chat, they're already repeating moves, I think. Now this will be a draw, I think. Knight b1, king c4, and king c4 played by VD. So this will be a draw. And Wesley So knows, like he needs to win this, but I just don't see any way he can win this now. It's over. And SL is completely lost था, but अभी देखते हैं क्या सीन है. SL कुछ जादू कर देता भाई, but let's have a look. Doesn't look happening, guys. Doesn't look like it. Yeah. A5 pawn को कैसे बचाओगे भाई? A5 बचाना क्यों है? E pawn करते हैं ना? E6 rook A5? नहीं, king f6 first. King f6 rook A5? Then I think E6. Rook A8? I mean rook A1. Then I mean rook G8. No, rook A1. Rook A1 I mean. Rook A1. Okay. अच्छा rook G8, king C7, E7. Mimicking Niranjan on stream. क्या करे भाई, बोर हो गए यार. बोर हो गए यार. I am bored, man. ठीक है भाई, ठीक है. Tickoo. Okay, let's Actually, go. 8.5 by 11, dude. That's impressive. That's really impressive, right? Because 8.5 by 11 is really impressive. Okay. So let's come to the game of Mukesh and let's see some final moments. I really want to see the draw. Yeah. लेगा ही नहीं भाई. आप देखो तो 50 मूव तक खेलेगा विंसेंट भाई. उसको कोई काम दाम नहीं आज. He's like flight मेरी कल की है. घर जाके मुझे तालियां मिलनी नहीं. यही बैठा रहता हूँ भाई. Gukesh should take a draw and not push with the pawn down. India 2 has already won यार. अभी जो करना है करे भाई. जीलन दो अपनी जिंदगी उसको. एक सेकंड, why did he play rook a2 though? Usually you don't play this stuff, no? Like, say, don't give the long side ऐसे opponent. But okay, he's fine. He can now give a check. For field or draw में चला जाएगा ना? I think he's going for the field or draw. Yeah, makes sense. What about rook c4 now? Rook c4, rook h2. Same thing. I think he's not even going for that draw. Field or draw के लिए जा रहा है. He's like तू rook h4 खेल, मैं check दूंगा and then I'll play rook b6 or g6 and it's a draw. ठीक है, so it's an immediate draw actually. I think there's no way to save it. ऊपर आते ही draw ले लेगा. Just waiting, chat. Why does he look 45 years old? किसकी बात कर रहे हैं यार? Why does he look? विंसेंट को बोल रहे हैं. विंसेंट तो बच्चा है यार. अभी अचानक से उसको प्यूबर्टी हिट हुआ है वो. जस्ट कुछ टाइम पहले. सच बता रहा हूँ, पहले तो एकदम छोटू सा था. एकदम क्यूटू सा बैठा रहता था भाई. हाँ, 20 चार सिंह तो बचपन से दिखाया है. मैं देखा हूँ ना यार उसके गेम यार. बहुत ये चर्चा में आ गया था ना. ये सब बड़े बड़े लोग थे, मैग्नस वगैरह, ये सब खेल रहे. तो उसमें एक अकेला विंसेंट खेलने गया था और विंसेंट का स्कोर बहुत ही बुरा था उस टूर्नामेंट में. इवन दो ही वाज विनिंग इन लाइक, ऐसा विनिंग नहीं, बेटर बोले, पोजीशन उसका हमेशा बेटर रहता है. पर सब जितने भी एक्सपीरियंस प्लेयर है ना, वो लोग ऐसे सब टाइम पे उसको they've drawn finally. बढ़िया भाई. So with this, team 2 wins 3-1. That's awesome. Oh, they're drawn, guys. ये सेम पोजीशन सैम शैंकलन की गेम में भी है, बट वहां पे किंग इज कट ऑफ ऑन द लॉन्ग साइड. कितना डिफरेंस पड़ता है. एंड एक प्यादा तुम्हारी गेम पूरी खराब कर सकता है भाई. एक ही प्यादा चाहिए भाई. एसएल ड्रॉ कर लेता यार, वी वुड लिटरली विन अगेंस्ट यूएस मैन. फोर्थ तो आते, अभी फोर्थ ही आएंगे एक्चुअली. दैट्स द क्रेजी पार्ट. आई थिंक अभी फोर्थ ही आएंगे हम लोग. है ना, कोई डिफरेंस हुआ नहीं एक्चुअली इतने ड्रॉ करने में. देखेंगे फाइनल स्टैंडिंग्स. तो एक एक करके मैं अभी रिजल्ट अपडेट कर लेता हूँ. एसएल का गेम पे देखे जाए. Yes, let's go to SL Narayan's game. Oh. Yes, Lord.
By the way, I must also point out India women's, I think C में Nandita and Isha both have lost. Pratyusha has won. And Sahiti is having a drawn position. So they will also end up losing. They will not end up winning. तो कोई वो medal का वो नहीं था उनका. अच्छा, but they had a chance, is it? नहीं, they could have tied मतलब basically on with team A. Tiebreak में हारते, but they will not. They have already lost 2 games. So I think it's 2.5, 1.5 से हारेंगे. What about India women's? India 2. What about them? Women's 2 का पता नहीं, I have not seen. Oh, by the way, chat, Max Warmerdam has resigned. With this, Uzbekistan has also won their match and they get the gold medal confirmed. Plus, they also Then have another Armenia, Olympiad. yeah, they win the Olympiad. Then you have Armenia, who have also won, so they get the silver medal. And India too has also won and they get the bronze medal. So yesterday's game really costing us in a way. But yeah, that's chess. Women Georgia का draw हुआ नहीं, but they are winning. No, that's the thing. They are winning. That's the issue, man. That's okay, here SL Narayan has resigned. Sham Franklin wins this game. It's over, guys. Last moves: Rook H8 and Rook to C2, and it's over. So time to update the results one by one. Sahil bhai, can you just repeat the results? I will also note them down. First, tell me the result of India 1 versus USA. So India versus USA. एक सेकंड. I'm just checking कि women को कोई chance है क्या? नहीं, दोनों are lost. ठीक है. So India ones में first of all Hari Krishna has drawn. Okay. No, tell me Arjun the team has won. score. Yeah. And SL has lost. So it is 1.5 each, with Vidit and Wesley so still playing. So we can't enter that result yet. So what about Germany versus India? Now Germany versus India, Gukesh has drawn. Nehal has won. Prag has drawn. Ronak has won. So we win 3-1. Done. That's updated. Kazakhstan versus India 3. India 3 में Abhimanyu Puranik has drawn. Sethuraman has drawn. Surya has lost. Oh. And Karthik Murli Is playing. But he's winning. So I think it might be tie, but he's playing. So yeah. And 1-2 women in their favor. Women में तो यार मेरा बोलने का मन नहीं है 20 भाई. बोलने का तो है भाई. मैं तो अपडेट कर रहा हूँ. बोलो भाई, बोलो. Bhakti has lost. Okay. Tanya has lost. Okay. So 1-3, yeah. Yeah, 1-3. Yes. All right. Slovakia versus India 2. India 2. Let me find India 2. Yeah. Vantika has drawn. Padmini has lost. Okay. Divya has won. So 1.5 each with Marianne Gomes playing. So we can't. And the position is equal. So most likely tie रहेगा. Kazakhstan next. Next is India 3 against Kazakhstan. Yeah. उसमें Isha has lost. Nanita has lost. Pratyusha has won. And Sahiti is playing in drawn position 1-2 in their favor. So yeah, still a lot of games going on. So we can't end it yet. No, I think one game in India Women 2, one game in India Women 3, and one game in India Open C and one in India Open A. I think 4 games. But I think 4, they are all very close to finish. I think, because it will be very close. Because what is happening is Sahiti mein opponent को पता है draw cheese is constantly offering a queen trade. Yeah, draw, and she's trying to avoid. But okay, we will go through them. So first, give me an update on Vidit's game. Let me just check Vidit's game. Vidit is still playing, I think, but it's kind of drawn now. I think it's king, knight, 2 pawns. Wesley is playing, but I think Wesley also knows he has no chances for a medal, so he'll take the draw now. Because all 3 teams have won. He might be waiting for the Uzbekistan team to win, but they have won now. Acha, okay. So this is how things stand right now with Indian women's team having a bronze, right? I mean, we have still some details to figure out, but most likely. And Indian team in the open category, the second Indian team is likely to win a bronze. So these are the bright sides. This is the bright news I can convey at this moment. Thank you, Niranjan bhai. Yes, bhai. So you are saying thank you in what context? For the
चलो गाइस, इसी के साथ अलविदा लेते हैं गाइस। अरे नहीं भाई, हमें और गेम्स। तो टुडे इज द क्या लास्ट। देखे भाई यार, दुख हो गया भाई, दर्द हो रहा है भाई, दर्द दर्द तो सबको होता है भाई। सबको नहीं होता है गला भाई, सबका सूखता है यार। अपने को ज्यादा हो रहा है भाई। तो दर्द के बारे में अगर हम बातें करेंगे तो आई थिंक इट्स डिफिकल्ट टू डिफाइन हुज पेन इज बिगर। पेन इज पेन। नहीं, पेन इज I नॉट think पेन, both. पेन इज I बिगर think देन। India 2 and women's section. I think they must be furious. I think कौन there is कौन? no India 2 and women's section, no, both. Why? Because women's section का तो clearly they had gold in their pocket literally before You mean this round. India A in the women's section? women's India women's का. Yeah. They must be really angry because उनका तो pocket में था literally. For first round till 10 round, they were leading first rank. वो भी sole lead. And What is- last round में spoil हो गया. I think what I thought was कि उनके पास 2 whites है ना, वो भी top boards पे 1 and 3. तो I thought we have great chance today. But USA And the thing team is, US team का कोई motivation भी नहीं थी because they even winning they do not get the medal. पता So नहीं ऐसे। it's kind of tragic. And also, Open B must be really furious because like उनका gold उनके pocket में था literally. Like Gukesh, if he had gotten from his seat and seen Prag's game, that's it. I think he was focused on his game. ध्यान में नहीं आया. If he had done that, I think he would have taken the draw. So I think luck not going away, I would say. And yeah, Vidit has drawn, Chad. Vidit has drawn. So we see Vidit also getting a pat from Grandmaster Srinath Narayanan. So credit must also go to Srinath Narayan for leading the team as a coach and captain, doing his job really well. True. अक्षत बनी खेल चैट रहे एक हैं। लास्ट बार के लिए सबको लाइक कर दे, 500 लाइक पहुंचा दे, 19 बाकी हैं सिर्फ। दिस वाज लास्ट डे। Yes. Let's like the stream. I live in Spain, but S is silent. Nice. अच्छा। और एक कुछ लास्ट मोमेंट के लिए देख लेते हैं हम लोग विदित को बड़े पर्दे पे फिर से एक बार ओलंपियाड 2022 में। तो इनका रिजल्ट हो गया है ना अभी, इंडिया वर्सेस यूएसए, द स्कोर्स आर 2-2 राइट? Yep. Yes. A good result for Team India overall, I would say. It's not a bad result, right? US के साथ. But situation ऐसी है कि, and the thing is, even if they have won, it would not change much actually. I think standings तब भी same ही रहेंगी. India will be 4th, US will be 5th. So that's it. I am bred but in French. ये क्या है? VDV starts off with it too. अरे यार chat, I'll be honest, it's a bit disappointing of course. I think women's का तो मुझे बहुत ही दुख हो रहा है because you know men's का you can still say कि I think men's का भी नहीं बोल सकते. I think दोनों का ही दुख हो रहा है honestly. Like you know at least they won bronze, like that's तो वो भी bronze जीतते हैं वैसे तो ये भी है. But yeah, it's kind of sad. But by we have 1 gold right in the board medal category, we still have some gold chances. Yeah, Gukesh might win, Tanya might win. Yeah, but I think that's a bit different. I think, but yeah, that's definitely helpful. Bhai pain. Yeah, Team B, you know, I think it's disappointing looking at the last 2 rounds, but overall, them getting bronze is a big deal. Like, you know, they are teenagers, man. Like crazy performance by Team B overall. Hats off to them, yeah? Because itna badhiya khelna, as people who are, you know, going to school basically, I didn't say, like, look at the future, like, abhi wo itna badhiya khel raha hai. Yep. So I would say ki it's a great performance by Team B, but it's like, you know, you want a salary worth, let's say, 2 lakhs per month, and then your employer says कि आप कितना salary लेंगे, 5 लाख लेंगे आप, और आप खुद ही बोल दो नहीं भाई 2 लाख ही चाहिए. I think that's kind of what happened here, I think. Oh, bhai. But anyways, guys, it was great fun in the Olympiad, भाई. कैसा लगा भाई आपको? मजा तो आया यार, मजा आया. तो साहिल मुझे तो भी बहुत मजा भाई, आया. I मुझे have तो 2 पहली बार questions लगा for you, for Beast Bhai and for Sahil Bhai. So first, maybe Sahil can answer it. कि what were some of the highs and the lows of this event for you personally? Low is right now. Yeah, इससे लो तो नहीं हो सकता. Because कल तब भी उम्मीद थी.
High would be, I think, when Gukesh beat Karuan. I think that was one of the highs for me at least, because वो moment ही ऐसा crazy था ना, 8/8 कारुना को हरा के उसका खुद का record तोड़ना, team being so lead, like whatever tied lead, and it was crazy. Yeah, I think same for me. वो क्या ही अलग ही लेवल था भाई वो, और उसी दिन रौनक भी just. But I want both of you to give me another moment, because you just mentioned one high and one low. निरंजन भाई बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप. तो बोलिए, one more moment, come on. By the way, Nihal might also win gold in his category, by the way. That is possible. Nihal might win now? Gold? The bronze confirm hai, he might win gold. Depends on couple of results what happen. I think that's... So, my work is not over then. I have to keep an eye on the possible board medal prizes, so that we can keep giving updates through our social media pages. So I think now quickly let's go to those games and get to those games which are still going on. I think in the women's section we have Lakshmi Sahiti's game still going on, right? That's the only game going on. देखो भाई. No, not. Camps लगा सकते हैं क्या? Marian Gomes has drawn, so that is 2 each for. किसका game? B. Marian का draw चुका है. ये बोर्ड का भाई जिसका गेम चल रहा है. नहीं यार, हमारे पास नहीं है इनके camps, और यहाँ पे है position with Sahiti Varshini playing as black. गैडमेटर ने वीडियो रिकॉर्ड करके डाल भी दिया भाई. मास्टर ऑफ मिस्टेक्स आर्ट साधवानी वर्सेस निसिपियानो. मास्टर ऑफ मिस्टेक्स, अच्छा. मिस्टिक आर्ट्स, नॉट मिस्टेक. अच्छा. Queen C8. I think Sahiti Varshini, she needs to win to tie the match, so she's trying her level best. Hats off to her, by the way. Yeah, I think she's trying her best. She had a draw on multiple occasions, by the way, but she kept playing. So I think I have a great respect for people who play for the team. Nah? Like, I really feel nice. Even though she had a draw, she kept playing and she still fighting. That's nice. Yes. Kudos to Sahiti Varshini, who is very young and has a lot of potential. Coming to the other game which is still going on, in the women's section, who other players are playing? I think that's about it, right? That's it. Final game remaining, chat. Can you have the results at the bottom? Ek baar dekhte? Okay, so I have not updated that yet, but I will definitely update as we speak. So please help me with this. Coming to the results. Team 1 is 2 each. One moment. Yeah, team 1 is 2 each. 2 Let's out of go. 4. Done. Team B in the Indian Team B section. is 3 out of 4. Team C. Team C, I'll let you know in a second what happened in Karthik. Team C is 1.5 out of 3. Wait, a second. Yeah, I'll just confirm. I don't think it was 1 out of 3, not 1.5. I can't find Murali Karthikeyan. He's still playing apparently, but he's completely winning. So I think 2 each hoga, but 1 out of 3. Women's is of course 1 out of 4. Women's B team is 2 out of 4. And women's C team is I think 1 out of 3. Okay, so let me also get these results updated wherever we have 4. So India 2 versus USA 2-2. I mean, India 1 versus USA is 2-2, and Germany versus India has got 3 points. That's correct. And India versus Kazakhstan, we are still playing on one board. Let me quickly check if those results are updated. No, Grandmaster Karthik and Murali is still playing, so that's the other game we have to focus on. This is the last leg of अभी यार 3 बजने वाले. Could we not start over? एक और बार ट्रायल ले सकते हैं क्या? अभी 3 बजे नहीं है भाई. हमें यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज चाहिए होगा पीछे जाने के लिए. Most likely. So now let me also quickly check in the women's section. We already have the result that I've put, and here also we have 2-2. So India 2 drawing against Slovakia in the women's section, I think, was a little bit of an upset, because Slovakia's rating average is 2265, whereas India's rating is 2351. And in the women's section, we still have 1/3. So there are only 2 games pending. Only 2 games, and out of these 4 games that we have finished, if I had to check the results, we have 2 draws and
1 win. So it's a low score today. कार्तिकेयन जी तो जीत रहे ना? कार्तिकेयन जी जीत रहे ना? हाँ, he's winning तो 2 each हो जाएगा वहाँ पे. And I think women's के उसमें I think it might be 1.5 out of 4. So let me quickly take a look at some other camps and see what's happening in the tournament hall. हाँ, कोई like ऐसे बड़ा सा view होना like जहाँ पे बहुत सारे board दिखे. I think it will be fun to see. Okay, but there is no audio here. For a moment, I'll give you a glimpse of things that are happening on different boats. दिखाओ और ऐसे बड़े स्क्रीन पे दिखाओ भाई. हाँ, वही दिखाता मैं. Okay, but there is no audio here, so in 10 seconds we'll be back. We are back. So that was a view of the tournament hall where you can see players. I mean, there are 2 players whose game feed we have, but उसके अलावा कुछ नहीं है क्योंकि मैं तो कह रहा फीड बंद कर दो भाई, नहीं तो आपका लैग करने लगे. जैसे ही बंद होगा उधर वो लोग तो बंद कर देंगे, आप तो नहीं बंद करोगे इधर से. पता नहीं यार, वो तो मेरे कंट्रोल में नहीं है. तो इवन इफ आई क्लोज देयर विल बी सम कैमरास अटैच्ड टू सम सीन्स and it will definitely affect my stream. All right. Gukesh knew Prab was winning, but he had a winning position. He went to play. Okay. I think he would have thought it was winning, but yeah, I think it was probably he could have taken the draw. I think it would have been better, but I think he was so confident, in this tournament, he felt he should win. But okay. All right. So yeah, we're just waiting for this game to win. After knight d5 check, king c4 खेलेंगे शायद. Knight into b4 मार दिया. What do you think? King into b4, f3, knight f3, king f3, king c3, king c3. Yeah, ये win है. So Beast Bhai, is this fight sacrifice? Beast Bhai is literally sleeping on stream. नहीं भाई, I was meditating. Yes, that's what everybody says. मुझे क्या बोलते हैं, मेडिटेट करते हैं ना, कंपोज एंड यू शुड नॉट बी सैड. कई लोग जो आधे लोग जो मेडिटेशन के फैन है ना, वो लोग सिर्फ सुना आते हैं दिन को भाई, और कुछ नहीं है. मेरा ऐसा मानना है भाई. आधे लोग आपके मानने से नहीं होना, आपने कभी किया नहीं है तो आपको क्या पता. मैं नहीं कह रहा मेडिटेशन में सोना होता है. आधे लोगों का बहाना है भाई कि मेडिटेट करना है मुझे. आई थिंक आई शुड मेडिटेट टू कीप माय सेल्फ काम इन दिस सिचुएशन. ओके, very important. I'm really glad प्रतीक पाटिल की आप जुड़े थे हमारे साथ, and I really hope that you actually get the FIDE Master title if you are interested in pursuing that path and even go beyond that. And just bye. Proton is saying bye. भाई आप फाइनल स्टैंडिंग्स देख के जाओ भाई, या एटलीस्ट हमारे जो रिजल्ट का जो ग्राफिक है वो देख के जाओ. वो तो आप लगा ही नहीं रहे हो. वो तो मैं लगा नहीं सकता जब तक सब गेम्स खत्म हो. ऑफिशियल स्ट्रीम है ना भाई, कुछ भी गड़बड़ नहीं हो सकती. हम होते तो हमने तब तक डिक्लेयर भी कर दिया होता. मेडिटेशन में कोई नहीं सोता. अच्छा हाँ, मेडिटेशन एंड आई एम नॉट स्लीपिंग. नहीं तो मैं इतना सुन थोड़ी लेता आपकी आवाज जल्दी से. चलो, कैन वी हैव सम बिगर कैम? समझ गया मैं अब समझ गया क्यों बिगर कैम चाहते हो आप. अब समझे क्या? तो आई वाज एक्चुअली थिंकिंग मैं रियली इंटरेस्टेड इन लुकिंग एट द zoomed in version of what's happening. Yeah, me too. Let's go. नहीं Let's go. दिखाओ ना भाई यार गेम में. अरे कुछ है नहीं, क्या है? कार्तिकेयन का मुरली का दिखाओ. कैम कहाँ है? नहीं है मेरे पास. अरे ये क्या है भाई? नहीं है कार्तिकेय मुरली का मेरे पास कैमरा नहीं है मेरे पास. अरे इस ओपोनेंट को बोलो ना रिजाइन करे. क्या टाइम पास कर रहा है यार, क्वीन बन रहा है यार. क्या टाइम पास के 14 सेकंड है तेरे पास, उसका क्वीन बन रहा है सामने वाले का. शर्म कर भाई. खेले जा रहा है बेशर्मों की तरह भाई. अभी क्वीन बनाएगा, नाइट देगा, उसके दूसरा पॉन मरवा के फिर एक और क्वीन बनाएगा, तभी बनते रहेगा क्या गेम.
तो बीच में आपने किसी को अगर आपने कभी चेस सिखाया क्या? नहीं भाई नहीं। नहीं, कभी नहीं। अरे सीख तो ले, नहीं भाई। सिखाएंगे बाद में। मतलब ऐसे रिलेटिव को, ऐसा कोई किसी को नहीं बताया आपने? इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाया गेम से? नहीं भाई नहीं। अरे आपने वो मैकेनिकल पांडे को तो इंट्रोड्यूस आपने कर दिया था शायद। थैंक यू प्रणव भाई। मैकेनिकल पांडे को मैंने नहीं भाई, सीओबी में खेलना था ना उसको, तो खेलना पड़ा उसको। अच्छा। वैसे उसको सिखाया था, पांडे को सिखाया था, इवन विवेक को सिखाया था मैंने। फिर दोनों जब जब मैंने सिखाया और उन्होंने खेला है तब तक वो लोग जीते हैं, जब नहीं खेले तो वो हार गए। अच्छा, मितेश कलाडी का क्वेश्चन शायद आप आंसर कर सकते हो साहिल भाई। नीतीश जी का क्वेश्चन। Mitesh ji, we will be getting most probably bronze medal in both women and open section, but we are waiting for the official announcement. We don't know yet, but most probably we should get. Yep. So lost 2 points. Aronian lost 16.4. Karuna 18.3. Dominguez 9.4. Sam 7.5. The solution is don't play in India or lose rating. I think that's pretty much obvious. But Karuna but the thing is they did not just play only Indian players. They also played other teams, right? No, मतलब in India usually you end up losing rating. Like that's भाई just a known look at fact. this guy, look at this guy भाई, एकदम ही शर्म नहीं है भाई इसको। ये जो ओपोनेंट है भाई, ये मेट तक खेलेगा भाई, ये कुछ मना नहीं करवा दिए, क्या आदमी है ब्रो। Wait तक नहीं करेगा। लुक एट हिज ऑडेसिटी कि अभी भी ये सोच रहा है कि इसमें कुछ हो रहा है। अरे ओके, एक ट्रैप में देख लेता हूँ भाई, 20 चैट्स का टेस्ट लेते हैं। मोटिवेटर फॉर इंडियन टीम यार। इमेजिन कार्तिकेयन मुर्गी हाँ, अगली बोलिए गेम भाई। खेल रहा है। लुक एट द ऑडेसिटी ऑफ दिस हाँ गाय। बोलिए, हाउ टू विन। किंग जी3 का क्या, हाउ टू विन क्या, किंग जी3 भाई। हाँ फिर खेल लो, उसके बाद किंग टू F2 हो गया खत्म। अच्छा, किंग टू F2, तो एक पोजीशन हम दे देते हैं। हाँ ये पोजीशन है भाई, ब्लैक टू प्ले एंड विन। क्या ब्लैक टू प्ले, किंग F2 भाई, जबरदस्ती क्या आप लाया जा रहे हो? अच्छा, जीतरी चेक नहीं खेलना चाहिए आपको? क्या बात कर रहे हैं निरंजन भाई आप? तो मैं ये आपको हरा दूंगा, आप खेलो, आप मेरे साथ क्लासिकल भाई, आपको एक दिन हराता भाई, उसके बाद ही आप सुधरोगे भाई। नहीं मतलब दिस इज अ पोजीशन व्हिच इज किंग F2 किंग H1 फिर हाँ बोले भाई, बोले भाई। किंग वापस आओ ना। F3, किंग F3, अरे वापस। हाँ तो किंग G1, किंग G3। अच्छा ये पोजीशन आया था, अच्छा तो वापस ये लेते हैं। तो हाँ किंग F3 किंग आप क्या खेलोगे? किंग H1। हाँ बोलिए भाई, किंग H1 लिस्ट भाई बोलिए। अब क्या मूव? अब क्या मूव मतलब? किंग टू F1 खेलो किंग F1। हाँ किंग H2 किंग H2। ओह पता ना मेरे को। मजा आ रहा है अभी। किंग F2 भाई, रुको एक सेकंड सोचने दो यहाँ पर। ये कैसे आ गया मैं इस पोजीशन में? हाँ ये आ तो गया। आप लोगों ने जबरदस्त, एक सेकंड, ये तो मैं खेला भी नहीं था भाई। नहीं नहीं आप पर जाओ। एक सेकंड किंग F3 कब आया था भाई? मैं नहीं, तो नहीं, सीधे नहीं। किंग F2 खेलना था। ये आप पोजीशन से King विन F3 क्यों करवाओ। खेले? ये पोजीशन ये पोजीशन विनिंग है भाई, विन कराओ ना। क्यों कराऊं भाई, जब मेरे को पहले ही किंग F3 नहीं खेलना है तो? अरे जब विनिंग है ना। अरे जब मेरे को खेलना ही नहीं है king F3, अरे ये मान लो गेम में आ गया तो क्या करोगे? मेरे को क्यों खेलूंगा मैं जब किंग F2 विनिंग है? तो ये क्या टॉर्चर है भाई? F2 कब विनिंग है? कब विनिंग है? यहाँ ये लो खत्म। क्यों मैं खेलूंगा किंग F3 भाई? जबरदस्ती निरंजन भाई, जबरदस्ती। नहीं अभी मैं विन दिखाता हूँ आपको। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट भाई ये दोनों नहीं, इट्स इम्पोर्टेंट कि आप ये विन समझें। विन इज किंग G3 और किंग H3, फिर आपको पुश करना है और की स्क्वायर पाना है, इसके बाद ये विन है। तो बहुत लोग ये गलती करते हैं, ये नाइट का पावर है ना, इसलिए आई थॉट जस्ट वांटेड टू शो यू व्हाई द अपोनेंट इज स्टिल प्लेइंग, दैट देयर आर सम चैलेंजेस इन्वॉल्व्ड। काहे का चैलेंजेस भाई? पहले किंग F2 में विनिंग है तो भाई देखो रिजाइन कर दिया उस बंदे ने भाई। यस यस यस, जबरदस्ती आप लोग भाई। मैं सोचूं किंग F3 कब खेल दिया भाई? किंग F3 पे आ रहा है मेरा। yeah good. So I think you learned a lot about chess. I hope I also learned. I feel that I learned more of experience of commentating with Sahil Beast Pie and also managing. तो ये ऐसा पहली बार हुआ है जहाँ पे ऐसा बड़ा टूर्नामेंट को
मैंने प्रोड्यूस भी किया है, सोशल मीडिया भी अपडेट किया है और कमेंटेड भी किया है. सो दिस इज अ गुड बट ये बहुत नहीं मजा मालूम आया था भाई आप ऐसे करते हो. यू स्निक्ड इन अ मूव विदाउट टेलिंग मी. By the way, Sahiti has drawn. Sahiti has drawn. Sahiti is drawn. So that means Yeah, India so has the lost match it? is over. अरे तो भाई what is chat this? मैं कैसे नूब भाई यार, ये लोग धोखाधड़ी कर रहे हैं मेरे से. तो स्कोर्स क्या है वहां पे? India 3, I think we are losing, right? Yeah, by the way, chat, Georgia has won against Azerbaijan women's section में, and Ukraine has won against Poland. So दोनों टीमें इंडिया से आगे निकल गई. So they will get bronze hopefully. अब किस कैटेगरी में बात कर रहे हैं? Women's में बात कर रहा था. जो वो दो टीमें थी पीछे, they won. So bronze then. So all the games are over now. So let's count, okay? We have 3 draws, which gives us 1.5 point, and we have 1 win, which is 2.5. नहीं, but tiebreak 2 is the दूसरा वाला, no? It's not the game points. It's the second thing. Yeah, I'm just asking for me to prepare the. अच्छा, okay. So that means, how many matches did we win today? Final day, we won the India 2 match. 11 point. No, not in that sense. Like there are 6 matches, right? Every day. Okay. Half, 1.5, 2, 2.5. Sure. Horrible day for Team India. You're sure? Final day, 2.5 out of 6. Half. Alright, women's section we only have half point today. Exactly. And in the open section we have 2 points. Alright, yeah. So let me just show that screen. And I mean, just personally, who do you think is the player of the tournament? I think Peace Chats. I think इतना बढ़िया commentary, भाई बढ़िया. क्या है भाई? Okay, so I think the Gukesh is the player of the tournament. Definitely deserves it. Awesome भाई. तो एक बार हम दिखा देते हैं the scores and just check भाई if this is all correct. Perfect भाई. Perfect, बढ़िया. Let's move on. Sure. Yeah भाई, I'm sure. आपने इसमें भी जानबूझ के गलत डाल के रखा है क्या? नहीं. सब सही है भाई. So let me just confirm everything is okay. निरंजन के भाई के साथ मजा तो आता है. चैट क्या बोलते हो? हाँ, मजे लेके बोलो, मजा आता है. बढ़िया है. मजे क्या लेना है इसमें यार? So I'm just updating things. Everything is fine. All right. So that means that's the result. 2.5 bar 6 today. Not the day, the kind of day that we were expecting, but we have good reasons to be happy about, especially the India 2. They have, I think, ensured us of a medal. Plus, there are a few Indian players who are likely to win both prizes, subject to final standings. Nihal, Gukesh, Tanya, most probably they are winning both medals. Divya maybe as well. Yes, and so we have Nandita maybe, I don't know. Nandita I think lost her chance, yeah. Yes, so this has been great. In commentating with B-Stats, Prashant ji and Sahil Tickoo, Chess Assist ji. Thank you very much. It was nice and I had great fun. There were a lot of good moments. And I hope that you will consider coming to chess.com India's channel frequently. And it will be nice to host you again on our channel. And do Done. मैं तो रेडी हूँ भाई. नेक्स्ट ईयर चेस ओलंपियाड में बुलाएंगे. अरे नेक्स्ट ओलंपियाड मतलब 2 साल और हो गए. So I think this is a good opportunity to also shower some support to our Indian stars, starting with the captains. So I'll just mention some names I think who deserve the mention. Number 1 is the Grandmaster Srinath, who was the coach and captain of the India A group, India A team. Then captain and coach of the India 2, Grandmaster R.B. Ramesh. And then captain and coach of India 3, Tejas Pakre. No, I think it was Tejas Pakre. And then in the women's section, we had Abhijit Kunte as the coach and captain of India A.
And then in the second group, we had Swapnil Dhopade, the second Indian team coach and captain. And then in the third Indian team, we had Grandmaster Dibendu Barua as the coach and captain. Plus, there were also some other seconds involved. Some of the names that I know of are Vaibhav Suri, Sankat Gupta, Swayams Mishra, Shyam Sundar, and then we have Grandmaster Arjun Kalyan and Akash G. These are the names known to us, but I think there were many other players also involved in helping the Indian teams from the back end. They were supporting Indian team in some way, in some capacity. Huge thanks to the Tamil Nadu government for ensuring that the event goes really smoothly, and you can see on the social media there has been a lot of good feedback and also good reviews about the hospitality यहाँ पे. Then huge thanks to All India Chess Federation who bid for this big event at the right time, and the Grandmaster Srinath also deserves some mention here because he also connected the federation and the Tamil Nadu government to ensure that there's some meeting that happens. Then I think we have to thank FIDE that they finally found India as a good turf to host, and we are ensured that there will be another very good and big global event soon. And huge thanks to Rakesh also for joining us whenever possible from the site, and huge thanks to chess.com team working. आवाज चली गई? अभी आ गई. Working from the back end, and also thanks to our editors from the chess.com team. And have I forgotten anybody? Thanks to Niranjan bhai for doing multiple jobs at once. Yeah, thank you. When Niranjan opened the chat, bhai, without Niranjan bhai, this stream wouldn't be possible, bhai. मतलब Niranjan bhai and inverter bhai, दोनों का असली contribution वही है भाई. Yes, bhai. That was a really tough moment for us, and fortunately we got. निरंजन भाई यार क्या है भाई. भाई टफ मोमेंट तो था. मैं तो मतलब कैसे जूम पे इनको भेज रहा था फाइल्स. निरंजन भाई फुल टेंशन में. टेंशन ले रहा, चिल करने का. ये बोल रहा है कि लास्ट मूव है, बाय बाय बाय, स्ट्रीम एंड होने वाला है. आई नो. ओके, फिर भी थैंक यू एंड ह्यूज थैंक्स आल्सो टू चेस असिस्ट साहिल भाई that you also were engaging with the chat very consistently, and also you gave me some feedback, also took some feedback from us. Thank you, Beast Bhai. It was great doing this event. And final thoughts, Beast Bhai and Sahil Bhai. दो भाई, साहिल भाई, final thoughts. I think final thoughts ये होंगे कि I think overall I would say a bit of a mellow ending, but I think if you look at the team B here, I think it's spectacular what they've managed to do, right? They are, I think, school के जाने वाले teenagers हैं literally, and they have come third, and it was literally they had the gold in their hands. So I think great performance. I think team A basically just misses out. I think barely, like fourth आएंगे वो लोग, barely misses out. And women में I think they'll be really sad. I think of course they'll get the medal, so that's good. At least they get bronze most likely. But I think overall a decent performance, and it was a great experience to be here and commentating with everybody. Yes, this was my first experience with Sahil ji commentating. I have seen you in events, but I have not commentated along with you, so this was a good experience, and it was good knowing many things about you. Beast Bhai, your turn. अरे same here भाई. Many things मतलब कैसे मतलब उनके जो एक्सपीरियंस है और वो जो एनर्जी लाते हैं स्ट्रीम पे. एक एक्सपीरियंस अगर आपको ऐसा हो जो आपको मतलब जिससे आपको सीखने मिला साहिल का, तो वो कौन सा होगा भाई? एक एक्सपीरियंस मुझे लगता है क्वालिटी दैट ही आई फाउंड दैट व्हेनेवर ही रीड्स द चैट कि ये जो उनका स्क्रॉल रहता है बहुत ही फास्ट होता है, बट ही स्टिल मैनेजेस टू पिक द रिलेवेंट कमेंट एंड गिव्स हिज रिएक्शंस ऑन इट, व्हिच आई थिंक आई मस्ट लर्न. दिस इज अ रियली समथिंग दैट आई थिंक ही हैज बिल्ट ऑन एक्सपीरियंस. आप कभी चैट नहीं पढ़ते या फिर गलत चैट? मैं थोड़ा स्लो, आई थिंक आई वांटेड टू नो. I feel that क्षेत्र में हुआ है कि ऐसा मैंने ये भी देखा है कि कुछ कंट्रोवर्शियल कमेंट को भी वो अपना एक पर्सपेक्टिव देते हैं, which I think probably comes from the freedom because he's doing it on his channel whenever he does it. But also I think that he knows कि क्या spicy होगा, क्या हम ले सकते हैं. So these are some things I think subconsciously I have picked a few things, and I hope that he has also picked up some things from me.
साहिल भाई आपने क्या पिकअप किया है? फॉर श्योर बोला आपने नहीं, मतलब यार पिकअप ऐसे नहीं होता कि भाई वहां पे कोई बुफे लगाए, एक चीज उठाई, you imbibe these things, no? Like you don't realize कि चेंज क्या हुआ. one moment की आपको ऐसा I think storytelling would be one thing, no? Storytelling is really awesome, like बहुत सही है. Like you pick up on storytelling, he tells a story in a very nice way. Thank you. So but that's one thing in mind, and I'm sure like भाई हम भी स्ट्रीम में ऐसे सीखे ना भाई, समय को देखा, सागा भाई को देखा, साकिब भाई को देखा, आपको देखा, सबको देखा भाई, ऐसे सीखते हैं ना, सबकॉन्शियसली यू काइंड ऑफ लर्न एवरीथिंग. बीच भाई बस बोर हो चुके हैं भाई, कुछ नहीं है, तुमको एंटरटेनमेंट चाहिए. थैंक यू सो मच Niranjan and हो गया. And it was a lovely experience having you guys alongside, and thank you so much guys for joining, all the people in the chat, great people भाई, always 11 दिन साथ में जुड़े रहे तुम सबको, incredible भाई. This journey was incredible. I would have never thought कि commentary करने में कभी आऊंगा, वो भी चेस ओलंपियाड पे भाई, जहाँ ग्रैंड मास्टर्स और इंटरनेशनल मास्टर, फीडे मास्टर खेल रहे हो, यहाँ पे बैठ के मैं नेशनल मास्टर और फीडे मास्टर के साथ कमेंट कर रहा हूँ. इट्स अ amazing experience, and I also learned a lot, especially from Niranjan bhai ki how to be cute, and from Sahil bhai how to be how to be apanati. Yeah. So it was great experience, guys. Thank you so much. Love you, chat. And I think with this we can end on this note. Yes. Bye chat. Thank you so much for joining. Bye. Take care. See you. And मिलते हैं रात में और some other time or some other event on Chess.com India. Bye. Take care. Beast out. Bye chat. मिलते हैं.
breaking news, guys. Team India 2 has won today against Germany and we are assured of a medal. History has been created. Last time India won a medal was back in 2014 at the Chess Olympiad, but here in Chennai, India has officially won a medal in the open section. The young team with Gukesh on top board, then we had Nihal Sareen, Pragnanda, Adiban and Ronald Sadhwani. Big congratulations to these guys. What a phenomenal performance. They outperformed the A team. They beat all the favorites like US and Germany and so on. But guys, what an incredible day for Indian chess. We live for these days and I'm super happy to say that India is assured of a medal. Depends on Uzbekistan and Armenia what happens in their matches, but Team India is assured of a medal. We'll know the color of the medals very soon, but I'm really happy. Congratulations and India OP.